ceremony. Hello. Welcome to King Sports. The 10 Subscribe teams to will the going to channel participate in this cricket and press the tournament, bell and, icon for both, recent updates. A and B group distributed into Hello. two groups. 5 Welcome to King teams Sports. in each group. Subscribe A to and B the group. channel and press the bell icon for The recent 6 teams updates. will going to qualify for the Super 6, and after that we are going to have a final, the mega final, the toppers of the two groups. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಕ್ತಜಂಬೋಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 2 ದಿವಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. The captain of Amma cricketers won the toss and they are elected to the field first. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದು ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 2025ನೇ ಸೀಸನ್ 7ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಕೋವೆತ್ತಬೈಲ್ ಇವರು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 2025 ಸೀಸನ್ 7ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ದ ಮುರಳಿ ಕೋಣಜೆ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೀಪ ಉಜ್ವಲನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಾಸ್ ಎಂ ಮುಡಿಪು ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7 10 ತಂಡಗಳ 2 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇದು ಭವ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ದ್ವೀಪ ಉಜ್ವಲನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅರ್ಕಾನ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ವಿಜಯ್ ಅರ್ಕಾನ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ದೀಪ ಉಜ್ವಲ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. I request extra player of both the teams please be reported here immediately. ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡೆಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So everything is ready for the opening match after that inaugural ceremony, and we are into the inaugural match between two very good teams, the bright and sunny morning, and we are going to witness the prestigious MPL Mudipu Premier League 2025 season 7 under progress. And here we are going to start the first delivery. The left hand batter, the umpire ಸ್ವಲ್ಪ wait ಅಲ್ಲಿ extra players
ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಕರೀದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ಅಸೈಗೋಳಿ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So everything is ready here for the first delivery of the tournament. And first delivery around the wicket right arm. The left hand batter is on strike. First ball, full toss outside the line of leg stamp. Batter just wanted to get that one in the onside region. Completely missed it, and ball is deflected from the leg. So leg by call by umpire. So that the first run of the tournament, MPL, in the form of extra. One without loss of any wicket. Morning after winning the toss, Amma cricketers captain elected to field first, so that we are watching the opening batters of team Baddakat friends. They wanted to get this good start here, and first run in the form of extra. Dikshit will go to take the strike. The next ball outside the line of off stump. Lovely delivery indeed, just around outside the line of off stump. Batsman Dikshit just wanted to go for the off drive, missed it completely. The power play, 4 overs game, 1 hour going to be power play, not more than 2 fielders outside the circle in that power play mid wicket, and deep long on the 2 fielders outside the circle. The leg spinner, lovely shot, beautifully driven, but fielder is underneath it. Long on fielder making no mistake at all. The first wicket is back in the pavilion. Dikshit departs. Dikshit departs the first delivery, second delivery of the over, and in fact it's a third delivery, and he played it down to deep long on straight away. So the first wicket which is back in the pavilion, the Dikshit is a batter, just wanted to go over the boundary line, but couldn't manage to get the distance. He got the elevation, but fails to get the distance. At deep long on fielder taken a wonderful catch, and tall man Dikshit back in the pavilion, and Geetesh is the new batter in, and a good start from the bowler Sandesh. Round the wicket, right arm. Again tries that one, doesn't get hold of the proper chance of run out in the strikers end, but not good enough. Not good enough and not quick enough to make that run out. The fielder in that mid-on region, of course he fields the ball, but couldn't manage to get the ball quickly to the hands of wicketkeeper, and both the batters completed a risky single. With that single score, but moves on to 2 on the board. Sanath continues, 5th time in this over, round the wicket right arm. This time you just wanted to play that one mid wicket region, got a connection, of course not quite intended. The batter just wanted to get that one into square leg region because of his little bit early into the stroke, played it down to deep mid wicket, so he got his first run from the bat. Brijesh picked up his first run from the bat. Total score now moves on to 3 for 1. A very good start there from Sanath in that power play. There will be a booster point in the power play, and the highest run getter will go in to get the booster point. This time lovely shot, breaking the shackles in the last delivery of the over. Lovely shot, not ideal delivery to ball to the power play when you're not having adequate field for that delivery, and the batsman just grabbing that opportunity, stretching his front foot, played that exquisite sweep shot down to deep square leg boundary for 4 runs, and with that boundary, the good finish for the over. And after completion of first over, it's 7 on the board. The team Baddakat friends, at last they managed to get that important runs in that last delivery of the over. And Sanath bowled that first over of the power play with the 7 runs and a wicket. Both the teams has got a start.
The team got 1 wicket, the team fielding team Amma. And at the same time, the Baddakatte friends has got 7 runs in the first over. So bright and sunny morning, beautiful weather condition. It might be the morning, it's going to be a little bit the condition where you can say that better condition. But the month of March, everybody knows this is going to be very hot. And need to deal with this hot condition, especially coming to this, especially in this particular cricket ground. We are going to witness some more hot and humidity. And wait and see. Here is a second over going to start from the highway end, road end. And we'll go into ball the second over. Karthi, the experienced campaigner for the side, and wait and see how we're going to get that second over. After the power play, the fielding restriction is over, and we are finding some more protection in the deep. The one fielder down deep square leg, one at deep mid wicket and long on, and the deep fielder at offside, long off and extra cover, deep extra cover. And the bowler will go into ball right arm over the wicket to the left hand batter Brijesh. He's batting on 2. This time wanted to go for the reverse sweep. Chance of run out. Oh, he missed it. My goodness. The wicketkeeper has got a golden opportunity to send that left hand batter Brijesh, because Brijesh has got no idea whatsoever where the ball is. And he just wanted to get the single there. He's out of the crease. The fielder, wicketkeeper couldn't manage to get the stumps. He missed the stumps completely. What could be a wicket here for team Amma cricketers, and wicketkeeper couldn't manage to shy the stumps. To 1 run added with that addition of that single score, but now moves on to 8 on the board. Again wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold up that one properly. Protection there in the deep in the square leg region. Before Manu will going to come from the deep square leg region, ample time for the batter to complete the single. And Gitesh picked up a single with that single score, but now moves on to 9 on the board. Again wanted to go for the reverse sweep. Again wicketkeeper not really accurate behind the wicket, missed it completely. So that by call by umpire with that extra score, but now moves on to 10 on the board for the loss of 1 wicket. But Baddakatte friends lost the toss, asked by the opposition to bat first. Lovely shot, driven that one down to deep square leg. Protection is there. The Manu, the fielder in the deep, quickly moving to the direction of the ball, denying the second from both the batters. Just a single. With that single score, but now moves on to Nelson. Nelson in the sense 11 for 1. 1-1-1 in the scoreboard. Again played it nicely down to deep. In fact, just outside the circle. That didn't quite get that one from the middle of the bat. The Brijesh picked up a single there. Strikes are rotated in this over by both the batters. Scoreboard now moves on to 13 on the board. 12 on the board, correction. 12 for the loss of 1 wicket. Kirti. Right arm over the wicket. This time a lovely delivery indeed. Opportunities created for the wicket keeper. Over number 2, which is comes to an end after completion of over number 2. Searching for the right track, but the friends are 12 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 6 runs per over. The 4 overs game, 2 overs remaining, and altogether 12 balls excluding wides and no balls. And wait and see how many runs team Baddakatte friends will going to get here. The morning here, we can see that some good shiny and sunny morning, and little bit breeze which is passing in the middle of the ground as well. Shot selection is going to be a key in this particular cricket ground. And of course this is a huge ground, one of the most beautiful cricket ground situated here in Mudipu and Panchayat cricket ground. The ground which has witnessed some historical cricket tournaments in this beautiful venue. And Sri Mudipinar Cricketers SMC Mudipu organizing this Mudipu Premier League 2025 Season 7. And after that 6th season which is organized
successfully. Sri Mudipinnar cricketers are organizing the 7th season, and you're watching the first match of the day number 1. This time, no ball called by umpire. No ball called by umpire, and no ball in the sense it's going to be a free hit delivery. And maybe when the bowler delivers the ball, at that time someone is talking. Even I think it's a wicket keeper behind the stump has got some words, so that umpire called it's a no ball, not to talk. Free hit delivery. Every no ball free hit delivery. So free hit delivery for the batter for the no ball. Oh, lovely delivery, beautifully balled. Yorker length in relegation there from Ranjit. Just keeping that line with just around the outside the line of off stump, and the wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. 13 for the loss of 1 wicket. Oh, this time opportunity for the cotton ball. Ranjit this time couldn't manage to judge that catch very well. Almost into his chest level. And the batter played it very hard. Back to bowler Gitesh. But little bit slow reaction coming from bowler on his follow through. It's not so easy on his follow through to take the catch, but it was might be there's a comfortable height. The bowler missed it completely. 14 for the loss of 1 wicket. This time again, lovely delivery indeed. And the quicker one, faster one there from Ranjit. The left-hand batter Brijesh just wanted to get that one in the onside region. Missed it completely from the bat, deflected from his leg, no run scored. This time again, played it nicely down to deep square leg region. Santosh the fielder, then the deep square leg, they're going for the second, asking for trouble. He's absolutely in trouble, and he's back in the pavilion as well in the form of run out. Good pick up and throw from that fielder in the square leg. Santosh is almost charging from the deep square leg region, and returns the ball quickly to the hands of the wicket keeper. One more addition. So 16, which is the total score. Batsman name, please. Vinay is a new batter in. Ranjit round the wicket. This time catch, it is a call, but falling short of the fielder. Misjudgment by the fielder, and they grabbing the opportunity to come back for the second. And they made it quite easily in the end. Couple of runs. With that couple of runs, Kobanna moves on to 18 on the board. And Vinay off the mark with a couple of runs. Ranjit to continue. Right arm around the wicket to Vinay. This time Vinay drives obviously, but quite safely down to long off. Just for a single, and the walkable single. So one more over completed, 3 completed after completion of over number 3. But the defense are searching for the right track, and scoring 19 runs at the rate of run rate of exactly 6.33 runs per over. And then last over remaining in their innings. You're watching match number 1 of the day number 1 of prestigious Mudipu Premier League 2025 Season 7, which is proudly presented by Sri Mudipinnar cricketers in this most beautiful Panchayat cricket ground. And after that inaugural ceremony, they were watching inaugural match of this MPL Season 7. 10 team participating in this cricket tournament. And wait and see which team will going to get the place in the mega final. And tomorrow will be the final day of the cricket tournament, decider day of cricket tournament. Wait and see which team will going to become the champion. Of course, not only the champions, there will be a runner-up, there will be a 3rd place and 4th place. The opportunity for the team
to grab this wonderful opportunity in this MPL. And last over will going to start from the road, and Nikit brought into attack ball that last over. Vinay the striker. This time pulls it away, and it looks like umpires will going to call it's a no ball or not. Wait for the umpire signal. So the wickets are falling here. Nai, the batter, is back in the pavilion, is going for the pull shot and played it into the deep square leg region. The fielder completed the catch. It's 19 for 2. Quite unfortunately, the batter is going for the pull shot attempted for that full toss delivery ball by Nikit. And sometimes the playing condition is different from one area to another area. But in this particular tournament, if the batter will going to attempt the stroke, then umpire will going to call that a fair delivery. Again, played it down to short mid-wicket region. One more single being added to total. With that addition of that single, score moves on to 20 on the board. This time catch it is a call and straight to the hands of the fielder. Santosh, the fielder in that mid-wicket, almost is not really moved at all where he was standing. The ball is coming straight to his hand. Lack of placement here from Gitesh. Face the penalty for that. One more wicket back in the pavilion. But the friends are looking in trouble. Especially in the last over, they are looking for some runs, but the wickets are falling. This is turning out to be a good over from the point of view of team Amma cricketers. Won the toss, selected to field first. And they are able to put some pressure onto the batters of their opposition with some wicket-taking deliveries. The new batter in is Deepak. Deepu will going to face next delivery. Lovely delivery. Fantastic line in the negation from Nikit as he balls outside the line of off time. Perfect delivery to ball to the fresh leg. Wanted to go for the drive. Missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the respect bowler. Again, lovely delivery. Batsman just wanted to use his feet. Missed it completely. One more dot delivery. This is turning out to be a fantastic over. Is in progress. Last time in this over. Coming down the track, using his feet. Played for a short mid wicket for just a single. And that's it. Great over. And from the point of view of Amma cricketers, which is comes to an end from Nikit and team Baddakatte friends, they finished their 4 overs with 21 runs by losing 4 wickets. And they set a target of 22 for the team Amma cricketers to win this match. So it's a very good toss win here from Amma cricketers. The bowlers did a great job. And all up to the batters of Amma cricketers will going to justify the effort of their bowler. But wait and see how Baddakatte friends will going to defend this small total. Lot of hard work is required from the bowlers of Baddakatte friends if they wanted to win the match. Because they will going to defend a small total of 21 and 22 to win this match. So umpires for this match, umpire Munzir and Ubaid, 2 umpires for this the first match, and of course for this cricket tournament as well. So live streaming from one of the most popular and very quality live coverage YouTube channel, King Sports, having a live telecast of this cricket tournament. Those are watching live in this particular cricket tournament, good morning everyone. Welcome to the day number 1 of MPL season 7. You are watching match number 1. The target, which is 22, which is set by the team Baddakatte friends for the team Amma cricketers, and wait and see how Amma cricketers batters will going to get this small total. And we'll take a short break in our commentary box, and after the short break, my friend Gopi will go to take over the microphone
the first time in this MPL. And good morning, Gobi, and welcome to the day number 1 of this prestigious MPL 2025 season 7. Looks like 21, which is the total score of team Badaka Defense, seems to be a little bit easier, but cricket is an unpredictable game, and seeing the nature of the ball is absolutely very soft as well. The morning it's not so easy to bat on, and we just wait, just thinking about and have some prediction that it might be a little bit tight game here if the bowlers of team Amma Cricketers Badaka Defense will go into ball accurate line and length, they can fight with this total. Otherwise, I think the bowlers did a great job of team Amma Cricketers, and the batters have to justify their effort in this first session. So wait and see how well the teams will go into battle for the victory in the first match of the day number 1. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला मुडीपू प्रीमियर लीग 2025 सीजन 7 की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और जहाँ तक सवाल है इस एमपीएल लीग 2025 सीजन 7 के अंतर्गत यह पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है, और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है श्री मुडिपिन्नार क्रिकेटर्स एसएमसी मुडीपू इन्होंने। और जहाँ तक सवाल है पहले मैच का, तो ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಕಾನ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಂಬರ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕು. तो बड्डागट्टे फ्रेंड्स ने इस वक्त 22 रनों का लक्ष्य रखा है अम्मा क्रिकेटर्स के लिए। 22 द टारगेट सेट बाय बड्डागट्टे फ्रेंड्स फॉर अम्मा क्रिकेटर्स. Exactly 5.5 runs per over, the required run rate for them in the stipulated 4 over. They have to score for victory with help of 10 wickets. The present equation shows for them, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई कार्तिक इस वक्त बल्लेबाज, आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर ब्रजेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त मनु। तो पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और ब्रजेश इस वक्त मनु के लिए पहली गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, गेंद पहुंचे मिड विकेट पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। रन अकाउंट बिगिन फॉर Amma Cricketers. It's 1 without loss in the first over. The target is 22 in exactly 4 overs. They have to score for victory with their required run rate of exactly 5.5 runs per over. They have to score for victory. और मनु का खाता इस वक्त खुल चुका है और कार्तिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, बूस्टर पॉइंट जो कि इस पावर प्ले ओवर पे दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने वाली टीम को वो बूस्टर पॉइंट मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, जस्ट मिसिंग टू फॉर द ऑफ स्टंप एंड कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। और रन एक रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर, 2 विदाउट लॉस। और गेंदबाज यह गेंद है बेहतर गेंद नहीं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा। ब्रजेश अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तलाशते हुए, जस्ट सर्चिंग फॉर हिज राइट लेंथ लाइन एट द सिचुएशन फॉर द बॉलर ब्रजेश। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन पर, बेहतर फील्डिंग ऑन स्ट्राइक रन, बल्लेबाज आगे निकला है जरूर, लेकिन थ्रो काफी ऊंचा गेंदबाज के पहुंच से बाहर रहा और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो जहां तक बूस्टर पॉइंट्स का सवाल है, तो बड्डागट्टे फ्रेंड्स ने 7 रन बनाए थे उनके पहले और एकमात्र पावर प्ले ओवर में। अगर बूस्टर पॉइंट्स प्राप्त करना है तो अम्मा क्रिकेटर्स को 8 रन बनाने हैं लेग स्टंप से बाहर। एक बार फिर से वाइड का इशारा, वाइड नंबर 3 इन दिस ओवर, बॉल बाय द बॉलर ब्रजेश। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और सिर्फ 2 गेंदे सही गेंदे इस ओवर में फेंके जा चुके हैं। यह गेंद उछाला इस वक्त, गेंद को लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल। Fantastically taken by the long on fielder, just running towards to his left side at the last moment, just took eyes on that ball and take that one comfortably just inside the fence। और इसी के साथ पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है और कार्तिक की पारी समाप्त हो चुकी है यहाँ पर 0 पर। फर्स्ट विकेट लॉस फॉर Amma Cricketers. It's 4 for the loss of 1 wicket. The batsman dismissed is Karthik. Now they are 4 for the. In fact, it's 4 for the loss of 1 wicket, and this is the first over of their innings is now progressing here. 3 right deliveries bowled in this over. 3 सही गेंदे इस ओवर में फेंके जा चुके हैं। We are just waiting for the number 3 batsman. और
नंबर 3 बल्लेबाज का इस वक्त आगमन यहाँ पर होता हुआ रंजीत। नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल और इस वक्त तो स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए तो 3 वाइड फेंकने के बाद ब्रजेश पिछले गेंद पर कार्तिक का विकेट प्राप्त कर चुके हैं। लॉन्ग ऑन फील्डर ने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका था सीमा रेखा के अंदर लॉन्ग ऑन पर और इस बीच नए बल्लेबाज रंजीत इस वक्त सामना करते हुए ब्रजेश की गेंदों का पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज ब्रजेश नए बल्लेबाज रंजीत के लिए ये गेंद उछालना चाह नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। गेंद को स्कोर लेग पर जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। 5 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर और ब्रजेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। लॉन्ग ऑफ और डीप कवर पॉइंट 2 स्क्वायर ऑफ द विकेट और इस बीच ब्रजेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेफ्टी बैट्समैन मनु इस वक्त सामना करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछलना चाहा नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इज गॉट इनसाइड एज ऑफ दैट और शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को अपनी बाईं ओर जाकर फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 6 ऑन द बोर्ड। 2 रन अंतिम गेंद में चाहिए अगर बूस्टर पॉइंट यहां पर प्राप्त करना है अम्मा क्रिकेटर्स को। 7 रन बड्डा कट्टे ने बनाए थे अपने पहले और एकमात्र पावर प्ले ओवर में और बूस्टर पॉइंट अगर हासिल करना है तो अम्मा क्रिकेटर्स को 2 रन इस अंतिम गेंद पर बनाने होंगे और इस बीच गेंदबाज ब्रजेश इस ओवर में अंतिम बार रंजीत के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद को उछाल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद और एकमात्र रन एंड नाउ द स्कोर्स आर लेवल्ड आफ्टर फर्स्ट पावर प्ले ओवर दैट मींस नो बूस्टर पॉइंट्स विल गिवन फॉर एनी टीम फॉर बोथ टीम्स इन फैक्ट। तो 7 रन बड्डा कट्टे ने बनाए थे पहले ओवर के समाप्ति के बाद जबकि अम्मा क्रिकेटर्स ने भी बनाए हैं 7 रन। तो बूस्टर पॉइंट्स किसी को भी हासिल यहाँ पर नहीं होगा इस पहले पावर प्ले ओवर के समाप्ति के बाद और स्कोर इस वक्त 7 रनों पर रुक चुका है और 15 रन और चाहिए। 15 रन मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमाइंडिंग 3 overs दैट मींस इन रिमाइंडिंग 18 डिलीवरीज with a required run rate of exactly 5 runs per over. Still they got 9 wickets kept intact और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज आकाश गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ अम्मा क्रिकेटर्स की पारी में। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और गेंदबाज आकाश इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। रंजीत इस वक्त सामना करते हुए आकाश की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑन पर और गेंद खूबसूरती के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। He just hit that one after picking the gap between long on and mid wicket and hit that one pretty hard after being getting right from the middle of the bat और इस चौके के साथ अब स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स नाउ दैट मींस ऑन 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड फैंटास्टिक स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ रंजीत और इस वक्त और 11 रन बनाने हैं 17 गेंदों पर। नेक्स्ट मैच एसएमसी पजीर विल टेक्स ओवर बबली वॉरियर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑफ दीस 2 टीम्स टू प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली टू मेक अ साइन इन द ऑफिशियल चार्ट और गेंदबाज इस वक्त आकाश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज का मनु के लिए इस वक्त जो सामना करने के लिए आकाश। Full toss, not connected that one properly. In fact, they gone through for a quick single and get it comfortably at last. Single to end the over, good over. In Amma cricketers' point of view came soon and 12 runs came from this over and after 2 overs, Amma cricketers looking in a comfortable situation. It's 19 for 1 after 2 overs. 19 रन एक विकेट के नुकसान पर बन चुके 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस मैच के बाद just talking about the next match and SMC Pajir will takes over Bubbly Warriors in the next match and because of that I request all the players of these 2 teams to please get ready for the next match
और जहाँ तक इस मैच का सवाल है तो सिर्फ 3 रन अपने विजय से दूर यहाँ पर अम्मा क्रिकेटर्स. द फर्स्ट मैच ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एसएमसी प्रीमियर लीग Mudipu Premier League 2025 Season 7 is now progressing, which is broadly organized by Sri Mudipinar Cricketers SMC Mudipu. और इस वक्त मुकाबला जारी है बड्डा कट्टे और अम्मा क्रिकेटर्स के बीच इस श्रृंखला के इनॉग्रल उद्घाटन मैच में. इस मैच के बाद यहाँ पर भव्य उद्घाटन समारोह होगा गण्य अतिथियों के सम्मुख में. और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए तो पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को छालना चाहा वाइड, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट. Scoreboard moving up to 20 now for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. और गेंदबाज इस वक्त अभी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए flighted, lofted and he just finished the match in a style with a boundary by Manju, and a comprehensive victory for Amma Cricketers by 9 wickets against Badda Cricketers in the inaugural match of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025, and with that comprehensive victory of 9 wickets, Amma Cricketers back the complete points. So match number 1 is now completed just short while ago, and the match number 2 now is now coming up live exclusively between SMC Pajir versus Bubbly Warriors, and that match coming up live exclusively right after the grand inaugural ceremony which will be held right now. और यहाँ पर उद्घाटन समारोह इस वक्त होगा गण्य अतिथियों के सम्मुख में. अब उसके बाद मैच नंबर 2 खेला जाएगा SMC Pajir और Bubbly Warriors के बीच. तो अब वक्त है उद्घाटन समारोह. It's time for inaugural ceremony, and we are just taking a short break, and we'll be back right after a short break in the match number 2 with my friend Satish in English once again, when the second match will going to start right after a grand inaugural ceremony. Now it's time for inaugural ceremony. Thank you. So there'll be no inauguration ceremony, and straight away we are coming to the second match. Bubbly Warriors will take over SMC Pajir, and that match starts with just a short while. SMC Warriors are won the toss, and just we have to wait and see what the decision they will take. और एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ एक बार फिर से अंग्रेजी में जब दूसरा मैच यहाँ पर शुरू होगा. तो अब वक्त है एक ब्रेक करना. विच टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. So thank you very much, Gopi. And the man of the match of the previous match, which is goes to and of course the low scoring game means is a contribution from the bowler. And Nikit one bowled last over, who picked up 2 wickets. Nikit of team Amma Cricketers is just as a man of the match for his last over, which is a better over compared to the last 3 overs. So I request Nikit, please come and collect your man of the match award from our chief guest in our presentation dais. ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಿಖಿತ್ ಅವರು
ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡೈಸ್ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1 over 2 runs and 2 wickets with the excellent economy of 2 runs in 1 over to picked up 2 wickets, so that is judged as a man of the match. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಂತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶ್ರೀ ಮುಡಿಪು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ SMC ಮುಡಿಪು ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 7ರ 10 ತಂಡಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಭೂಪಾಡಿಕಲ್, SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ, ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಜಿರ್ಪಲ್ಲ, SMC ಪಜೀರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನಾರ್, KFC ಕುರ್ನಾಟ್, MFC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಬೆಬಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಓನರ್ಸ್ಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೀಪ ಉಜ್ವಲನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವಾ ಕುವೆತ್ ಬಲ್ಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಕೋಣಾಜೆ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಸ್ ಮುಡಿಪು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಕಾಣ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉಜ್ವಲನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಯುವ ಕೋಯತ್ತ ಬಯಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಮುಡಿಪು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲನ ನೀಡಿ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪೂರ್ವ ಅತಿಥಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಕೋಣಾಜಿ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ದ ಸಂದೇಶ ಮುಡಿಪು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ವಿಕಾಸ್ ಮುಡಿಪು ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೌರೀಶ್ ಮುಡಿಪು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಶಾಲನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರು ದ ವಿಜಯ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಭರತ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲನ ನೀಡಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರು ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಕಾಣ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ನೀತು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much. After that inaugural ceremony, we are into that the innings of team Bubbly Warriors. They lost their first wicket of Anil in the beginning, and after completion of first over, 6 for the loss of 1 wicket. Team Bubbly Warriors against team SMC Fajir. So for the latecomers, you are watching the match number 2 of day number 1 of the prestigious Mudipu Premier League 2025, which is proudly presented by Shri Mudipinar cricketers in this most beautiful Panchayat cricket ground. And over number 2 will go into start here. The booster point, what we are talking about, the power play. And the team got only 6 runs in that power play. The team Bubbly Warriors. Second over, and from the far end, looks like the bowler will go into start the second over of that power play. And Bharat brought into attack, and right-handed batter Sudhir is on strike. For him, one fielder at deep extra cover, one fielder at long off, that is in the offside region outside the ring. And onside there is a long on, mid-wicket going back to deep mid-wicket, one fielder at deep square, like in front of square. And inside the ring, the fielder at short extra cover, short third man, short fine leg, and one fielder down at short mid on. So altogether, the 5 men in the on, 4 men in the offside region in this second over of the innings. So steady start, slow start from the opening batters, and of course the opening batter in the sense Anil is back in the pavilion, Nikhil and Sudhir, and wait and see how well this batter will go into add the runs. Oh, lovely start with that beautiful delivery from Bharat around outside the line of off time, quicker and faster one, beaten by the pace as well as the turn, and Sudhir completely beaten in the negation, no runs scored. And second time in this over, Bharat full toss, and this time umpire called it's a wide, gone far outside the line of off time P1. It is a beamer delivery,
And with that wide, scoreboard now moves on to 7 for the loss of 1 wicket in the over. Number second is in progress. Bharat. This time beautiful flighted delivery. Tossed up delivery. And the batter just wanted to go for the mighty drive on the onside region. Missed by the flight and turn of the ball. And different delivery compared to that first delivery which is coming along the carpet. This one is much better. And flighted delivery from the bowler. 7 without loss of any wicket in the over. Number second is in progress. Bharat. Ball system drives powerfully, but protection is there in the deep. Oh, misfield! Sloppy fielding by the fielder in the deep at the long off region. Abhi, the fielder, down. He couldn't manage to bend that quickly to that ball, and ball is just passing between his legs and went into the boundary for 4 runs. Lucky boundary for Sudhir, and scoreboard jumps into 10 with that boundary. And all the runs which is going to be very crucial in a 4 overs game. Little margin for the mistake from the fielder. Disappointment for the bowler. Again wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold up that one properly. But he's got a little bit bat in the occasion. Good enough for him to rotate the strike. One more single. With the addition of that single scoreboard now moves on to 11 on the board. For the loss of 1 wicket in the over. Number second is in progress. That brings Nikhil into strike now. Bharat. This time lovely delivery. The Bharat is absolutely using the condition, morning condition very well. But unfortunately that's one boundary in that over. Otherwise it's a good over, excluding that one wide ball. And it's 11 which is a total, 12 which is a total score remains. Again wanted to go for the reverse sweep. Leg by call by umpire. No, wait for the umpire signal. They're going for the second as well. And couple of runs in the form of leg by. Excellent running beneath the wicket. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 14 on the board. (14) on the board after completion of over number 2. And they're going exactly 7 runs per over. Eight runs coming from this over of Bharat. 6 in the first. Altogether 14 runs in 2 overs for the loss of 1 wicket. 2 overs remaining. After this match, match number 3 will be played between Namo Friends versus SVC Huakuakalu. I request all the players kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. SVC ಮತ್ತು ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದರ್ಶಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಂಬರ್ 1. Kishore, the bowler. This time lofted it, and I think the fielder is underneath it. The long on fielder making no mistake at all, and in the morning getting the distance is not so easy. Sudhir has got the elevation but fails to get the distance. Up and over, but the fielder is absolutely in the right position at deep long off. The wicket number 2 is back in the pavilion of team Bubbly Warriors. They lost the second wicket. The opening batters are back in the pavilion, Sudhir as well as Anil. It's 14 for 2. So new batter in is jersey number 3 is walking towards the middle. Ullas. Ullas as number 4 batter for the side will going to face next delivery from Kishore. He's been operated from the road end. Again lovely delivery. The batter just wanted to go for the reverse sweep. The first delivery is trying for the unorthodox cricketing stroke, but fails to make a contact with that bat wicketkeeper behind the stump. Did arrest back to bowler.
Again, reverse sweep comes into play. This time he's got a connection as well. The two fielder behind the ball before the one of the fielder will go in to pick that one and return that one. Ample time for the batter to complete that two valuable runs. With that two valuable runs, Kobana moves on to 16 on the board for the loss of 2 wicket. Time is exactly 10 past 30 in the morning. Again, played it nicely towards long on for a walkable single by batter Vilas. With that single, Kobana moves on to 17 for the loss of 2 wicket in the over. Number 3 is in progress. This time I wanted to go for on drive. Deflected from the bat and pad. One more single. With the addition of that single, Kobana moves on to 18 on the board in the over. Number 3 is in progress. Kishore, final time in this over. Lofted, is it going to be good enough? No, again the fielder in the deep long on taken his second catch in that same area in the same over. And that's the end of Vilas. Ullas recollection is just wanted to go for the mighty drive again against the direction of the wind. And pays the penalty for that. 2 wickets for Kishore in this over. Turning out to be a good over from the point of view of team SMC Pajir. 3 gone after completion of over number 3. It's 18 for 3. Going exactly 6 runs per over. The last over remaining in their innings. A new batter coming to the middle in place of Ullas. Just number 25. Chittaranjan is a new batter in. He's in non-strikers and this time tossed up delivery. Short pitch one but played it down to mid-wicket for a easy single. And with that single, Kobana moves on to 19 on the board for the loss of 3 wicket. Last 5 balls remaining. The left-hand batter is on strike. Nikhil. It's one who batted for a long time. Came as a number 3 batters for the side. For him, the 4 protection in the onside region, only 1 protection in the offside region, that is a deep long off, wideish long off in fact. Long on, mid wicket, wideish long on and deep square leg. Balled him, cleaned him up, nowhere near the pitch of the delivery, looking for the blind hit. Pays the penalty for that. The slower one there from Abhi, and batter absolutely beaten by the slowness of the delivery. Pays the penalty for that. Wicket number 4 come back in the pavilion. It's 19 for 4 in the over number last season progress. So Nikhil's innings, which is comes to an end after scored some runs from his bat. He scored a double figure 10 runs from his bat, but he's back in the pavilion. 19 on the board. New batter in, Harish. Krishan Chittaranjan is the batsman, is back in the pavilion, not Nikhil. Harish will going to take the strike. Lovely shot, but touch side to the answer fielder. Wonderful catch taken by the fielder at deep. My goodness, once looks like he is not in a balance. And he's off balance, but he couldn't manage to control his balance while he's running to his left. And wonderful catch, isn't it? Equally well played, good looking stroke, but unfortunately the fielder down at deep square leg taken a good catch. Kirtan, the fielder at deep square leg behind the square, almost when he was complete this catch at in front of square. Once it looks like it's going to be a maximum, because he played it lovely shot, which is right from the middle of the bat, slog sweep shot, but unfortunately landed into the hands of the fielder. Pushparaj is a new batter in.
Oh, this time he played it again wide of the fielder. This time he couldn't manage to stop that one. And ball is landed over the boundary line for a 6. Now the fielding team exceeds the time limits, so that they have to bring one fielder inside the ring. With that 6, Kobo Namuzan to 25. Very important 6 came from the bat of Pushparaj. Again, a shot outside the line of leg stump, but batsman capitalizing that one. And this time again wanted to go for the same shot, but this time he couldn't manage to get that one from the bat. Leg by call by umpire. One more addition, total addition of that single scorer Namuzan to 26 on the board. And the last delivery of their innings is coming up. And Nikhil will go into ball that Nikhil will go into play that last delivery of Abhi. Oh, lovely shot. No need to run for that. Ball absolutely went like a tracer bullet. Fantastic finish for the innings from the bat of Nikhil. And what an over for the team. Bubbly Warriors. The Bubbly Warriors have finished very well with that last over. Especially Nikhil and Pushparaj has got a boundary and a 6 in the last deliveries of the final over, and they got a very good finishing touch in the end and scored a 30 valuable runs in 4 overs, and they set a target of 31 to win the match for SMC Pajir. And wait and see how SMC Pajir will go and get this total of 31 in this stipulated 4 overs. 24 deliveries, 31 runs required excluding wides and no balls. 24 and 31 required for the victory, and wait and see how well the team SMC Pajir will go and get this total. And before we are going to start the innings of SMC Pajir, it's a time for little bit break in our commentary box. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 2025 ಆವೃತ್ತಿ 7ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕೋವೆತಬೆಲ್ ಸರ್, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕ ಒಂದು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ದೇವಿರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾನತೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ನೀಡಿದಂಥವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತಬೆಲ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. So thank you very much, and thank you so very much, sir, for your wonderful word for this success for this MPL season of 7. And meanwhile, I request Mr. Gopi to take over the microphone before the innings will go into start of team SMC Pajir. 31 will go into the target, and wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. It's a time for changing voice as well as language. Thank you. Dhanyavad Satish. So 30 from the target for SMC Pajir, set by Bubbly Warriors, and batted first the man to score exactly 30 runs in the stipulated 4 overs, and now the target is 31 for SMC Pajir, and their innings now going to start. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद SMC Pajir की ओर से. भरत जो कि स्ट्राइक पर, विनीत नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज बॉलर निखिल. तो पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त निखिल तैयार भरत के लिए, और 31 रन बनाने पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस. गेंद को उछालना चाहता लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए. गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का. लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है SMC Pajir की ओर से. 1 रन 90 अंक से नुकसान के, और गेंदबाज निखिल. अगली गेंद, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है. इस वक्त जस्ट जारी है, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. Just wanted to sweep it away, not connected that one, and the ball passed just below off his bat and stuck to his mid leg stump.
और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका. भरत द मैन डिसमिस्ड, बाउल्ड बाय निखिल फॉर डक, एंड नाउ इट्स 1 for the loss of 1 wicket for SMC Pajir in the first over. Just talking about the next match, no more friends will take over SVC Hu Hakwakallu, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ SVC ಹೂ ಹಾಕುವ ಕಲ್ಲು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. नंबर 3 बैट्समैन सचिन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और सचिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार निखिल की गेंदों का. निखिल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. जहाँ तक का बूस्टर पॉइंट का सवाल है तो बबली वॉरियर्स में पहले ओवर में 6 रन उन्होंने बनाए थे. 7 रन अगर बनाते हैं SMC पजीर के बल्लेबाज तो बूस्टर पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहता, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आया. विकेट कीपर अनिल ने अपनी बाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और निखिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. तो जो छक्का इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज सचिन के बल्ले से, ये छक्का SMC पजीर को बूस्टर पॉइंट यहां पर प्राप्त करवा चुका है. और बूस्टर पॉइंट SMC पजीर इस वक्त प्राप्त करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक सचिन के बल्ले से लगता हुआ छक्के के लिए. अगली गेंद लेकर निखिल, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर. स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, बॉल 2 फॉर साथ ऑफ स्टंप एंड वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. 8 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और निखिल, ये गेंद धीमी गेंद, जस्ट चेंज ऑफ पेस इन द लास्ट मोमेंट, बोल्ड अ स्लोवर डिलीवरी. और इस गेंद के धीमेपन को इस वक्त बल्लेबाज समझ नहीं पाए. उछालने के प्रयास में चूके गेंद उनके पैरों पर टकराई, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. तो निखिल एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं. विकेट कीपर अनिल दास इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए, और दाहिने हाथ ओवर द विकेट निखिल. फुल टॉस, और गेंद इस वक्त वाइड का इशारा, लगभग बीमर के तौर पर गेंद थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रनों पर. 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट. स्टिल कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर. और निखिल इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, रन इस बीच नहीं मिलेगा. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछालना चाहता, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट, और गेंद पहुंचे बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. निखिल फिर से एक बार इस ओवर में अंतिम बार ये गेंद ड्राइव करना चाहा, गेंद इस वक्त लपक ली गई है बेहतरीन तरीके से पॉइंट फील्डर द्वारा. ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली एट द लास्ट मोमेंट, गॉट इन स्टॉपेज, एंड पॉइंट फील्डर टुक द कैच ब्रिलियंटली, जस्ट ड्राइविंग टुवर्ड्स टू हिज फ्रंट साइड एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट ओवर द ग्राउंड. और इस बेहतर कैच की बदौलत सचिन का विकेट यहां पर गिर चुका था. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन यहां पर बन चुके हैं. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 9 रन्स ऑन द बोर्ड, 2 विकेट्स लॉस्ट. मिक्स स्टार्ट फॉर SMC Pajir. Still 22 runs more now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. इस वक्त इंतजार है नंबर 4 बल्लेबाज का. We are just waiting for the number 4 batsman. कार्तिक का आगमन यहाँ पर होता हुआ नंबर 4 बल्लेबाज के हिसाब से मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है. और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जहाँ तक सवाल है, मुडिपु प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए मैच नंबर 2 का द्वितीयार्ध यहाँ पर प्रगति पर रहा. और इस वक्त मुकाबला जारी है SMC Pajir और बबली वॉरियर्स के बीच. और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ कार्तिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और माफ कीजिए कार्तिक का नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, जबकि सामना करने के लिए तैयार विनीत जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. कार्तिक का नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद. पहले ओवर की खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. 22 still they have to score for victory in remaining 18 deliveries. Still the match is now equally balanced. और
ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज दीक्षित इस वक्त गेंदबाज यक्षित माफ कीजिए इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, जबकि विनीत सामना करने के लिए तैयार। यक्षित की गेंदों का पहली गेंद, इस बार हल्के से रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया। इस वक्त गेंदबाज की दाईं ओर पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और सामना करेंगे इस वक्त कार्तिक का यक्षित की गेंदों का। यक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए डीप थर्ड मैन सीमा रेखा जब 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, just played that one with a reverse shot and finds the gap as well at last in between deep backward of third man and deep third man. And at last the ball went over the fence for a boundary. Fantastic struck in for the bat of Karthik. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. 16 balls left, 17 runs required. The equation stands at the situation for SMC Pajir. और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यक्षित गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद को इस वक्त उछाला कहना पड़ेगा, नो बॉल का इशारा। गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ पर, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन पूर्ण करने में सफल। 2 + 1 3 runs now added to the total. That means with that 3 runs the scoreboard moving up to 17 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. The equation seems to be a much easier now at the situation for the batsmen of SMC Pajir. और 14 रन जो इस वक्त बनाने हैं, जबकि गेंदें इस वक्त बाकी हैं 16। और गेंदबाज यक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद बॉल जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन। और अंतिम एक्शन में ऐसा कहना पड़ेगा, शायद विकेट कीपर के हाथों से गेंद लगकर टकराई थी स्टंप्सों पर। पहले एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद सीधे स्टंप्सों पर टकरा चुकी है, लेकिन गेंद शायद विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद विकेटों पर टकराई थी। फ्री हिट गेंद थी, माफ कीजिए। और जहां तक सवाल है, बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है 17 रनों पर। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में बाकी। और यक्षित दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। इस बार उछाला गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड, कम बैक फॉर द सेकंड, दिस कुड बी इन ट्रबल एट द स्ट्राइकर एंड इन कम्स द थ्रो एंड दिस टाइम just we have to wait for the square leg umpire decision and now it's going to be a third umpire. तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। That was an absolutely close at the last moment. Just we have to wait for the decision of the third umpire. और देखने वाली बात यह है कि जब विकेट कीपर यहाँ पर विकेट अनिल जो विकेट कीपर थे जिन्होंने विकेटें उखाड़े थे, तब ऐसा देखना यह है कि तब तक बल्लेबाज का बल्ला यानी बैट क्रीज पर लैंड हो चुका था या बैट वाज इन द एयर। जस्ट द क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द थर्ड अंपायर डिसीजन एट दिस सिचुएशन। So 10 प्रतिष्ठित टीमें, 10 prestigious franchise teams are participating in this competition. Mudipu Premier League Season 7 2025. 10 teams divided in 2 groups. And the decision came, he's lost his wicket. It just fell short of his crease. He has to go. And one more wicket fallen. And a good return came from the bowler. After collecting the ball, he just throwing the ball into the hands of wicketkeeper, and wicketkeeper made a fantastic work behind the stumps. Anil Das, the wicketkeeper. And one ball left in this over.
In fact, the batsman fell just short out of his crease. एक विकेट गिर चुका है यहाँ पर तीसरा विकेट. Karthik the man dismissed and now it's 18 for the loss of 3 wickets. 13 balls left, 13 runs required. Rachan, in fact, the new number 5 batsman is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज की ओवर की अंतिम गेंद का और गेंदबाज यक्षित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. 13 runs to get from 13 deliveries. यक्षित दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. 12 रन्स टू गेट फ्रॉम 13 बॉल्स नाउ और यक्षित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद उछाला इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद. कनेक्टेड दैट वन परफेक्टली. Just is defense at long on by the fielder and one more wicket departs. Rachan the man dismissed. चौथा विकेट यहाँ पर गिर चुका है. 19 for the loss of 4 wicket. 2 overs had been bowled. That means 12 balls left, 2 overs to go and 12 runs required. 12 of 12. The equation stands at the situation for SMC Pajir. 12 गेंदे 12 रन चाहिए. जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, नमो फ्रेंड्स का मुकाबला होगा एसवीसी हु हाकुआ कल्लू के साथ और इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे. प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच. The second session of the match number 2 of this prestigious cricket tournament, Mudipu Premier League Season 7 2025 is now progressing here. और तीसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार उल्लास. ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है किशोर का, जबकि सामना करने के लिए तैयार इस वक्त विनीत. और ओवर की पहली गेंद लेकर उल्लास गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. 12 गेंदे 12 रन चाहिए विजय के लिए. 12 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 12 डिलीवरीज. फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम उल्लास. विनीत के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार उछालना चाहा, पैरों पर टकराए, विकेट कीपर के हाथों में गेंद. बैकहैंड थ्रो जरूर, लेकिन निशाना स्टंप से ऊपर नहीं टकराया. और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं. सिंगल रन एडेड टू द टोटल. इट्स 20 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress in the innings of SMC Pajir. Still the equal battle is now on. और उल्लास फुल टॉस, वाइड डिलीवरी और काफी ऊंचाई पर गेंद आई थी. और the ball went too high. In fact, a single run added. 21 on the board. Next one is back top edge. Finds the gap as well. Has got at least couple for that. Just in comes the throw. This could be in trouble. This could be in trouble. And this time he's gone. Straight throw came from the deep backward square leg fielder into the hands of wicket keeper Anil, and Anil made a fantastic work behind the stump, just flicking the wickets very quickly. After receiving the throw from the deep backward square leg fielder, the batsman got shot out of his crease. 1 run added and a wicket lost. 22 for the loss of 5 wickets. 9 runs to get for victory now. और गेंदे बाकी हैं इस वक्त 10. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ವಿಸಿ ಹೂ ಹಾಕುವ ಕಲ್ಲು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಮುಗಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So number 6 batsman, in fact it's a number 7 batsman is now comes out to the middle. हर्षा नए बल्लेबाज इस वक्त और विकेट कीपर अनिल दास जो कि इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है. 10 balls 9 runs required. और उल्लास गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार. नए बल्लेबाज हर्षा सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप एज वेल. और गेंद इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर जब तक फील्ड कर ली जाए. फील्डर द्वारा काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने की. जस्ट इट दैट वाज स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड he's got a couple run for that stroke. इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर. 24 for the loss of 5 wickets. So 9 balls left and 7 runs required. इस बार गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ into the gap as well and he's got a bounty for that.
और इस शौके के साथ ऐसा कहना पड़ेगा लक्ष्य काफी हद तक काफी आसान बन चुका है एसएमसी पजीर के लिए और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज हर्षा के बल्ले से। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर। नाउ 8 balls remaining, just 3 runs required for victory। और उल्लास की गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। 29 on the board, 7 balls left, 2 runs required। The things getting much easier now for the batting side SMC पजीर। और इस ओवर में अंतिम बार उल्लास, इस बार चूंकि पैरों पर गेंद टकराए 1 रन के लिए दौड़ पड़े और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड, जस्ट 1 run required from the last over। और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एसएमसी पजीर अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। एसवीसी हु हाकुअकल्लो are won the toss and they elected to field first against Namo Friends in the match number 3, which will be coming up live exclusively right after this match in this prestigious cricket tournament Mudipu Premier League Season 7 2025। और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ सिर्फ 1 रन मात्र अब विजय के लिए चाहिए। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हरीश दीक्षित। एंड दैट्स इट, लास्ट ओवर विक्ट्री फॉर SMC Pajir against Bubbly Warriors, and it's a boundary. So with that boundary they registered a victory in the last over and also they bagged the booster point। And second match of this prestigious cricket tournament has been came to an end, which won by SMC Pajir against Bubbly Warriors, including a booster point. They registered a victory in the last over. Next match in Namo Friends will take over SVC Hu Hakuakallo, and that match is now coming up now exclusively right in front of you within just short while। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 3 की शुरुआत होगी इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. The man of the match of the previous match, which is goes to the Karthik of team SMC Pajir for his all-round performance. Bowled a very good first over in the power play and scored runs from the bat as well. So that I request Mr. Karthik, please come and collect your man of the match award from our chief guest in our presentation dais. SMC ತಂಡದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್.
And we are into the match number 3. Namo Friends takes on SVC Huhakua Kallu. And SVC won the toss and elected to field first. And they're just waiting for the opening batters of Namo Friends. So opening batters out there in the middle, Shreyank and Chetan. Shreyank will going to take the strike. Here is the first ball of the match. And the power play will going to start. Pawan, the bowler. The first ball, and welcome with a huge one. And looks like the ball is just clearing the boundary line out there in the deep long on. And this time the ball almost around the legs of the batter. And Shreyas will dispatch that one into the deep long on boundary for a maximum. What a great start here for the team Namo Friends. The first delivery itself is just going after the bowler. Nothing much wrong with that line, which is almost in the midline leg stump. And batsman freely, because it's a power play over. And he got that distance down to wideish long on. Again hit that one pretty well. Lovely shot. That was a glorious extra cover drive. Magnificently struck. Again, after that ball, which is outside the line of leg stump, the first one. The second one is outside the line of off stump. And Shreyank played that exquisite and imperious extra cover drive. Played it right from the middle of the bat. Down to deep extra cover for 4 runs. A little margin for error when bowling in that power play over. And absolutely the booster points, maybe the encouraging the batsman to go for some big shot in the power play. 10 in 2. Oh, that's good comeback. Good comeback here by the bowler after that 2 delivery. This time slight a bit of quicker one compared to the previous 2 delivery from the bowler Pawan. The batsman Shreyank missed it completely. 4 tap and this over lofted, and this time he finds the fielder. Oh, he dropped the catch. My goodness. Can you believe this? Straightforward catch for the deep long on fielder. It might be a huge miss, I want to tell you. And from the point of view of the power play is concerned, I think the fielder batter Shreyank played it straight to the hands of deep long, and you can't give their life for the batter like Shreyank. Hits the ball very well, but fortunate for him. This time chip that one. Luckily that ball didn't carry to the fielder. Again misjudgment. It might be the ball. The fielder is managed to pull the ball inside the boundary line. Maybe the excellent stop by the fielder, not really allow the ball to cross over the boundary line. And the combination fielding by both the fielders. Again, the fielder is not up to the mark in the deep long on. And a couple of runs there for the batter. With that couple of runs, Coburn moves on to 13 on the board. And last delivery of the power play over. 13 runs came already in this power play. Chetan is on strike. This time up and over. Lovely shot. Exquisite. And ball is got the distance. My goodness, unbelievable. With the direction of the wind, Chetan played it glorious. Lofted extra cover drive. Outstanding cricketing stroke from Chetan in that occasion. This is turning out to be an explosive start here for the team SMC Pajir from these 2 opening batters, Chetan as well as Shreyank. The
The intention is very clear from these two opening batters. They wanted to go after the bowler in the power play. And 19 runs coming from that first over. It's a huge one, isn't it? And the previous stroke, which you can see from Chetan, he played it with the direction of the wind. He just lofted his head with the timing. And the direction of the wind, which is did the rest to get the distance. And that's why it's very important in this particular cricket ground. You need to see the direction of the wind. Shot selection is going to be key for the success for the batter. And when the bowler is bowling from the water tank end, it might be the opportunity for the batters to get some distance in front of the wicket. But when you're batting from this end, I think they have to aim towards the onside region more than the offside region behind the wicket. Arish brought into attack. After that, a very expensive power play over. 19 without loss of any wicket. Second over going to start from the road end. This time lofted, but I don't think he'll go to get the distance here. He played against the direction of the wind. Pays the penalty for that. Shreyank, I've already mentioned about this particular cricket ground. The shot selection is always going to be key for the success. If he manages to hit the ball from this end, definitely that's going to be a 6. But he's played that one against the direction of the wind. And pays the penalty for that. Nothing wrong with the strokes, something wrong with the placement. The wicket number first is back in the pavilion. And quick fired innings, a small cameo, which is comes to an end of Shreyank. He scored 11 valuable runs in 4 deliveries, but he's back in the pavilion. Sanjay is the new batter in. The new batter in place of Shreyank. Shreyank played a small innings of 11 runs, quick fire, 11 runs with the help of 1 boundary and a 6. Sanjay will going to take his place as a number 3 batter for the side. And for the right-hand batsman, he fielded at deep cow point, 1 at long off. Long on mid-wicket, deep square leg. A better delivery from Arish needed to be. The team desperately wanted a good over here for SVC. Harish so far bowled at tidy. This time full toss and lofted handsomely, and he got the distance, a huge one. Again Harish making a mistake of bowling that full toss delivery, and Sanjay just waiting for the opportunity to swing his arm, and swings that one down to deep square leg for a huge one. So 6 number 3 of their innings. 20 this time, top edge opportunity. Who will go and take this mid-off fielder? Once looks like the bowler will go to take the catch, quickly realizing there is a mid-off fielder in a position, so he just left the ball and mid-off fielder takes the catch. Harish back with the wicket taking delivery. Sanjay departs after he scored 6 runs in 2 balls. He's back in the pavilion. Second wicket for Harish in this over. Runs are coming, wickets are falling. The 25 already on the board. And of course in the small format of a game, the batting team will not going to bother about the fall of wickets. They know exactly they wanted to get the runs in that 24 deliveries. And the bowler will going to continue. Harish. Dhananjay is the new batter in with the jersey number 7. 25 is the score. This time lofted, catch, it is a goal. Oh, just falling short of fielder. But very interesting to watch the fielder. He thought ball is went past his hand, ball went into the boundary. But quickly realizing that the ball is in front of him, he's very happy that he saved the boundary for his team. A slight bit of comedy of error from that fielder at long off. And a couple of runs which is completed. With that couple of runs, scoreboard moves on to 27 on the board. This time one more addition to total, as the batter Dhananjay picked up a single there. With that single, scoreboard moves on to 28.
2 overs completed, 28 on the board. One more productive over. He won 2 wickets, which is back in this particular over. But they got runs in that over as well. 9 from the second, 19 from the first. Altogether 28 in 2 at the rate of exactly 14 runs per over. Excellent going here for the team Namo Friends. The 2 overs which is belongs to team Namo Friends. So next match will be played between SDC Ayodhya Nagar versus United Mudipinar. Request all the players of both the teams please be reported here to complete the signatures and get ready for the next match. The match number 4 will be played between these two teams. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಶ್ರೀಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದಂತರಿ ಗೊತ್ತು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಶ್ರೀಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ MPL season 7 which is proudly presented by Shri Mudipinar cricketers in this most beautiful venue. Again nicely places it down to square leg region for a single, and with that single scope moves on to 29 on the board. 29 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. So Chetan back on strike and Sandesh continues. This time lofted and looks like the opportunity is created. Oh my goodness, misjudgment and collusion as well between the two fielders, and ball went into the fence for 4 runs. Oh my goodness, the fielder from long off and fielder from extra cover both are coming across. ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಶ್ರೀಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 season 7. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊ that two fielders absolutely has got a collision, misunderstanding is costing a boundary here. Chetan got a boundary for that. Again far outside the line of off stump, white signal by umpire. Sandesh just wanted to get the ball away from the bat, but by doing that he's missing the line completely. Scoreboard is 34 on the board. Huge runs on the board for the team Namo Friends. Sandesh round the wicket right arm, just a ball, perfect one, the great one actually. So if you see this over, Sandesh bowled very well, and one that misfield by the fielder at deep long off and extra cover. Otherwise this is a great over from the point of view of team SVC Huakuakalu. Sandesh round the wicket right arm, balls drives straight to the fielder. Again the misfield, fielder is not really backing up. They wanted to come back for the second. In comes the throw. Sandesh couldn't manage to make the run out. Both the batters completed 2 valuable runs. Fielding which is not up to the mark of SVC. So after completion of over number 3, the team Namo Friends absolutely cruising towards a huge one, huge total. It's 39 for the loss of 2 wicket. Bright and sunny morning. Time is exactly 11 past 15, and you are watching match number 3 of the day number 1 of the prestigious Mudipu Premier League 2025, which is proudly presented by Shri Mudipinar cricketers in this Panchayat cricket ground here in Mudipu. Altogether 10 teams participating in this cricket tournament, and distributed into 2 groups, 5 teams each in A and B group. The top 6 will go in to get the place in the Super 6. Then we'll have 4th place, 3rd place, runner-up and the champion. And tomorrow will be the final day of this cricket tournament. We wait and see out of 10 teams which team will go into become a champion here. Jersey number 17 brought into attack ball that last over. Shushant the bowler will go into ball that last over, and Dhananjay
The batter will going to take the strike. Deep square leg, mid wicket, long on. The three protection in the deep in the on, and deep cover point and deep long off the two fielders outside the circle in the offside region. This time lofted, but straight to the answer fielder at mid wicket. Dhananjay departs. Just wanted to get the distance because he played it almost in the mid wicket. The wind, which is not really helping that stroke to get the distance, pays the penalty for that. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. What he has made is a three protection which is given in front of wicket for the right-hander batsman is good enough for the bowlers to dismiss the batter Dhananjay. The third wicket back in the pavilion of Namo friends. The team SVC needed one good over here. The last over they have to restrict the runs because already they got good runs for Namo friends, 39 in 3.1. The new batter in is Sampath with the jersey number 8. He'll go into ball right arm over the wicket. Outside the line of off time too far, so that white call by umpire with that extra scope. But moves on to 40 on the board for the loss of 3 wicket. Shishant. Boss, this time he lofted again against the direction of the wind. The same fielder in the picture. That is a mid wicket. The same mistake done by the new batter as well. And now is a time for the batter Sampath to dismiss. He's looking for the huge one. Again, he got the fielder in that mid wicket region. Fourth wicket back in the pavilion. It's 40 for 4. So new batter in is Nikhil coming to the middle. And wicket number 4, which is back in the pavilion. It's 40 for 4 in the over number 4 is in progress. Nikhil with the nickname of Rabada. Wait and see. This time straight to the answer fielder. My goodness. Before the delivery of this one, the fielder is inside the ring. And the bowler knows that that particular player is good in that particular shot. So he just sent that fielder into deep square leg. Chetu, the man down at square leg, takes the catch. One more wicket back in the pavilion. That means the bowler is on hat-trick. Sushant is on hat-trick. So far there is no hat-trick in the tournament. So Sushant has got a golden opportunity to get the first hat-trick of this MPL season 7. Kiran is a new batter in. They're turning out to be a great last over from the point of view of team SVC. This is a hat-trick delivery. Sushant will go into try for the hat-trick. Right above and played it nicely towards the mid-wicket to just a single. And Kiran denied the hat-trick. And he got a single for his team. And 41, which is the total score of team Namo friends. One of the best over is in progress from the point of view of SVC Huhak Wakalu from Shishant so far. But job is not yet over. 2 balls remaining. Chetan is the man. He came as an opener for the side. Still is in the middle. Waiting for his opportunity. He's been absolutely keen to come to that striker's end. After that, seeing the 2 wickets are falling in front of him. Now he will going to take the chance here. Shishant. Swings and missed. Beautifully bowled. Perfect one there from Shishant. Lovely delivery. Flighted outside the line of off stump and beaten by the face as well. Now last ball of their innings is coming up. Shishant. Final time in this over. Chetan. Coming down the track. Using his feet. Played it down to extra cover. They wanted to come back for the second because it's the last over. And they completed 2 as well. And they will going to finish with the 2. Wanted to go for the third, but it's a suicider. So 2 and a run out. One shot called by umpire. That means only 1 run. So they're trying for the third. 1 shot call by umpire. That means 1 run added to total. And they finished with the total score of 42. What a great over. What a fantastic over from Shishant.
He conceded only 3 runs in this particular over and got 2 valuable wickets as well. Great over from the point of view of SVC, but still it's a good score for the team. Namo Friends just scored a 42 and set a target of 43 to win the match for the team SVC. And wait and see how SVC batters will going to reply against the bowling of Namo Friends. We're going to take a short break here. And meanwhile, I request all the players of STC, Ayodhya Nagar as well as United Mudipu, if any players not signed yet, please sign the charter immediately and please report for the tossing ceremony for the next match. The time for changing boys as well as changing language. It's time for Gopi to take over the microphone in Hindi language. Thank you. धन्यवाद सतीश. So a huge target in front of SVC. Who Hakuakallu 43 they have to score in the stipulated 4 over which set by Namo Friends, and as far the required run rate is concerned, exactly 10.75 runs per over they have to score for victory, and their innings now going to start. और दोनों अरबिक बल्लेबाज इस वक्त मौजूद यति और चेतन अरबिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज आदर्श. और इंतजार है इस वक्त एसवीसी क्रिकेटर्स की पारी की पहली गेंद का. तो जहां तक का सवाल है, श्री वैद्यनाथ क्रिकेटर्स हु हाकुआकल्लू को इस वक्त बनाना है 43 रन, 43 द टारगेट फॉर देम इन 4 ओवर्स. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. फील्डिंग में जमावट चलती हुई पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. और गेंदबाज इस वक्त आदर्श ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. केवल 2 मात्र फील्डर पेचकश के दायरे के बाहर तैनात. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान नमो फ्रेंड्स के, और अंपायर ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत हो. तो पहली गेंद, द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप फ्रॉम द हैंड्स ऑफ आदर्श टू द बैट्समैन यति. मीनटाइम द स्ट्राइकर इज चेतन. और पहली गेंद इस बीच यति के लिए, ये गेंद को इस वक्त उछालना चाहा. गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर. 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है एसवीसी की ओर से.
तो जहां तक 43 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, दे हैव टू मेक अ स्ट्रांग स्टार्ट इफ दे हैव टू रीच द टारगेट ऑफ अ ह्यूज टारगेट ऑफ 43 इन 4 ओवर्स। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए आदर्श और चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। आदर्श यह गेंद उछाला इस वक्त लंगोन पर into the gap as well and it's gone over the fence after one bounce. This is an absolutely fantastically struck. लंगोफ और लंगोन के बीच एक खाली क्षेत्र है, उस क्षेत्र को चुनते हुए गेंद को उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ बल्लेबाज चेतन ने 4 रनों के लिए, और आखिरकार 4 रन यहाँ पर वो प्राप्त करते। तो ऐसी एक धुआंधार शुरुआत की इस वक्त ज़रूरत है एसवीसी को, अगर उन्हें 43 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 4 ओवर में। और आदर्श इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन के लिए यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड, yet to lose any wicket in the over number first in progress. Still they have a long way to go. In fact, 37 more runs now they have to score for victory in remaining 3+ over. और गेंदबाज इस वक्त आदर्श अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। लॉन्ग और डीप मिड विकेट कहना पड़ेगा। और अगली गेंद आदर्श, ये गेंद उछालना चाहा, विकेट कीपर चुके, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर तेजी के साथ। बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल बाई के रूप में, और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। 7 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इस बीच आदर्श अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट करके दैट वन प्रॉपर, इन फैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड दिस टाइम आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर एट दिस सिचुएशन। That was an absolutely tight at the last moment। और देखना यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे गेंदबाज द्वारा थ्रो को रिसीव करने के बाद, तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या फिर बैट वाज इन द एयर। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द थर्ड अंपायर। तो काफ़ी नज़दीकी मामला था यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। मैच नंबर 3 का द्वितीयार्ध इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट मुडीपू प्रीमियर लीग Season 7 2025 is now progressing here, and this tournament proudly organized by Sri Mudipu Cricketers SMC Mudipu। 10 प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है। 5 टीमों के 2 गुटों में यहाँ पर बांट दिया गया है, और नॉट आउट का इशारा अंपायर द्वारा। और इस बीच बल्लेबाज बच चुके हैं। तृतीय अंपायर नॉट आउट करार इस वक्त देते हुए बल्लेबाज पहुँच चुके हैं, और सब कुछ सुरक्षित इस वक्त बल्लेबाज के लिए। और इस बीच रन बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। प्रोलॉन्ग ओवर प्रोग्रेसिंग हियर सो फार फ्रॉम आदर्श। और आदर्श अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद को खेलना चाहता, चूंकि ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और सीधे गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स नहीं मिला। लगभग ज़मीन के सहारे गेंद आते हुए, और इस गेंद पर कोई रन न बनाने में बल्लेबाज असफल। और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर आदर्श इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद टॉप एज, मौका इस वक्त पॉइंट फील्डर के लिए, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि कवर पॉइंट से फील्डर जरूर दौड़ कर आए थे, लेकिन पॉइंट और कवर पॉइंट दोनों फील्डरों के बीच इस वक्त गेंद टिप्पा खाते हुए, और बल्लेबाज इस गेंद पर बचते हुए 1 रन प्राप्त करने में सफल। 9 ऑन द बोर्ड, yet to lose any wicket। फर्स्ट ओवर completed in SVC who Hakwaka lose innings, and still they have to score 34 more runs for victory in remaining 3 overs। That means 18 balls left, exactly 11.33 the required run rate for them at this situation। और जहाँ तक चौके और छक्के का सवाल है, वैसा कहना पड़ेगा एसवीसी के बल्लेबाज को इस वक्त चौके या छक्के इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए द बॉलर स्टार्ट्स अ फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दैट साइड एंड।
निखिल यानी रबाड़ा इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. 18 balls left in overall calculation in their innings. 34 runs more. Now they have to score for victory. Still the equal battle is now on. Fantastic live coverage we are just watching here right from King Sports under the great leadership of Mr. Irfan. We're just watching a fantastic live coverage on King Sport. न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का यहाँ पर वहाँ पर मुआयना करते हुए और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MPL मुडीपू प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया श्री मुडीपिन्नार क्रिकेटर्स SMC मुडीपू ने. और 9 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर. 43 द टारगेट इन 4 overs और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. निखिल रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता चूके विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े. आसान सा रन आउट स्ट्राइकर एंड पर था लेकिन विकेट कीपर ने थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर और लेग बाय का इशारा. लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय एम्पायर और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर. 10 ऑन द बोर्ड येट टू लूज एन विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट. और गेंदबाज निखिल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहता है हाथ ओवर द विकेट. इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सामना करते हुए इस वक्त चेतन. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा बेहतर गेंद थी एक्स्ट्रा क्विकर मत स्ट्रेट लाइन और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 10 रनों पर. एक बार फिर से गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहा विकेट कीपर चूके और गेंद इस वक्त फाइन निकल चुकी है. डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. बाई के रूप में 4 रन यहां पर जुड़ता हुआ. विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी. कोई बैकअप नहीं था शॉर्ट थर्ड मैन पर और गेंद आसानी के साथ डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए. 4 रन बाई के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ तोहफे के रूप में उपहार के रूप में और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर. 14 on the board at losing a wicket in the over number second in progress. Still the equal battle is now continuing here और गेंदबाज निखिल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. हल्की सी धूप मैदान पर छा चुकी है. सूरज कुछ हद तक बादलों के आड़ में इस वक्त छिप चुका है लेकिन गर्मी की तीव्रता जो है इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई. सुबह के 11:33 बज चुके. इट्स ऑलरेडी 11:33 इन द मॉर्निंग और इस यहाँ पर भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए और कुछ हद तक बदले भरा माहौल क्लाउडी एटमॉस्फेयर मैदान पर छा चुका है लेकिन गर्मी का एहसास अभी भी खिलाड़ी और दर्शक इस मैदान पर करते हुए. और इस बीच गेंदबाज निखिल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. यतिन के बल्ले से ये छक्का लग चुका है. ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड जस्ट लॉफ्टेड दैट वन इन स्टाइल 2 square ऑफ द विकेट एट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फेंस फॉर अ मैसिव वन. और इस छक्के के साथ द थिंग्स गेटिंग easier a little bit for the batting side. SBC cricketers 20 for the loss of 1 wicket and a fantastic struck came from the bat of Yati. और इस बीच निखिल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा बेहतर गेंद थी इस वक्त और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी. 20 for the loss of 1 wicket. Second over in progress. और निखिल इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. इस बार गेंद ऐसा कहना पड़ेगा गेंदबाज के हाथ से फिसल गए थे अंतिम मौके पर. द बॉल वाज स्लिप्ड आउट ऑफ द बॉलर्स हैंड व्हेन ही ट्राइंग टू बॉल द डिलीवरी. और यहाँ पर जहाँ तक रनों का सवाल है तो रन यहाँ पर मिलेंगे 2. 22 ऑन द बोर्ड. वाइड +1 और इस बीच रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. रन आउट था स्ट्राइकर एंड पर लेकिन नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो किया लेकिन यहाँ पर तेजी के साथ बैकअप कर चुके हैं गेंदबाज और आसान सा रन आउट इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ. मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन. 2 overs completed. 22 on the board. 1 wicket lost. First wicket gone.
So still the discussion going between the fielders and umpire. और इस वक्त आउट होकर पेविलियन वापस बल्लेबाज चेतन आउट होकर पेविलियन वापस और इंतजार है इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज का. जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 3 बैट्समैन. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯತೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Amar, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. 2 overs completed, 22 on the board. 21 to get from remaining last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. Still the match is now equally balanced. और तीसरा ओवर शुरू करते हुए गेंदबाज संजय और STC cricketers are won the toss in the next match, and what the decision they will take, just we have to wait and see. और इसमें संजय गेंदबाजी शुरू करते हुए सामना इस वक्त करते हुए यति और पहली गेंद लेकर तैयार. तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ एसवीसी हुहाकुअकल्लू की पारी में. और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट, दाहिने हाथ राउंड द विकेट. पहली गेंद इस बार लेग से बाहर, शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल है कि बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट यहां पर खो चुके, लेकिन एक रन प्राप्त करने में सफल. एंड जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर डिसीजन वेदर इट्स नो बॉल डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. दैट मींस फ्री हिट डिलीवरी नाउ फॉर द बैट्समैन. couple of runs added to the total. (24) for the loss of 1 wicket. Free hit delivery for the batsman. और देखना यह है कि इस फ्री हिट गेंद का बल्लेबाज किस तरह फायदा यहां पर उठा पाते हैं. तो इस वक्त संजय गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज. ये गेंद आउटसाइड पर स्विंग्स एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस इन द फ्लैटर वर्जन. दिस इज एन एब्सोल्यूट आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक. और गेंद सीधे इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स पर आकर गिरी है यहां पर और छक्का यहां पर लगता हुआ बल्लेबाज यति के बल्ले से. And with that 6, the scoreboard is now rising up to 30 now. 6 number 2 came from the bat of Yati. और इस बीच again this time top है, chance for wicket keeper और इस कैच को लपकने में सफल. इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद को उछालना चाहा लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, टॉप एज पर टकराई और विकेट कीपर ने अपने बाईं ओर जाते हुए इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपका. और इसी के साथ यति की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है. यति आउट फॉर 14 इंक्लूडिंग 2 sixes, scored 14 valuable runs and a second wicket lost. And now the equation stands 13 required from 10 balls now. So 13 runs to get from 10 deliveries. The lefty batsman is now comes out to the middle. Pramod this वक्त सामना करने के लिए तैयार. तो संजय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बैकफुट पर गई, गेंद को इस वक्त खेल दिया. गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 31 रन पर. 31 for the loss of both openers now. 12 runs to get from 9 deliveries. Still the equal battle is now on. और गेंदबाज संजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. और संजय के ओवर के अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद फुल टॉस लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा.
1 run added to the total, and now 11 required from 9 deliveries. The equal battle is now on. Ugly again. Full toss, lost it, and he's got the distance. Straight down the roof of our commentator box stand. और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा, the things getting much easier now for the batting side. SVC 5 required from 8 deliveries now, और बेहतरीन स्ट्रोक अमर के बल्ले से लगता हुआ छक्के के रूप में, और अब निश्चित रूप से एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त देते हुए एसवीसी के बल्लेबाज, और अगली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस, एंड ही जस्ट फिनिश्ड द मैच इन अ स्टाइल विद अ 6 into the stage, and a victory in the last over for SVC Huha Kuakallu against Namo Friends, and with that last over thrilling victory, they bagged the complete points. So fantastic 2 strikes came from the bat of Amar, 2 consecutive sixes, and at last they emerged winners. So the match number 4 is now coming up. STC Ayodhya Nagar और United Mudipinnar के बीच अगला मैच खेला जाएगा, और एसटीसी अयोध्या नगर ने टॉस जीता है, और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद. So man of the match of this match award goes to the batsman who batted brilliantly, scored 20 runs. Yati adjudged man of the match. Yati of SVC Huha Kuakallu adjudged man of the match. I request Mr. Yati to please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers for his fantastic knock of 20 runs, including 2 sixes. Yati adjudged man of the match. So the next match, STC Ayodhya Nagar will take over United Mudipinnar, and that match starts within just short while. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, एक बार फिर से जब यहाँ पर मैच नंबर 4 की शुरुआत होगी एसडीसी अयोध्या नगर और यूनाइटेड मुडिपिन्नार के बीच. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद.
Thank you very much, Gopi. And I request all the players of Badagatte Bantwal, please be reported here immediately for the signatures. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಂತರ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ MFC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So opening batters are in the middle, and the match will be played between SDC Ayodhya Nagar versus United Mudipu. And after winning the toss, captain SDC, they elected to field first, so that opening batters of United are in the middle. Prajvit and the first ball, catch it is a call. Fielder just going back, but not really able to get that one. After one bounce, he collected an ample time for the batter Prajvit to complete that 2 valuable runs. So positive start time for Prajvit. You know exactly this is a power play, and he played a safest strokes over the head of that mid-off fielder before the fielder from long off to collect that one. Ample time for the batter to complete 2 valuable runs. Again, slower one, change of pace there from the bowler. After that, quicker one, the first one, because bowled a slow leg cutter in the negation to the right-hand batsman Prajvit, missed it completely. Left arm, round the wicket, played it straight to the hands of mid-on, lack of placement. Almost drags that from outside the line of off-stamp. Just wanted to get that one in the onside region. And just a single for the batter with that 2 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Bright and sunny afternoon. Time is exactly 11 past 50. And bright sunny afternoon. Again, lovely delivery. And there is no leg before wicket, so that no question of leg before wicket. Good bowling there from Vikas. So keeping that very tidy line and length. And there is some good line and length from Vikas. This time he lofted handsomely, and he's going to get the distance. Short enough time for the batter Prajvit. They get that one right from the middle of the bat. Swings it away into the deep long on for a 6. And Prajvit is the batter just waiting for his opportunity. After that, 3 dot deliveries consecutive. Then he just wanted to break the shackles in that short pitch delivery. Enough time for the batter to hit that one right from the middle of the bat. Just breaking the shackles, and the scoreboard now 8 on the board without loss of any wicket. Vikas, left arm around the wicket, he bounced. This time full toss again. One mix up opportunity of run out. Prajit wants a single at non-strikers end. Gaurish is also once interested, and again he's sending his partner back. There is probably the single there, but Gaurish is not interested. The first over completed. After completion of first over, it's 8 on the board without loss of any wicket. Team United Mudipu. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತುಳು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂಥ ವಿಜಯ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. One of the most popular Tulu commentators, especially in the field of Kamla. Everyone heard his the voice in the Kamla competition. And even in cricket also, and we have a sweet memories in 2 years back in the Punya Koti Trophy, and he's also sharing the mic with us with the Tulu language. So Suraj brought into attack, ball the second over, and second over of the innings. He's an icon player of the side, and wait and see how well he will going to justify why he is icon of the team. And the spread out field, deep square like mid wicket, long on. The fielder at long off and one fielder at deep extra cover. And the 5 men in the onside region, 4 in the on. 4 in the off, in fact. Oh, lovely start. What we are talking about, Suraj is icon player. He is justified with his first delivery itself. It's a quicker and faster one. The batter Prajvit missed it. Gaurish, correction, missed it completely. Again, identical mirror display of previous delivery.
Same one, same line and then same reaction coming from the batter. The wicketkeeper also collect that one quickly behind the stump. And one of the fastest leg spin bowler. You can see that Suraj bowling with some extra pace in his bowling, using a lot of his shoulder to get that face in his ball. This time he lofted it, but I think the fielder will going to get that one down at long off. Gaurish just wanted to get the distance, but against the direction of the wind. It's not so easy in this cricket ground. You need to be very careful when you are going for the big shot. You need to see the direction of the wind. You can't get the distance. And till the afternoon, the direction of the wind is almost flowing against that. And Gaurish just wanted to break the shackles in the negation after that 2 dot deliveries. And Suraj, icon player, and got his first wicket in his first over. Prahas is a new batter in. Just coming to the middle with some game plan. Suraj. It over. The run switches came because of 1-6 in that over. But altogether, Suraj is bowled the over of 7 runs. And he picked up 1 wicket as well. After completion of over number 2, it's 15 on the board. They're going exactly 7.5 runs per over. Team United Mudipu. So only one big shot in that over, really disturbing the economy of Suraj. And Prahas, the man who hit that magnificent stroke, that slog sweep shot comes into play to get the distance. And no wind at all in the ground. You can see that it's a bright sunny afternoon, but we are missing some wind in the ground. If you compare the morning, it's a huge wind is passing in the ground, but in the afternoon we are not seeing that much of wind in the ground. Dixit brought into attack to bowl the 3rd over, and Prahas the batter, and again the 6 number 2. Absolutely, he's on fire. The Prahas, the man, is really looking in excellent touch, and he is a very strong player of his legs. And a little margin for error. What a shot! And that gone, absolutely majestic, the stroke which is coming from the blade of Prahas. So again wanted to repeat the stroke and didn't got that much of a bat in the negation. Prahas not happy with himself. You know exactly, he can send one more big shot down to the same area because line is outside the line of leg stump. One more addition, the total addition of that single scored Namoza into 22 on the board. Prajvit little bit having a problem with this knee, so that he couldn't manage to run, so got a runner. Oh, this time and more, looks like he played it very high, didn't time it properly, and the fielder is taking the catch out there in the mid wicket. That's the end of Prajvit's innings. They wanted to go for the big shot. Of course, the punishable delivery. Again, the short pitch delivery. But fortunately for the bowler, that Prajvit played it very high. If he managed to hit that one in a flatter version, he can easily get the distance. But unfortunately, he's back in the pavilion. The Prajvit back in the pavilion, and replacing him is number 7 batter Nitesh coming to the middle.
Dixit at last managed to get the wicket here. Lucky one for him. Nitesh to face Dixit. Lovely delivery. Good comeback here by Dixit, learning from the mistake. Of course, he got a wicket because not a wicket-taking delivery. That one absolutely the finishable delivery, got the wicket. This time again they wanted to go for the expansive drive, but missed it completely. Leg by call by umpire with the addition of that leg by Skobar Namuzan to 23. Good comeback. Dixit after that 6 in the first ball. Then he maintained that line and length very well. Prahas, the batter, will go and face Dixit. Oh, this time short pitch delivery, but outside the line of off stump, luckily for him. And Prahas just changing his mind last moment, plays it down to short third man region. Will going to keep the strike. After completion of over number 3, 24, they're going exactly 8 runs per over. Team United Mudipu against SDC Ayodhya. This is the match number 4 and match number 5. The next match will be played between MFC Strikers against Baddakatte Bantwal. Baddakatte Bantwal, they're playing their second match. They lost their opening match against Amma Cricketers in the morning. And the MFC Strikers will go into play their first match of the league stage. Altogether, a very good competition is on between all teams, the 10 teams taking part in this Mudipu Premier League 2025 Season 7. It's the month of March. It's absolutely one of difficult month. March, April and May. The 3 months in South Kendra district, of course, always challenging month for the players as well as for umpires. Last over will going to start. Praveen brought into attack to bowl the last over. Prahas is played it nicely down to deep mid wicket region for a single. With the addition of that single, Skobar Namuzan to 25. The quarter century for the team United Mudipu. Again, ball is just missing the line, outside the line of leg stump. Little margin for error. The bowler trying for the quicker one, but fails to maintain the line. One more extra, 26. Swings and miss. Wicket keeper missed it. And they will go in to grab the opportunity for that miss wicket keeping. No signal. I think it's from the bat. And with that. Scoreboard is 27. And they exceeds the time limits. So that I have to bring one fielder inside the ring. Again, lovely shot. Good placement. Beautiful shot. That was absolutely poetry in the motion. Prahas is so good. I'm watching the strokes in the onside region. But this is the one stroke he played into extra cover. Has been outstanding. You know exactly where the fielder is. And just inside out cricketing stroke. Making a little bit room to play the shot. Exquisite placement as well. And the stand and delivered. What a shot. One of the most delightful stroke played by Prahas. Technically very sound. 31 on the board. Breaking the shackles. This is what the advantage of bringing one fielder inside the ring. This time Prahas went very high. But I don't think we're going to get the distance. But fielder is underneath it and takes the catch. That's the end of entertainment innings of Prahas. Just he wanted to go for one more big shot. But he played it against the wind. Pays the penalty for that. But it's a good innings there from Prahas. He scored 20 runs in 9 balls. With the help of 2 6 and 1 delightful boundary. (31), which is the total score. With the jersey number 19, Likith is a new batter in. Praveen to continue. Lovely placement. Played it in the gap. Will it going to be? No, it's a very good combination fielding. Good throw as well. Chance of run out. Umpire says not out, rightly so. Batter is safe.
Excellent piece of fielding, isn't it? Suraj, man who really stops the ball, and another fielder backing up from the deep square leg. Guru Dikshit is the one who is getting that ball and returns the ball quickly to the hands of wicketkeeper. One more wide there, 1+1 disaster bonus run with that couple of runs scored, but moves on to 35. Over number last is in progress. Here very important runs are coming here for Team United. Swings and miss. This time appeal for stump out. Chance of now. Looks like that's run out. The last delivery. That's why they're trying for the run. But run out takes on place. So over number 4 completed after completion of over number 4. Total score of Team United Mudipu is 35, and they set a target of 36 for Team SDC Ayodhya Nagar to win their first match, and 9 runs per over the required run rate for STC Ayodhya Nagar, and wait and see how well STC Ayodhya Nagar will go into chase these runs, and wait and see how United Mudipu will go into restrict these runs. Meanwhile, I request the captains of MFC Strikers as well as Baddakatte Vantwal please be reported here immediately for the tossing ceremony. MFC Strikers ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. Time to change in commentary box as well. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So 36th target for STC set by United मुड़िपु और जहां तक सवाल है इस वक्त 36 रनों के लक्ष्य का, तो 4 ओवर में 36 रन बनाना. एग्जैक्टली रिक्वायर्ड रन रेट इज 9 runs per over. They have to score for victory. MFC Strikers, after won the toss, they elected to field first in the next match. और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो इस वक्त STC अयोध्या नगर के सामने 36 रनों का लक्ष्य यूनाइटेड मुडिपु ने रखा और उनकी पारी की शुरुआत होती हुई. 2 openers are comes out to the middle for STC Ayodhya Nagar are Ramesh and Suraj. Meantime, the bowler starts a fresh proceedings from that side and is Nitesh. और रमेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. पहला पावर प्ले का ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ. तो पहली गेंद लेकर तैयार. फर्स्ट बॉल और साथ ही ऑफ स्टंप रिवर्स शॉट दिस टाइम प्लेड डाउन टू अ पॉइंट एरिया and gone through for a quick single and get it comfortably at last.
1 विदाउट लॉस इन दिस फर्स्ट ओवर। बूस्टर पॉइंट प्राप्त करने के लिए 9 रन यहाँ पर बनाने एसटीसी अयोध्या नगर के बल्लेबाजों को, जबकि यूनाइटेड मुडिपिन्नार ने बनाए थे 8 रन अपने पहले पावर प्ले ओवर में। और बूस्टर पॉइंट्स अगर प्राप्त करने तो 9 रन यहाँ पर बनाने होंगे एसटीसी अयोध्या नगर के बल्लेबाजों को। और गेंदबाज इस वक्त तैयार सामना करते हुए बल्लेबाज सूरज, लेफ्टी बैट्समैन सूरज इज नाउ गोइंग टू फेस। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। तो आइकॉन प्लेयर सूरज जो कि इस वक्त सामना करते हुए उनकी टीम के लिए। नीतीश गेंदबाजी, ये गेंद फुल टॉस गेंद थी लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। सूरज और रमेश दोनों आरंभिक बल्लेबाज अपना खाता यहां पर खोल चुके 1-1 रन के साथ। और नीतीश अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर रहा। यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया इस वक्त हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में गेंदबाज द्वारा। और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। काफी तेज रफ्तार के साथ गेंदबाज की ओर गेंद आई थी लेकिन ना अपने फॉलो थ्रू में ठीक तरह से गेंद को रोक नहीं पाया। और 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 3 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नीतीश दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लंगोन पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। So outstandingly struck this time came from the bat of Suraj. जैसा कहना पड़ेगा, just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style of log-on fence for a massive one. इस चौके के साथ, इस छक्के के साथ बूस्टर पॉइंट अर्जित कर चुका है एसटीसी। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई तेज तरीके की विकेट कीपिंग का, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। तो बूस्टर पॉइंट यहां पर प्राप्त कर चुका है एसटीसी अयोध्या नगर, जबकि यूनाइटेड मुडिपिन्नार ने बनाए थे 8 रन पहले ओवर में। और जबकि एसटीसी ने अब तक बना लिए 9 रन, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और नीतीश अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सूरज के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त कवर पॉइंट पर सीधे फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। It just hit that one over the cover point. Fielder said not succeeded, not quite get that one from the middle of the bat. और again the cover point fielder द्वारा बेहतर तरीके से लपक ली गई और सूरज छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर अपना विकेट यहाँ पर दे चुका है। 9 रनों पर पहला विकेट खो चुका है एसटीसी अयोध्या नगर। It's 9 for the loss of 1 wicket after completion of first over for STC Ayodhya Nagar chasing the victory target of 36 in 4 overs set by United Mudipinnar in the match number 4 of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025. तो 27 रन और चाहिए, 27 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. Exactly. The required run rate remains the same, 9 runs per over they have to score for victory. New batsman because the number 3 batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद रमेश सामना करने के लिए तैयार, जबकि इस छोर से गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए लिखित और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले इस वक्त समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और लिखित ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग थोड़ा सा सीधा तैनात इस वक्त और लॉन्ग ऑफ पर थोड़ा सा वाइडर फील्डर तैनात और डीप कवर पॉइंट और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन के बीच एक फील्डर मौजूद सीमा रेखा के अंदर। स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। लिखित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद फुल टॉस गेंद थी इस वक्त, इस बार रन आउट का खतरा, लेकिन एन मौके पर अपने क्रीज पर कदमों को खींचते हुए सुरक्षित रन इस बीच नहीं मिलेगा। तो फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद का फायदा उठाने में असफल और शॉर्ट फाइल लेग पर विकेट कीपर ने जाकर बेहतर फील्डिंग इस गेंद पर की, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। लिखित
एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर 6 रनों के लिए। फैंटास्टिकली स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ रमेश, और ऐसा कहना पड़ेगा मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए स्लॉग स्वीप शॉट के जरिए गेंद को इस वक्त उछाल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। बल्लेबाज रमेश ने और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गुड गोइंग ऑन हियर फॉर एसटीसी अयोध्या नगर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट लिखित तक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर से बल्लेबाज रमेश के लिए एक बार फिर से गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, घुटनों के बल बैठते हुए ऑन साइड पर चूके और गेंद उनके पैरों पर टकराई, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। कुल मिलाकर 15 गेंदें अभी भी बाकी, रन चाहिए 20 विजय के लिए। और लिखित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछाला डीप बैक और स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 number 2 came from the bat of Ramesh in this over and he is just looking on fire. 22 the score now. अब 14 रन सिर्फ चाहिए, गेंदें बाकी है 14, 14 balls left and 14 runs required. The things getting much easier for the batsmen of SDC अयोध्या नगर। और निश्चित रूप से कम बैक करना है तो इस वक्त डॉट गेंदों को फेंकना होगा यूनाइटेड मुडिपिनार के गेंदबाजों को। ओवर द विकेट ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, गेंद को मिड आउट की दिशा में सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए इस वक्त रमेश और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 13 बॉल्स रिमाइनिंग, 13 रन रिक्वायर्ड। और लिखित इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त करने के लिए तैयार। दोनों बल्लेबाज रमेश और विकास कुछ बातचीत इस वक्त करते हुए बल्लेबाजी बैटिंग के रणतंत्र के बारे में, और इस बीच अपने स्वस्थान पर वापस लौट चुके इस ओवर में अंतिम बार लिखित दाहिने हाथ राउंड द विकेट, अगली गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, पंचिंग इट अवे थ्रू द ऑफसाइड डाउन टू द बैक कवर फॉर 4। और विकास थोड़ा सा विड्थ था इस गेंद को कबूल करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए। In fact, it's a 6 declared by umpire. It's gone for a maximum in a flatter version square of the wicket. 29 for 1, 7 runs required in remaining 12 balls. और इस वक्त इक्वेशन काफी आसान नजर आता हुआ एसटीसी अयोध्या नगर के लिए। 20 runs scored in this over from लिखित, और काफी महंगा ओवर यूनाइटेड मुडिपिनार के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है। 9 रन सिर्फ चाहिए, 12 गेंदें बाकी। द बॉलर स्टार्ट्स अ फ्रेश प्रोसीडिंग्स। गौरी थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। और बल्लेबाज रमेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 7 to get from 12 balls। निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही यहाँ पर यूनाइटेड मुडिपिनार को इस मैच में वापस ला सकती है, और उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त गेंदबाज गौरीश और पहले गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम गौरीश, रिवर्स शॉट परफेक्टली स्ट्राइक एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। It's gone now with defense after 1 bounce and deep back on the third man। और इस चौके के साथ ऐसा कहना पड़ेगा एसटीसी अयोध्या नगर अपने विजय के और निकट हो चुका है। जस्ट 3 to get from 11 deliveries। 33 on the board for losing 1 wicket। और गौरीश अगली गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहा, मिड ऑन पर गेंद पहुंची, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। 34 on the board in the over number 3 in progress। और सिर्फ 2 मात्र रन अब विजय के लिए चाहिए। और इस बीच गौरीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार विकास के लिए। यह गेंद इस वक्त स्टक विकर गेंद थी, गेंद पर रन से नहीं बना, डॉट गेंद। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 34 रनों पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गौरीश विकास के लिए फुल टॉस, इस बीच गेंद को उछालना चाहता है, उछल कर रहा है
लेकिन जहां तक सवाल है गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 34 रनों पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और सिर्फ 2 रनों की जरूरत अब विजय के लिए जस्ट 2 रन्स टू गेट फॉर विक्ट्री और गौरीश इस वक्त तैयार इस ओवर में 5वीं बार ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में जस्ट अ सिंगल ही गॉट 35 and that single brings the equality. Scores are now leveled. 1 run just they have to score for victory. Last time in this over, Gaurish comes. दाहिने हाथ around the wicket. उछाला long off पर into the gap as well, and that's it. So just a single run he got. And a comprehensive victory for STC Ayodhya Nagar against United Mudipu. They won the match by 9 wickets with exactly an over to spare, and with that victory they bagged the complete points as well as with the booster point. So match number 4 of this prestigious cricket tournament MPL Mudipu Premier League 2025 season 7 has been came to an end, which won by STC Ayodhya Nagar against United Mudipu. So match number 5 is now going to start between MFC Strikers versus Baddakatte Bantwal. And that match starts now within a just short while. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से अंग्रेजी में हम सतीश के साथ उपस्थित होंगे जब यहाँ पर एमएफसी स्ट्राइकर्स और बड्डाकट्टे बंटवाल के बीच का मैच शुरू होगा. मैच नंबर 5 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MPL सीजन 7 2025. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. So man of the match of this match award goes to Ramesh, who batted brilliantly for STC Ayodhya Nagar. He is adjudged the man of the match for his unbeaten knock of 21 runs scored by Ramesh. I request Mr. Ramesh to please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers for his fantastic knock of unbeaten 21 runs. Ramesh of STC Ayodhya Nagar adjudged the man of the match. Next match starts within just a short while, and till then we're taking a short break. Thank you. Dhanyavad. Now, the man of the match distributing by Vijay for Ramesh for his fantastic knock of 21 unbeaten runs. So congratulations for Ramesh and best of luck for the rest of the matches of the tournament. And we'll be back right after a short break with my friend Satish in English when the next match will going to commence. Thank you.
Welcome back for the match number 5 MFC Strikers versus Badagate. And the first ball, and, they wanted to go for the single, and they got the single. The first run for Brajesh, and for his team, one without loss of any wicket. Gitesh is on strike, and Sharath will go into ball. The second delivery of the power play, the booster over, and the team just desperately wanted to get some runs in this booster over, and they wanted to get extra points in this booster over. Wait and see how well they will going to get this extra point, and in fact correction, how well they managed to get some runs in this power play. And the fielder at deep long on and deep mid wicket, the two fielders outside the circle in the power play, round the wicket. This time wicket keeper behind the stump, questioning over the umpire for the stump out. Ball is just passing around the legs of the batter. Good bowling there from Bharat Sharath. Third time in this over. Full toss and opportunity for the caught and bowled, and Sharath completes the catch as well. So juicy full toss. Gitesh missed time that one, wanted to go for the big one after seeing and excited that full toss delivery. They wanted to get that one into the mid wicket, but too early into that pull shot pays the penalty for that. He got a top edge, and bowler on his follow through, making no mistake at all. The wicket number first is back in the pavilion for team Badakate Bantwal. They're playing the second match. They lost their first match against Amma Cricketers, and this is very important for team Badakate to get some good start here, but already lost one wicket, and first over only 2 on the board. Nikshit will be the new batter as a number 3 batter for the side. Bowled him, cleaned him up. Fantastic bowling there from Sharath. And the big man Nikshit is out for golden duck. He being the icon player for the side, but he is absolutely disappointed. He's wanted to go for the expansive extra cover drive. The misses the line completely. And the bowler did the trick of bowling that beautiful leg cutter. Defeats the bat of Nikshit. The wicket number 2 is back in the pavilion. The back-to-back 2 wickets, that means Sharath is on hat-trick. Vinay is a new batter in. So far there is no hat-trick. The 2 bowlers are picked up 2 wickets in 2 deliveries, consecutive deliveries, but fails to complete the hat-trick. And now is one more chance here for the bowler. And in the power play, the bowler has got a chance of getting a hat-trick. Vinay will going to take the strike. This time lovely delivery. This time low full toss, try to yoke the batter in the negation. Good one there from a bowler. No run scored. It's turning out to be a great first over. The power play over is in progress. Only 2 runs and picked up 2 wickets. Sharath final time in this over to Vinay. Only 1 run on the board. Correction. This is a appeal for run out. No call by umpire. So 2 runs in this first over. Great start here from Sharath. What a great over. The power play over, 2 runs and 2 wickets. Outstanding bowling figure for any bowler who bowls the first over, the power play. So still the team Badakate Bantwal are really searching for the right track. They're struggling in the middle, 2 for 2. Prashant, the new bowler, to bowl the second over, winning the toss, selected to field first. And Sharath justifying the decision of the captain of bowling first by bowling excellent first over. 2 runs and 2 wickets. Shushan is a new bowler in to bowl the second over. Next match, MFC, correction, KFC Kurnad versus the Bubbly Warriors.
Vinay and Brijesh how to rebuild the innings for the team. Again, catch it is a call, but played it down to deep long off for only a single. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 3 for the loss of 2 wicket in the over. Number second is in progress. (12:30), the time exactly in the afternoon, the bright and very hot sunny afternoon. Ah, lovely shot, played it right from the middle of the bat. The fielder is there in the deep square leg, but he couldn't manage to stop that one. Not a good effort there from Gautam. It might be a stoppable if you can quickly moving to the direction of the ball, but he is a little bit lazy to react to that one. Pays the penalty for that. Boundary comes up. And with that boundary, scoreboard now moves on to 7 on the board. Much required boundary coming from the blade. Oh, bowled him, cleaned him up. Good comeback. After that boundary, immediately the bowler, that incoming delivery for the left-hand batter, the loose stroke which is attempted by the batter. After that boundary, Brijesh just wanted to get the single to on extra cover, but almost looks like he drags the ball into the stump. Good comeback by the bowler. Shushan is back with that very good incoming delivery. Wicket number 2, which is back in 3, is back in the pavilion. 7 for 3, and the new batter in is Guru with the jersey number 7. The team total is also 7. Shushan. Round the wicket. Guru, the batter, will go into face. This time catch it is a call, and fielder underneath it. The first ball dismissal, golden duck. Guru just wanted to go for the slog safe shot, but he's not really getting that much of timing behind that shot. Pays the penalty for that. Fourth wicket back in the pavilion, and Badagate friends are looking in deep trouble. It's 7 for 4. The new batter in is Suraj, the big man, coming to the middle. It means Shushan is on hat-trick. One more bowler has got a hat-trick opportunity after that. Sharath is picked up 2 wickets in 2 deliveries now. Shushan has got opportunity to get a hat-trick. The 5th delivery of this over. Round the wicket, right arm. Lofted, catch it is a call, but ball is going the distance. The big man, what we're talking about, has got a big 6. What a shot, just stand and delivered. Nothing much wrong with that line, almost in the midland leg stump. And the batter, Suraj, dispatching that one down to deep long on for a massive one. Breaking the shackle in the negation. And scoreboard moves on to 13. 13 for the loss of 4 wicket. What we are talking about the hat-trick, but Suraj has got a different idea. Again, catch it is a call. Again, played it very nicely. Good piece of fielding there by the fielder in the deep mid wicket. Just a single. To 1 more over completed. 2 overs completed. Mixed result in this over. Runs also coming, and even the wickets are falling. 14 after completion of over number 2. The team Badakate friends Bantwal going exactly 7 runs per over, but they lost 4 wickets back in the pavilion in 2 overs. MFC Strikers, they're playing their first match of their league stage. Badakate friends, they're playing their second match of their league. The first match they lost against Amma Cricketers in the inaugural match in the morning.
The 21 target set by Badakate friends for Amma cricketers that chased down quite easily in the first match. So third over, bowler brought into attack. Manju to bowl that third over. Right arm over the wicket. Full toss and Suraj dispatched that one into that the main stage roof. What a shot. That was an absolutely punishable delivery. You cannot survive from Suraj if he bowled that full toss. Second sixer coming from big man. And much required runs as well for his team from his bat. And with that 6, Cobert jumps into 20 now for the loss of 4 wicket. Manji bowls. Again, Suraj wanted to repeat that stroke, but this time better line leg by call by umpire. With that addition of that singles covered, moves on to 21 on the board. That big difference in this match is a 2-6 coming from the blade of Suraj. Really giving some kind of oxygen in this hot condition for the team. But Dakate friends, Manju to Vinay. This time Vinay lofted and looks like, oh, what a save. Absolutely fantastic. It was a phenomenal attempt from the fielder. What could be a certain 6, but Karthik, I think so, the fielder in the deep long on. Akhil, he got a very good save and almost his all bodies in the air while tried to stop that 6. The great save there from Akhil. Excellent. The condition wickets looks like it's going to be a certain 6, but just a couple of runs saved. 4 runs for his team, and total score moves on to 23 for the loss of 4 wicket. Manju to Vinay. This time it's going to be a one more wide. 1 + 1, 2 more to the total. 25. Quarter century for Badakate friends. They are back in the game. Especially the Suraj is taking the initiative of getting some acceleration. This is turning out to be a good over for Badakate again. The runs are coming in this over. Manju to continue. This time Suraj lofted but played it very high. No timing whatsoever. And Akhil, the fielder, one who saved the 6, is taken the catch comfortably. So Suraj's small cameo which is comes to an end, but very handy for the team. It scored a valuable 14 runs from his bat with the help of 2 massive sixes. He did the job for his team. Suraj departs. Good comeback here by Manju after that 6 and some runs in this over. He wanted to bounce back with the wicket taking delivery. Jersey number 9 will be the new batter. Oh, lovely delivery, isn't it? This all happening when it's going to be a when you are getting a wicket in the previous delivery. Level of confidence is always going to be very high from the bowler. Dot delivery. Swings. Appeal for leg before, but no leg before, but only a dot delivery. Good comeback by Manju. So 3 completed after completion of over number 3. Total score is 25 for Badakate friends. So now last over remaining. Abhishek and Vinay, the batters, are in the middle. Have to get some acceleration in the last over. The final opportunity for the batters to get some acceleration in the run rate. Mudipu Premier League 2025 Season 7 is in progress. The day number 1 and match number 5. Sujir to continue from the
not to continue with the fresh over from the water tank end to Vinay. So far Vinay batted sensibly. The last opportunity for to get some runs for team. Long on, mid wicket, deep square leg. The fielders in the deep in the on. Deep extra cover, long off. The fielders are in the deep in the offside region. Short extra cover point, shot third man. The first ball again wanted to go for the bull shot. That ball is missed at wicket keeper by call by umpire. One more addition of that single scope, but Namuzan to. It's a wide ball, of course, no contact with the bat, so that umpire called it a wide, rightly so. And scoreboard is 27. Sujir. Bounce, lovely delivery, beautifully bowled. Batter wanted to get Abhishek down to onside region, beaten by the flight and the turn of the ball. No run scored. Again drives that one down to long on. Whitish wanted to come back for the second. They made it quite easily in that. The all runs are very important for the Baddakat friends. Scored Namuzan to 29 for the loss of 5 wickets. Last 4 deliveries left in their innings. Balled him, cleaned him up. Absolutely perfect one. Quicker and faster one in the negation there from the bowler Sujir. And Abhishek wanted to go for the expansive drive. You miss, high hit. Ball hits off stump and disturbing the furniture. The wicket number 6 is back in the pavilion. (29) for the loss of 6 wicket. The new batter in is Ranjit. Last 3 balls remaining in the innings. Have to get some runs. Sujit. This time top edge, wicket keeper going back and taken the catch. Just moving to his left and complete the catch. Back to back wicket here for Sujir. Again the one more bowler is on hat trick. After that Sharath picked up 2 wickets in 2 consecutive deliveries. After that Shushan who picked up 2 wickets in 2 deliveries. Now it's the time for Sujir to try for the hat trick. 2 wickets in 2 consecutive deliveries. Now Sujir is on hat trick. So no hat trick so far in this MPL season 7. Oh, full toss delivery, opportunity of run out there in the non-striker's end, and his umpire raising his finger. Deepak missed that golden opportunity of full toss delivery to get the runs. Missed it completely. And again back in the pavilion in the form of run out. It's because Vinay desperately wanted to face the last delivery of their innings. (29) last delivery of the innings of Baddakat friends. Sujir turning over to be a fantastic last over is in progress. Just coming down the track using his feet, just a single, not more than that. And yes, that's it, 30, which is the total score of team Baddakat friends, and they set a target of 31 for team MFC Strikers to win this match. Good comeback by bowler, especially the Sujir, the man. Bowled lovely over. The first over is also a great over. 2 runs, 2 wickets. The last over is also a great over from the point of view of team MFC Strikers. And wait and see how MFC Strikers will go and get this 31 in 20 from 24 deliveries. Before MFC Strikers will going to take over, the batters will go and take over. The time for the change in commentary box. It's a time for Gopi to take over the microphone. Thank you.
KFC ಕುರ್ನಾಡ್ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the captains of KFC ಕುರ್ನಾಡ್ as well as Bubbly Warriors please to be reported here for the toss procedure. So 31 the target for MFC Strikers set by Baddakatte Friends. Their innings now going to start. Their openers are the crease are Gautam and Shiva. Minta the bowler starts the fresh proceedings from that side and is Brijesh, and we are just waiting for the first ball of their innings. And 31 MFC Strikers have to score for victory with a required rate of exactly 7.75 runs per over in the stipulated 24 deliveries. And the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त ब्रजेश तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज गौतम के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता है इस वक्त, चूंकि और विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. शिवा जो कि इस वक्त सामना करते हुए और ब्रजेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची और एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और एक रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के शिवा का खाता यहाँ पर खुल चुका है. सामना करने के लिए तैयार गौतम, जबकि ब्रजेश इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. Gautam the man dismissed it. Just wanted to play that one on the onside. He's got a gap between his bat and leg, and the ball passed in that gap and stuck to his mid leg stump. Bills are disturbed. And the first wicket fallen in the face of Gautam. He's backing to pavilion. MFC Strikers are now lose their first wicket. It's 1 for 1 in the first over. So in the next match, Bubbly Warriors are won the toss against KFC Kurnadu, and what the decision they will take, just we have to wait and see. So back to this game. First wicket loss for MFC Strikers. New batsman is now comes out to the middle. नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ. उदय नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे ब्रजेश की गेंदों का. पहला और एकमात्र पावर प्ले का ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और इस बीच ब्रजेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते. बॉल्ड आउट. दिस टाइम one more wicket fallen. Much straighter line and once again he just got the rid of this batsman. He is backing to pavilion. The second wicket gone. Second consecutive wicket for Brajesh and MFC Strikers lose their second wicket in the very first over of their innings. They are looking in trouble in fact. It's 1 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को साइड पर उछालना चाहता चूके और गेंद उनके बल्ले और पैर को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई. ऑफर पहले ओवर में बड्डाकट्टे फ्रेंड्स ने बनाए थे, जबकि 2 रन बनाए एमएफसी स्ट्राइकर्स और बूस्टर अंक जो कि कोई भी टीम को इस वक्त नहीं दिया जाएगा. और यहाँ तक का सवाल है बचे हुए ओवर्स का, तो 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी. 29 रन और चाहिए इन बचे हुए 18 गेंदों में, यानी 3 ओवर में. Required run rate exactly 9.67 runs per over. The situation for the batting side. और देखते हैं इस वक्त दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज
हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त शुरू करते हैं। दोपहर के 12:50 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप का प्रकोप कुछ हद तक कम ज़रूर हो चुका है, लेकिन गर्मी का एहसास इस वक्त खिलाड़ी और दर्शक इस मैदान पर अभी भी करते हुए। सूरज कुछ हद तक बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है, लेकिन बदले भरा वातावरण ज़रूर छा चुका है, लेकिन धूप गर्मी का एहसास यहाँ पर खिलाड़ी और दर्शक दोनों इस वक्त करते हुए। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತರ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. आकाश द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार आकाश गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। दूसरा ओवर शुरू होता हुआ एमएफसी स्ट्राइकर्स की पारी में। और फर्स्ट बॉल फ्रॉम आकाश ओवर इज नॉट कमिंग अप राइट आर्म ओवर द विकेट हियर ही बाउल्स। Left it down to wide is long on. In fact, he's got a single. They're looking for the second but won't get it. और थ्रो इस वक्त पहुंच चुका है गेंदबाज के हाथों में वाइड इज लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर। और गेंदबाज इस वक्त आकाश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। शिवा इस वक्त सामना करते हुए। Oh, loser one, but couldn't got the advantage of that one. इस वक्त गेंद को उछालना चाहा था, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए। वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और 2 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में उनके खाते में जोड़े जाएंगे। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। 5 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। आकाश फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथों पर द विकेट शिवा के लिए। अगली गेंद पवन के लिए, माफ कीजिए। इस बार गेंद को उछालना चाहा, डाइविंग एफर्ट इस वक्त विकेट कीपर ने लगाई और इसे देखते हुए बल्लेबाज ने अपने कदम क्रीज पर खींच लिए। और जहां तक रनों का सवाल है तो इस वक्त रन से यहाँ पर नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष यहाँ पर करते हुए एमएफसी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज निश्चित रूप से एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए यहाँ पर बड्डाकट्टे फ्रेंड्स की गेंदबाज, जबकि बल्लेबाज एमएफसी स्ट्राइकर्स के इस वक्त ड्राइव किया। इस वक्त गेंद को डीप कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा और बेहतर फील्डिंग वहाँ पर। जस्ट सिंगल गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुँच चुका है 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज आकाश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड। और गेंद इस वक्त सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी है। मच स्ट्रेट लाइन ही बाउल्ड, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। और आकाश इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, वंस अगेन मिसेस। दिस इज टर्निंग आउट टू बी वन मोर गुड ओवर इन बड्डाकट्टे's पॉइंट ऑफ व्यू। Just 6 on the board, 1 ball left in this over. और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज आकाश इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर and he just stand and delivered for a maximum. This is an outstanding stroke. First confident stroke came from the bat of the batsman Shiva, and he's got that one just right from the middle of the bat and dispatched it in a style over long on fence for a massive one. Score बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 on the board, 2 wickets lost and 2 overs has been came to an end. And let's straight away coming back to the equation. 31 minus 12, that means 19 runs more now they have to score for victory in remaining 12 deliveries. The required run rate is exactly 9.5 runs per over this situation. Match number 5 of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now progressing, in which is proudly organized by Sri Mudipinar Cricketers SMC Mudipu. 10 prestigious franchise teams are participating in this tournament.
10 teams are divided in 2 groups, 5 teams in every group. For teams as far as this tournament is concerned, in a pool A, Amma Cricketers, Baddakatte, Bantwal, Namo Friends, SVC, Huha Kwakalo and MFC Strikers are in a pool A. Meantime, in the pool B, SMC Pajir, Bubbly Warriors, STC Ayodhya Nagar United, Mudipinar and KFC Kurnadu. 5 teams divided in pool B group. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, पुष्पदीप गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 12 गेंदे 19 रन चाहिए. इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन इससे पहले उसे मिड ऑफ पर रोक लिया गया फील्डर द्वारा. एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. 13 ऑन द बोर्ड, 18 नीडेड फ्रॉम रिमेनिंग 11 बॉल्स. 11 गेंदे 18 रन चाहिए विजय के लिए. बराबर का टक्कर इस वक्त जारी. और गेंदबाज इस वक्त पुष्पदीप फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर तो विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप बैकवर्ड स्कोर लेके इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर था. डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन बिल्कुल सीधा, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइड, डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात इस वक्त ऑफ साइड पर. और इस बीच पुष्पदीप अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा. He's just played that one with a reverse shot and finds the gap as well. This is a fantastic strike, just wishing the bat ankling around the corner, and he just played that one with a reverse shot and finds the gap as well in between deep backward third man and a deep point in fact. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर. बेहतर स्ट्रोक लगता हुआ इस वक्त शिवा के बल्ले से. और अब इक्वेशन स्टैंड्स 14 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 10 डिलीवरीज नाउ. 14 रन चाहिए, 10 गेंदे बाकी. अब मैच अभी भी लगभग बराबरी पर रख चुका है. और गेंदबाज पुष्पदीप इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार शिवा के लिए. यह गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर नहीं आए, पैरों पर टकराई और विकेट कीपर ने तेजी के साथ आगे गिराकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 9 गेंदें बाकी हैं, 14 रन चाहिए इस वक्त विजय के लिए. दोनों बल्लेबाज इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए बल्लेबाजी बैटिंग के रणतंत्र के बारे में. और इस बीच पुष्पदीप अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज पुष्पदीप और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहे, एक बार फिर से चौके. After conceding a boundary, the bowler come back very well in the next 2 deliveries. Bowled a dot delivery for the right-handed batsman, and now straight away the pressure on the batsman. दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर. 17 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. 14 रन चाहिए, 8 गेंदे बाकी. 14 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 8 डिलीवरीज. और दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ. और इस बीच पुष्पदीप अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, चूके 3 डॉट बॉल्स इन ए रो. एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक आफ्टर कंसीडिंग अ बाउंड्री by the batsman Pushpadeep. 3 consecutive dot balls came from him. And the scoreboard stays at 17 for the loss of 2 wickets. Last time in this over the bowler comes. 7 balls left, 14 runs required. Pushpadeep. Again, उछाला इस वक्त long off पर and taken inside defense at long off. 1 more wicket fallen. शिवा ने गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर को इस वक्त प्राप्त करते हुए. और ऐसा कहना पड़ेगा चौका प्रदान करने के बाद गेंदबाज पुष्पदीप ने एक बेहतरीन कमबैक यहां पर किया है. 4 लगातार डॉट गेंदें उन्होंने फेंकी चौका प्रदान करने के बाद. अब तख्ता यहां पर बड्डा कट्टे फ्रेंड्स का भारी लगता हुआ. 14 रन चाहिए अंतिम ओवर में. 14 नीडेड फ्रॉम द लास्ट ओवर. और काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई. Match number 5 of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League season 7 2025 is now progressing here. और इस मैच के बाद अगला मैच KFC कुरुनाडु और
बबली वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा, तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार है। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। लास्ट ओवर स्टार्ट्स, मैच डिसाइडिंग ओवर स्टार्ट्स और गेंदबाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 6 balls 14 runs required. First ball comes from the bowler. Starts the fresh proceedings from that side in. और निस्संदेह चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त एमएफसी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को इस अंतिम ओवर में वापसी कमबैक करने के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और हर्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ऑफ स्टंप से बाहर एंड ही स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड। 13 टू गेट नाउ फ्रॉम 6 balls। 13 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी और हर्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं, अगली गेंद लेकर तैयार अपनी पहली सही गेंद की तलाश में। इस बार गेंद को उछाला इनटू द विकेट गैप, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था, 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 11 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 5 balls। और हर्षित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार क्विकर, एब्सोल्युटली क्विकर, मत स्ट्रेट लाइन और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 4 गेंदे 11 रन चाहिए। 10 for tie, 11 for victory, 4 balls left। और गेंदबाज अगली गेंद, ये गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर। अब इक्वेशन कुछ हद तक कठिन होता हुआ, 3 गेंदे बाकी, 10 रन चाहिए। 10 रिक्वायर्ड फ्रॉम द लास्ट 3 डिलीवरीज। हर्षित अगली गेंद लेकर तैयार। This time just gone for a mighty one, not succeeded. Quick piece of work made by wicketkeeper behind the stumps, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। अब ऐसा कहना पड़ेगा, this could be the last chance in front of the batting side. 10 required from the last 2 balls. 6 and a 4 required in the last 2 deliveries. Last chance in front of the batsmen. और हर्षित इस वक्त तैयार। बेहतरीन गेंदबाजी अब तक इस ओवर में हर्षित कर चुके हैं। अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट इट। This time I think he won't clear that one. In fact the ball fell. He just played that one against the wind and this time he's got a couple for that. हवा के रुख के खिलाफ इस स्ट्रोक को खेला था, लेकिन गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए जब तक फील्ड लॉन्ग ऑन पर और नॉन स्ट्राइक रन पर लौटा जाए 2 रनों का इजाफा हो चुका है। अब 8 रन चाहिए अंतिम गेंद पर। 8 रिक्वायर्ड फॉर द लास्ट इन द लास्ट डिलीवरी इन फैक्ट। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो हर्षित इस वक्त गेंदबाजी करेंगे सुजीर के लिए। मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार। 7 for tie, 8 for win। लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। हर्षित बाउल्स ऑफ स्टंप से बाहर एंड वाइड एंड नाउ 6 रिक्वायर्ड, नॉट फॉर विक्ट्री बट फॉर टाई। 6 रिक्वायर्ड फ्रॉम द लास्ट बॉल फॉर टाई और एक अवकाश जरूर है यहाँ पर मैच को टाई करने का बल्लेबाज के सामने। हर्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछालना चाहा, चूके एंड वाइड एंड नाउ 6 रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री इन द लास्ट बॉल। 6 रन चाहिए, छक्के की जरूरत है अंतिम गेंद पर। और अब निस्संदेह डू और डाई का सिचुएशन, मारो या मरो इस वक्त बल्लेबाज के सामने। छक्के की जरूरत है अंतिम गेंद पर और गेंदबाज को इस वक्त दूसरे खिलाड़ी टीम के उनके अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस अंतिम गेंद को उन्हें फेंकनी चाहिए। और दबाव इस वक्त गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के ऊपर साफ नजर आता हुआ। 6 नीडेड फॉर विक्ट्री फ्रॉम द लास्ट बॉल। और अंपायर ने इशारा किया कि उनके निगदित समय समाप्त हो चुके, तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तो विकेट है और छक्के की जरूरत है अंतिम गेंद पर। और गेंदबाज
इस वक्त तैयार हर्षित सुजीर के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट द लास्ट बॉल कम्स दिस टाइम मिसेस he misses fantastically bowled by the bowler in the last delivery. So 5 runs thrilling victory for Baddakatte friends against MFC Strikers, and with that 5 runs thrilling victory they back the complete points. So fantastic match number 5 of this prestigious cricket tournament. MPL has been came to an end, and at last Baddakatte Bantwal emerged winners against MFC Strikers in the last ball, and with that victory, with that thrilling victory, they back the complete points. So man of the match of this match award goes to Brajesh, who bowled superbly, and also he contributed with a bat of 5 runs, and he bowled very economically, bowled 1 over, no made in 2 runs, and he captured 2 wickets, and because of that economical bowling performance, he adjudged man of the match. Brajesh of Baddakatte friends adjudged man of the match. So that's it for this match number 5. And now the match number 6 now is going to start with between KFC Kurnaul versus Bubbly Warriors, and that match starts within just 12. Till then we're taking a short break. एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब अगला मैच यहाँ पर शुरू होगा. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. So thank you very much, Gopi, and a fantastic match which is comes to an end. The previous match which is won by team Baddakatte Bantwal in the last over. The bowler is holding his now and completed the victory for the team. The KFC Kurnaul takes on Bubbly Warriors. Warriors, they are playing their second match. The first match they faced a defeat against SMC Pajir. So that it's going to be a very important match here for the team Bubbly Warriors. KFC Kurnaul, they're playing their first match. The opening batters are in the middle because Baddakatte Bantwal captain won the toss. Bubbly Warriors, won the toss and elected to field first. Opening batters here is the first ball. And this time played it straight to the fielder. Oh, and he'll miss that throw. My goodness, it's almost the batter is given up. Darvish. Rakesh played it straight to the hands of square leg. No response coming from his partner. Sanket not giving any response because ball went straight to the hands of the fielder, but without seeing the ball. And Rakesh wanted to get the run, but very lucky for him that Anil misses a throw from that square leg fielder. So just survived, no run scored, and icon player Rakesh will going to take the strike. Nikhil second time in this over. Power play and booster over. Again, that ball is going to be a punishable not from the batter but from the umpire because of that line which is gone outside the line of leg stump. But he's just wanted to go for the wide swing of the bat.
but missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler. The this time he lofted and no one there in the deep in the long off. One bounce collected by the fielder just inside the boundary line. A good chase from the fielder from mid off and running towards a deep long off before the ball will go into landed over the boundary line. He collected that one and ample time for the batter to complete that 2 valuable runs for Rakesh and for his team. And with that couple of runs, Kobana moves on to 3. This time he got that one beautifully right from. Oh my goodness! Oh my goodness! What a combination catch! Unbelievable! The fantastic! My goodness! This is might be the one of the best catch they ever produced in underarm cricket. Just the taps. He taps the ball, but he's not really knows that after he's tapping the ball, his ball's coming straight into the hands of that fielder. But umpire will going to see whether the fielder is saved that 6 or not, because the umpire have to see that, because this is an outstanding effort, isn't it? Just I want to go back to that replay of the catch. The Rakesh swings it away. Looks like it's going to be a maximum. The fielder almost going back and taken an aerial route and taps the ball. After he taps the ball, just like in a volleyball, we are giving a passing, taps the ball and another fielder takes a catch. Almost it was an international standard. Unbelievable. It's out from the third umpire. It was a fantastic. Ullas, the fielder, remember the name. The Ullas is absolutely fantastic job. And a short extra cover fielder. He can't believe his eyes, because after Ullas taps the ball went straight to the hands of that extra cover fielder. Unfortunate dismissal for Rakesh, but it was a phenomenal attempt there from Ullas. A great catch. Certainly tomorrow that catch will going to become a viral in social media surely, because of that attempt made by the fielder. Has been outstanding. Almost he got a jump, and having the jump is not good enough, but after the jump he taps the ball and taps the ball, and then ball went straight to the hands of another fielder. Rakesh back in the pavilion. Flighted one, extra bounce in the negation for the bowler Nikhil. The good enough for the new batter in the negation. That ball is missed this bat, and wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler. This time played it very nicely. Juicy full toss and played it very nicely. Well controlled pull shot from Rupesh. And that ball is almost a full toss one. And Rupi played it nicely. Pulls it nicely down to deep square leg boundary for 4 runs. With that boundary score, moves on to 7 on the board. Much required boundary coming from the blade of Rupi. Nikhil bows. Rupesh lofted and handsomely. And he clearing that boundary line. 1 bounce into the fence for 4. A lovely shot, isn't it? The Rupesh is absolutely changing the momentum straight away with that 2 exquisite cricketing stroke. After completion of first over of the power play, scoreboard is 11 on the board. The booster over, some boosting coming from the batter Rupesh in that last 2 deliveries of that over. The much required boundary, 1 towards a deep square leg with the exquisite sweep shot. The second one is inside out lofted drive down to deep extra cover. Outstanding batting display from Rupesh, changing the momentum straight away. 11 without loss of any wicket. I request extra player
Please be reported here of Team Bubbly Warriors. Bowler name, please. Rajesh brought it attack, and of course, more than the ball, bat which is defeated the ball. Bat went to a deep square leg, and in front of square because the batter just wanted to wide swing of that particular delivery, but he missed it completely from his hand, and they got a single for that. And with that single, Skobana moves on to 12 on the board. Rajesh. Oh, this time he lofted, lovely shot, magnificently struck, effortless, isn't it? Rupesh is on fire. A little bit marginally that ball outside the line of leg stump, and he just got that one right from the middle of the bat towards a deep square leg for a 6 again. He wanted to repeat the stroke, and this time deflected from his leg. Anil trying for the run out, but not good enough. Both the batters completed single in the form of from the bat. It's one more single. With that single, Skobana moves on to 19 on the board for the loss of 1 wicket. The runs are coming very freely so far for the team KFC Kurnadu against Bubbly Warriors. Again, this time ball is going to be a punishable from the umpire, who bid and called it white. With that white, Skobana moves on to 20. Again, played it down to deep long on. One more single. With that single, Skobana moves on to 21. 21 for the loss of 1 wicket. Rupesh back on strike. This time, chance here for the fielder to dismiss Rupesh, and that's it. The very good innings of Rupesh, which is comes to an end. Just he wanted to play across the line. Got a top edge. The fielder from mid-on complete the catch. Wicket number 2 is back in the pavilion. It's 21 for loss of 2 wicket in the over number second. Second in progress. After this match, match number 7 will be played between Amma Cricketers versus Namo Friends. I request all the players of both the teams please complete the signatures as soon as possible. Fifth time in this over. Ashish, the captain of the side, and he played it straight to the hands of deep square leg. Behind the square. And captain departs for Golden Duck. Lucky escape here for a bowler because the ball which pitched outside the line of leg stump. And Ashish played at right stroke, but he played that into the fielder. The placement is not good enough to face the penalty for that. Wicket number 3 is back in the pavilion. Back-to-back 2 wickets for Rajesh. That means he's on hat-trick. Last delivery remaining in this over. So he is on hat-trick. Ranjit, the new batter in. Good comeback here by the bowler in this over after he conceded 6. Then bowled some wides, but again the hat-trick delivery. But this time the batter has got an inside edge of the bat. One more single. They wanted to come back for the second for the direct hit. Unnecessarily is a lucky run for the team. And after completion of over number 2, the team are looking good. KFC Kurnadu are 23 on the board, going exactly 11.5 runs per over. 23 for the loss of 3 wickets. 2 overs completed. Another 2 overs remaining in their innings. Very hot condition here in Mudipu. Hot and humidity. It's going to be very high.
It was a hide and seek, which is from sun. Sometime it was a cloudy, sometime it was a bright sunny afternoon. So battle is on here for the victory. The team KFC Kurnadu, they're playing their first match in the Bubbly Warriors. They're playing their second match. They lost their first match against SMC Pajir. That was the match number second of the day, number 1. This is the match number 6, which is in progress. Wanted to go for the reverse sweep, missed it, chance of run out. Appeal for run out. Umpire says here, I will go for the third umpire. So umpire goes upstairs. The third umpire will going to decide whether the batter is safe or not. Always going to be a very, very tough call. Touch and go. The third umpire is going to decide whether the batter is safe or not. Always Anil is a very good handwork. He always does that regularly. Whenever he gets the balls, he make that quick work of uprooting the bales from the stumps. But wait and see whether the batter is safe or not while trying for that run out. So batter is short of his crease, is gone. Is out with a call from the third umpire. That's why we are saying that Anil is very confident, because as far as the present rules and regulation is concerned, on the line is also not good enough for the batter to save his wicket from the run out. You need to have some part of your bat inside the line. That what we're talking about, that popping crease. So Abhi is a new batter in. Wicket number 4 back in the pavilion at the score of 23. Ulas balls. Again wanted to go for a square cut. Didn't got that much of timing enough, but enough for him to get the single. Abhi off the mark at 24 on the board for the loss of 4 wicket in the over number 3 is in progress. Ulas. Balls faster and quicker one. Anil fumbles, but no chance of any run. Quickly is capturing the ball after that fumble, so that batter has no chance of getting any run there. 4th time in this over. Again, lovely delivery. This time ball is hitting his leg, so that it's going to be one more leg by. No signal coming from umpire. Again, played it down to deep extra cover region. They wanted to come back for the second, but they're going against that one. White throw coming from the fielder. With the addition of that single score, Namuzan to 26 on the board. In the over number 3 is in progress. Very tidy over is in progress from Ullas. One who taken a fantastic attempt for the catch in that extra cover. Again, just over the head of Anil, and that missed. It missed that short term fielder as well, and they're going for the second run. 2 valuable runs. With the 2 valuable runs, Koban moves on to 28 on the board. The over number 3 completed. The great over, tidy over, the very economical, as well as the wicket taking over from Ullas. 3 completed. After completion of over number 3 is 28 on the board. They're going exactly 9 runs per over. 9.33 runs per over. Our last over remaining. So last over will going to start here. The first ball, the batter just wanted to get that one in the third man region. White signal by umpire, and white signal umpire.
So dot delivery again. The lovely delivery there from Chitranjan. This is the last over. Chetu, correction. Slower one, change of pace. Lovely delivery, fantastically bowled. And this is turning out going to be a great last over. The previous over also very nicely bowled. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೂಲೂರ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂಥ ಅಬುಬಕರ್ ಹಾಗೂ ಬಾವು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. This time high up in the air, who will going to take the catch, and mid-wicket fielder, some kind of confusion, isn't it? The fielder from mid-wicket thought it might be the short mid-wicket fielder will go in to take the catch. Short mid-wicket fielder thought it might be a deep mid-wicket that will go and take the catch. But at last the confusion which is concluded by taking that catch by the deep mid-wicket fielder, saying that yes, it is going to be my catch, so he is just running towards the catch and complete the catch as well. So wicket number 5, which is back in the pavilion again. The wickets are tumbling. Wicket number 6, in fact, back in the pavilion. 5, in fact, and Vignesh is a new batter in. So one more great over is in progress from the point of view of Bubbly Warriors. They needed some restriction in the flow of the runs. After that, very expensive first over. Even second over also some expensive runs coming from the second over. Now there exceeds the time limits. The fielding team have to bring one fielder inside the ring. As far as the penalty is concerned, they're crossing their time limits to complete the 4 overs quota. So one fielder has been brought into that circle. Only 4 fielders outside the circle now. Oh, again, lovely delivery. Last moment he got a bat onto that, defeating the wicket keeper's hand as well. Leg by call by umpire. Deflected from the leg. With the addition of that leg by Skoban Namuzan to 31 on the board. 5th time in this. Oh, this time he lofted it, but I think the fielder will going to get that one. This is afternoon, exactly 1 past 30. So against the wind, that stroke has been played by the batter. And the long on fielder making no mistake at all. Pays the penalty. 1 more wicket back in the pavilion of team KFC Kurunadu. The last delivery left in their innings. Vignesh, the batter, walks towards the pavilion with that attempt for the big stroke towards a deep long on. The last delivery of the innings is coming up, and Samit, the batter, will go into face Chetan. Oh, what a shot! That will go into a great finishing touch. That will go into a great finishing touch from a young man, Samit. In the last delivery of their innings, he dispatched that one into the deep mid-wicket for a maximum. And because of that 6, they are absolutely thinking that it might be a comfortable score. 37. They will going to depend. The 38, the target set by the team KFC Kurunadu to Bubbly Warriors. And wait and see how Bubbly Warriors will going to get that 38 runs in 24 deliveries. And it's going to be very interesting. And run rate required is almost 9.25 runs per over to win this match. And it's going to be very interesting in the second session. And before the innings will go into start of Bubbly Warriors, the time for change in commentary box as well. It's a time for Gopi to take over the microphone in Hindi language. Thank you. Next match, Amma Cricketers and Namo friends. Captain, I request please report here immediately for the tossing ceremony. Amma Cricketers ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ
हेलो ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಊಟ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಊಟ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಆತಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲೆ. धन्यवाद सतीश. So 37 in fact 38 the target for Bubbly Warriors set by KFC Kurnaut, and their innings now going to start exactly 9.5 runs per over, the required run rate for them, and openers Anil and Sudham is now comes out to the middle, and Sudham the striker, meantime Anil the non-striker. The bowler starts the fresh proceedings is Ashish Sudhir in fact the batsman is now going to face. So first ball, it's a bye, and the runs record begin for them. One without loss, एक रन बिना किसी नुकसान के इस वक्त स्कोरबोर्ड शुरू हो चुका है बबली वॉरियर्स के लिए, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त आशीष, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और सामना करते हुए इस वक्त अनिल दास, और फील्डिंग पे जब आउट इस वक्त चलती हुई पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर राउंड की पारी का इस वक्त प्रगति पर, और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज आशीष, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अनिल के लिए इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र काफी खाली, कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं, एक फील्डर डीप मिड विकेट पर तैनात जबकि एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर मौजूद, और गेंदबाज आशीष दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा अनिल ने, इस बार मिसफील्ड होती हुई गेंद निकल चुकी है डी थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन बैकअप वहां पर होता हुआ और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर, 2 ऑन द बोर्ड येट टू लूज एनी विकेट। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आशीष और सुधीर सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, इस बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर ऊंची की ओर आती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज किया, गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद को उछालना चाहा था, चूंकि अंतिम गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯಚಿಮುಖವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. फ्रॉम द नेक्स्ट डिलीवरी फ्रॉम आशीष, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहा, गेंद पर स्क्वायर लेग पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। हालांकि शॉर्ट स्क्वायर लेग पर सीधे गेंद उनके हाथ में पहुंची थी काफी धीमी गति से, लेकिन जहां तक का सवाल है स्ट्रोक्स के साथ ही बल्लेबाज दौड़ पड़े थे और एक रन यशस्वी तम्मा यहां पर पूर्ण करने में सफल। 4 रन बिना किसी नुकसान के। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव कवरेज किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। यहाँ पर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का मुआयना करते हुए यूट्यूब पर MPL मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 के अंतर्गत। और ये गेंद इस बार अनिल के लिए, गेंद को उछाला, जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड, ही फाइंड्स द गैप एज वेल एंड इट्स क्रॉस्ड, नो, ब्रिलियंटली स्टॉप्ड just inside the fence by the fielder at long off.
हालांकि खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को सीमा रेखा के अंदर की ओर ढकेलने में सफल, लगभग अब 10 से 12 कदम अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए, और इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत 2 रन सिर्फ बल्लेबाज प्राप्त करते हुए अनिल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन दिस ओवर। अम्मा क्रिकेटर्स आर वॉन्ट द टॉस इन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट नमो फ्रेंड्स, एंड व्हाट डिसीजन दे विल टेक जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी। और जहां तक सवाल है इस ओवर का, तो आशीष इस वक्त इस ओवर में अंतिम बार, हालांकि बल्लेबाज अनिल को कुछ दुविधा है इस वक्त की गेंद को पीछे ढकेलते समय, क्या फील्डर सीमा रेखा को उनका पैर छू चुका था या नहीं। तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है, और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। तो बेहतरीन फील्डिंग, परफेक्टली सेव्ड जस्ट इनसाइड द फेंस, गेंद को रोका गया था यशस्वितम सीमा रेखा के अंदर, सिर्फ 2 मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, ओनली कपल ऑफ रन एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर। बेहतरीन फील्डिंग इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने की थी, सीमा रेखा के अंदर गेंद को ढकेलने के बाद सीमा रेखा से खुद बाहर की ओर चले गए, लेकिन 2 रन अपने टीम को बचाने में सफल उस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत। और अनिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाज आशीष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट, यह गेंद टॉप एज, लेकिन फील्डर पॉइंट पर मौजूद, थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो उतना कुछ खास सही नहीं है, और बल्लेबाज इससे पहले 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर द स्कोर इज 7 ऑन द बोर्ड। तो बूस्टर पॉइंट जो है केएफसी कुरनाड को दिया जाएगा। पहले ओवर में केएफसी कुरनाड ने 11 रन बनाए थे, जबकि बबली वॉरियर्स ने बनाए सिर्फ 7 रन, और बूस्टर पॉइंट्स विल गिवन टू केएफसी कुरनाड। दे स्कोर्ड 11 रन्स आफ्टर फर्स्ट ओवर, इन फैक्ट मीन टाइम बबली वॉरियर्स स्कोर्ड जस्ट 7 रन्स इन देयर पावर प्ले फर्स्ट ओवर। और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए इस छोर से गेंदबाज, और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ बबली वॉरियर्स की पारी में। फील्डिंग में जमावट चलती हुई पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और जहां तक का सवाल है इस वक्त सामना करने का, तो अनिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और फील्डर जो कि इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳಪದವು ಸರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. तो बेहतर 2 गेंदें इस वक्त भेज चुके हैं। हालांकि पिछले गेंद फ्री हिट गेंद जरूर थी, लेकिन इस फ्री हिट गेंद का फायदा उठाने में असफल बल्लेबाज अनिल, और इस बीच गेंदबाज समित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द राउंड द विकेट तैयार। यह गेंद अनिल के लिए, गेंद को इस वक्त स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहा था, चूंकि लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए बल्लेबाज के पहुंच से बाहर, और इस बीच 1 रन का इजाफा वाइड के रूप में उनके खाते में रन जुड़ चुका है। और समित एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तो इस वक्त वाइड लाइन पर काफ़ी मिट्टी गिरने की वजह से कुछ हद तक वहाँ पर समस्या बन चुकी थी। इस वक्त उस मिट्टी को हटाते हुए विकेट कीपर और बिल्कुल सही सलामत इस वक्त गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद अनिल के लिए, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, और सफलता 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 10 रनों पर। 10 ऑन द बोर्ड, टू लूज विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस।
Still have a long way to go. In fact, 28 more runs now they have to score for victory in remaining 2+ overs. और समित एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त सुधीर सामना करने के लिए तैयार। समित की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। गेंदबाज समित तैयार सुधीर के लिए। यह गेंद उछाला इस वक्त सुधीर ने, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद जी नहीं। सीमा रेखा को गेंद पार कर चुकी है इस वक्त 6 रनों के लिए। He's got a hand on to that at the last moment, but the ball was flicked out of his hands and it's crossed over the fence for a maximum. This is an outstanding struck and a much needed sixer. Came from the bat of Sudhir और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जी तोड़ कोशिश जरूर की थी अपने ऊपर की छलांग लगाकर गेंद को रोकने की, लेकिन नाकामयाब और गेंद उनके हाथों को टकराकर सीमा रेखा से पार हो चुकी है छक्के के लिए। यह गेंद एक बार फिर से गेंद को उछाला, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैरना डीप एक्स्ट्रा कवर पर। सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर। 17 without loss in the over number second in progress in fact. 2 balls left in this over और समित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अनिल के लिए। यह गेंद अनिल ने गेंद को उछाला है मिड विकेट पर 6 रनों के लिए। What a fantastic struck came from the bat of left-handed batsman Anil. ऐसा कहना पड़ेगा, just picked that one right from the spot and just lofted it in a style after getting right from the middle of the bat. और इस छक्के के साथ समीकरण बिल्कुल आसान हो चुका है इस वक्त बबली वॉरियर्स के लिए। It's on 23 on the board and now just 15 more to get in remaining 13 deliveries. और समित इस ओवर में अंतिम बार ये गेंद इस बार अनिल के लिए, लेकिन इस बार अंपायर से अपील करते हुए विकेट कीपर की गेंद स्टंप्सों को छूकर निकल चुकी है और आखिरकार ऐसा कहना पड़ेगा ये अनिल का विकेट गिर चुका है। द बॉल just sticking to the off stump at the last moment. Bills are disturbed and a good innings came to an end from Anil. He departs and now 2 overs completed, 23 on the board. Still the equal battle is now continuing here. And 15 to get from remaining 2 overs. That means in remaining 2 overs, that means in remaining 12 deliveries for Bubbly Warriors. Match number 6 of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now progressing here between KFC Coronado versus Bubbly Warriors. और बराबर का मुकाबला इस वक्त जारी है। New batsman is now comes out to the middle as a number 3 batsman. तो सामना करते हुए इस वक्त सुधीर और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए। तो पहले गेंद ड्राइव किया इस वक्त, गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के लिए। जस्ट अ सिंगल ही गॉट विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 24 on the board for losing 1 wicket. 11 balls left, 14 runs required. और गेंदबाज राकेश इस वक्त निखिल के लिए गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद फुल टॉस गेंद, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल। जब तक गेंद को विकेट कीपर आगे की ओर आकर फील्ड कर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 25 for the loss of 1 wicket. 10 balls left, 13 runs required. The equal battle is now still continuing here. सुधीर स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। राकेश की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद फुल टॉस, गेंद को उछाला है काफी ऊंचा और फील्डर गेंद को लपकते हुए इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर। In fact, it's a bowler himself collected the ball on his follow through, just going towards to his right side at the last moment with a perfect judgment. And because of that, Sudhir departs and now it's 25 for the loss of 2 wickets. 13 to get now from 9 balls now. So new batsman is now comes out to the middle. उल्लास जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। राकेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। 8 गेंदें बाकी और 13 रन चाहिए। 9 गेंदें बाकी, 13 रन चाहिए।
ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा था, गेंद लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। चंद टिप्पों बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसेस रन्स नहीं मिलेगा। डॉट गेंद और राकेश बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर into the gap as well. He's got that one for a maximum. Important 6 came from the bat of Ullas in the important stage of the match. और इस छक्के के साथ समीकरण काफी हद तक आसान बन चुका है। अब गेंदे बाकी हैं 8, 7 गेंदे बाकी है, माफ कीजिए, और रन्स चाहिए 7। 7 to get from 7 deliveries. Fantastic struck in from the bat of Ullas और इस ओवर में अंतिम बार राकेश बीमर के तौर पर गेंद थी इस वक्त और वाइड का इशारा अंपायर का, और इस वाइड के रन के साथ समीकरण और भी आसान यहाँ पर होता हुआ। 32 for the loss of 2 wickets. 6 to get now from remaining 7 balls. राकेश बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी। विकेट कीपर ने विकेट जरूर उखाड़े लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। लास्ट ओवर रिमेनिंग, 6 balls left, 6 runs required for Bubbly Warriors for victory. ಇದು ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಆವೃತ್ತಿ 7ರ 10 ಜನರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಆಟಗಾರರು ವೀಕ್ಷಕನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರಣೀಯ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So thank you and back to the game. Interesting stage of the match is now going on. 6 of 6. Bubbly Warriors have to score for victory और पहली गेंद लेकर मैच निर्धारित ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओप द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद चूके इस वक्त विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े। फॉलो थ्रू में गेंदबाज का थ्रो, लेकिन थ्रो इस वक्त चूकता हुआ और बल्लेबाज 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए। एंड नाउ 5 of 5, 5 गेंदे बाकी, 5 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला, lofted and this time is taken inside the fence. He just played that one against the wind and the ball lost its speed and taken comfortably inside the fence at long off by the fielder. So the man who lost is missed and now 6 to, in fact it's a 5 to get from 4 deliveries. मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। 5 रन चाहिए, 4 गेंदे बाकी और इंतजार है इस वक्त नंबर 5 बल्लेबाज का पुष्पदीप नए बल्लेबाज पुष्पराज माफ कीजिए इस वक्त बल्लेबाजी के लिए तैयार और 4 गेंदे 5 रन चाहिए। गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड एंड कम बैक फॉर द सेकंड। Oh, he misses chance of a run out, he misses and the batsman come back for the second run very safely in the end. And now 3 to get from 3 deliveries. What a match is now progressing here. मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और इस बीच गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार और दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल। साइड पे फंबल देयर, इन फैक्ट द बैट्समैन लुकिंग फॉर दिस सेकंड but won't get it. So just a single he got, 36 on the board and now 2 to get from last 2 deliveries. रनों की सख्त जरूरत है इस वक्त बबली वॉरियर्स को, जबकि डॉट गेंदों की सख्त दरकार KFC कुरनाड के गेंदबाज को और 2 गेंदे बाकी है, 2 रन चाहिए। द सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप और गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। नाउ जस्ट 1 नीडेड फ्रॉम द लास्ट डिलीवरी। अंतिम गेंद बाकी और अंतिम रन चाहिए। अगर मैच को टाई में समाप्त करना तो इस गेंद को डॉट करना होगा इस वक्त गेंदबाज को। फिलहाल बल्लेबाज इस वक्त तैयार और मैच निर्धारित गेंद लेकर तैयार। 1 of 1
Here we go. Dainath over the wicket. Reverse shot. Delicate. And he finds the gap as well. Last ball thrilling victory for Bubbly Warriors against KFC Kurnad. And with that last ball thrilling victory, they back the complete point. Fantastic match. Match number 6 of this prestigious cricket tournament MPL. Season 7 2025 is now came to an end between KFC Kurnad versus Bubbly Warriors, which won by Bubbly Warriors in the last ball of the match. And they back the complete points with this last ball thrilling victory. Next match, match number 7 is now going to start between Amma Cricketers versus Namo Friends, and that match starts within just a short while. ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಓನರ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ 10 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Man of the match goes to Ullas of Bubbly Warriors. And I request Mr. Ullas to please come out to the stage and receive the Man of the Match award from from one of our chief guests. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸಂದೇಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I request Mr. Sujit Shetty Kamlapada to please distribute the Man of the Match for Ullas for his fantastic performance in this match. So best of luck for Ullas, and congratulations for Ullas, and best of luck for the rest of the matches of the tournament. So the next match starts within just short while. Raja Taka. तो इस वक्त अगला मैच शुरू होगा. तो यहाँ पर जहाँ तक सवाल है, मेरे एक और काबिल दोस्त श्रीमान संदेश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ पर आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए राज्य भाषा कन्नड़ में. आइए संदेश. धन्यवाद. थैंक यू. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ MPL ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಿಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆರಂಭಿಕ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ನವದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಖಾತೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮೋ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳಂತೂ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 2 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇತು ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರರು ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನತ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನವದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೇತನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ 4 ಓಟಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಠಡಿಯ ರೇಖೆಯ ಆ ಒಂದು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾಳಿಗಾರ ಸನತ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ನಿಂತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನವದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸನತ್. ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೇತನ್. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಸೀದಾ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹತ್ರ ಬಳಸಿದಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇತನ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಣುವಾಗಲೇ ಆಸುಪಾಸಿನ ಅದೆಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು. ಆರ್ಭಟದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಚೇತನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಅಮೋಘವಾದ ಭರ್ಜರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸನತ್ನ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬರುವಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡನೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡದೆ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೆಲದಲ್ಲೇ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚೇತನ್. ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿದಂತ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆ ಒಂದು 40 ಗಜಗಳ ಅಂತರದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ ಚೇತನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸನತ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ದೊಡ್ಡನೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಚೆಂಡಂತೂ 40 ಗಜಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ. ಚೇತನ್ ಇರುವ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್. ಎಲ್ಲ ಶೈಲಿ ಆಟವನ್ನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್ ಈಗಲೇ ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತಗಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹತ್ರ ಚೆಂಡು 4 ಓಟದ ಕೈ ಸನ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಕೊಡುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಳು. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 15 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಮೋಘದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅದು ಕೂಡ 13 ಓಟಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಅಂತೂ ತಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 18 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನವದಿಕ್ಕುಗಳ ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತಲೆಯಾಕ ವೃಂದನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸನತಂತು ದುಬಾರಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಭರವಸೆಯ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ. 3 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ನವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಗಾಲಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರನು ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸೇಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. MPL ಸೀಸನ್ 7ರ ಆವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಿಂಬದಿಯ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಸನ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ MPL ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಸುಪಾಸಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಶಿಸ್ತಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತಾದ್ರೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗೊಂದು ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ದಂಡುಗಾರ ಜೋಪಾನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. 17 ಓಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸಿದಂತೆ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚೇತನ್ ಈ ಬಾರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಕಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್. ಖಂಡಿತ ಚೇತನ್ ಇರುವ ತನಕ ಅಪಾಯ ಆರಂಭಿಕದ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಣುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡರಂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಡುಗರ ನೋಡುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಚೇತು ಎಂಬ ನಾಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು MPL ಸೀಸನ್ 7 ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟವನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆಸೆದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಒಂದು ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಬಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಲೀಕ ರೋಹಿತ್ ಈ ಒಂದು MPL ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ 30 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿಯ ತೂಗು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತೂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳಂತೂ ಶಿಖರವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲವೂರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಕೀಳಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತು 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 ಬಿತ್ತು, ಆಹಾ ಬಾಸುಂಡೆ ನಡುನೆಚ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡುಕಚ್ಚಿಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಶರೀರ ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತಲೆ ಆಕಾರದ ವೃಂದನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲವೂರಿತ್ತೋ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಪಾಯ. ನವದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ 36 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸಿದ 11 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಂತೂ ಸನತ್ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಅಂತೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡುಗಳು ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 37 ಓಟಗಳಾದರೆ ಚೇತನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 31 ಓಟಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಚೇತನ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅನುಭವದ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ತಿಂದಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತೂ ದುಬಾರಿ ಆದ್ರು, ಸನತ್ ಅಂತೂ ದುಬಾರಿ ಆದ್ರು. 22 ಓಟಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ 6 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ 15 ಓಟಗಳು ಸನತ್ 6 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್. ಓಹೋ, ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ
ದಾಳಿಗಾರ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಎಂಗಳ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿದಿದೆ, ಎಂಗಳ ಮಿತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನದಿದೆ, ಎಂಗಳ ಅನ್ಯಂದ ಪನಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಡಿಪು ಎಂಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಮೇರೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಧನುಷ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪುಡ್ ಪನ್ನದೆ ಭಿನ್ನೈತಮಂತ ಒಂದಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಜರುಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಿತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು MPL ಟೂರ್ನಿ. ಖಂಡಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು ರಂಜಿತ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡಂತೂ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚೆಂಡುಗಳೇ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದಂತ ಒಂದೊಂದು ಶೈಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಲಂಚೋ ಚೇತು ಜೊತೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಎಂಬ ನಾಮ, ಆಹಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಂಸದ ಬಾಡೂಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಸದೌತಣದ ತಂಪಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ MPL ಸೀಸನ್ 7 ಅಲ್ಲೇ. ಈ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೋಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ 46 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ. ರಂಜಿತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು, ಆದರೆ 1 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ 2 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 47 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಗಡಿ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೈಗುಲ. ಓಹ್ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲಂತೂ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಭಟದ ಆಟಗಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಡರಮ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಜೀವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಗಳಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಚೇತು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ನಡುಗುಂಟಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ 3 ಬೌಂಡ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು 47 ಓಟದ ತನಕ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿದಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ತಾನು ಫ್ಯೂವಿಲನ್ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ. ಅಂಥದೇ ಅಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿದದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಾಂಕಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಓಹ್ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಜೂಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಿತ್ತು ಸೀದಾ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ. ಆಹಾ, ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. 53 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ MPL ನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಆರ್ಭಟದ ಆಟವನ್ನು ಕಂಡದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತದೆ. 1 ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯಸ್ಸನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿದದ್ದು 47 ಓಟಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದಂತ ಖಾತೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಗಡಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ 55 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೇಗ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಡು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿದ್ದು ಆಯಸ್ಸಿಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ. 55 ಓಟದ ತನಕ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಂಥ ಜೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 55ರಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22 ಓಟಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ರಂಜಿತ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ 10 ಓಟದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ 2 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಒಂದು 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಓವರ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. 6 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ 10 ಓಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 8 ಓಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣೆ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು 14 ಓಟಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 61 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿರಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತಲೆ ಆಕರದಿಂದನೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಇರುವ ತನಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮಿಲ್ಗಯ ಡೈಮಂಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮೋ ತಂಡದಲ್ಲಿ 2 ಅಸ್ತ್ರಗಳು ನೋಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬ ಶಿಖರವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 67 ಓಟ 68 ಓಟದ ಸವಾಲುಗಳು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡನೆಯಾದ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ತನ್ನ ವಿಜಯದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ 68 ಓಟಗಳ ಸವಾಲಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ದಂಡಿನಲ್ಲೇ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ನವದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಖರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಹ ಆ ಒಂದು 68 ಓಟಗಳ ಸವಾಲನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳಂತೂ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡದ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿ ಎಂಬ ನಾಮ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಆದರ್ಶ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ 68 ಓಟದ ಸವಾಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿ ದಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು. ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲೇ ಎಡವಟ್ಟಿನ ಚೆಂಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಓಟಗಳು ಶುಭ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 68 ಓಟಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು 22 ಓಟಗಳು 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳು, ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೀದಾ ಆಟಗಾರನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅರಿದುಕೊಂಡು ಅಭಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯ 68 ಓಟಗಳ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಬೀಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 68 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ದಂಡಿಸಿದಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೊಡೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗಾಲಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಭಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕಿ 07 ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆದರ್ಶ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೇತನ್. ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಓಟ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಬಲ್ಯ ಓಟಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ 68 ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆ ದಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ದಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 68 ಓಟಗಳ ಸವಾಲಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಭಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದರ್ಶ್ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಳಿಗಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದು ಕೂಡ ಸನಾತ್. ಈ ಬಾರಿ ಸನತ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡುಗಳು, ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 2 ಮಾಲಕರೇ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 7 ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. SDC ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ SMC ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತ ವೀರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒತ್ತಡಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಡಬೇಕಾದಂತ 2 ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಮನು ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಆದರ್ಶ್ ಸೊಗಸಾದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಕ್ಷಮಿಸಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು, ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶರೀರದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನಿಡದೆ ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ನೀಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೂಚನೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಆದರ್ಶ್ ತನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ 8 ಓಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 60 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುದ್ದೆ. ಆ 18 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. 18 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂಬುದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಂಚೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬಂದಂತ ಶರೀರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಗುಮುಖದಲ್ಲೇ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬೈಗುಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಭಾನುವಾರದ ಒಂದು ರಜೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಳಿನ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು 6 ದಿನಗಳ ಮನೆಯ ತುತ್ತನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಾಗಿರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗದ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆನ್ನುತ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರದೇಶ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನು ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡನೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡಂತೂ 1 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡನೆ ಹೊಡೆತ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಮನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ದಂಡುಗಳನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಓಹೋ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ MPL ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾನುವಾರದ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಂತಸ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಳು ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದ ದಿವಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನು ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮನೋರಂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 68 ಓಟಗಳ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಳಸಿದಂತಹ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮನು ಲಯದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದಾಳಿಗಾರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡುಗಳು ಈಗ ಬಾರಿ ಲಯದ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ
ಲಯದ ರೇಖೆಗಳು ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆಸೆದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಟ್ರು. 8 ಓಟಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ನಿಖಿಲ್ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸತಿಗೆ ಸಬ್ಬಾಯಿ. ಮನು ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್, ಖಂಡಿತ ಮನು ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಖಾತೆಯ ಗಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಬಾತ್ ಕೋಲಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಂಡ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 11ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಿತ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಚೆಂಡನ್ನು ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಚೆಂಡಂತೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಜಿತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ 25 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಡರಂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದ ತನಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಶಿಖರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಂಗೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರಂ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರದ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ MPL ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆರಗನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಾಂಸದ ಬಾಡೂಟವಂತೂ ಬಂದವರಿಗೆ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಚಿರುಚಿಯಾದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು MPL ಮಾಡಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಧನಂಜಯ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧನು ಫೆಟ್ನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಧನು ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ತನ್ನ ಹಂಗೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲನೆತ್ತಿ ದಿತ್ತಾಯಿ ಎಂತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಿತ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಠಡಿಯ ರೇಖೆಯಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಂಚವೂ ಕೂಡ ಅಲಕದೆ ರಂಜಿತ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಕ್ಷಮಿಸಿ 31 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಾಂಸದ ಬಾಡೂಟದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಡೆತದಲ್ಲೇ. 37 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಕೂಡ 10 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. 31 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡುಮನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡಂತೂ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುವಂತೂ ದುಬಾರಿಯ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಂತೂ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತ ಸಮಯ. ಆದರ್ಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಿಹಿದ ಆರ್ಭಟದ ಆಟಗಾರನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ನಡುಗುಂಡಿಸುವಂತ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಡೆಗೌಟ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ ತುರ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ
ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಡಕೌಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರರು ಮನು, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಜಿತ್ ಎಂಬ ನಾಮ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಶೂನ್ಯ ಏಳರ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಧನು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ 32ರ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ MPL ಸೀಸನ್ 7 ನಲ್ಲಿ. ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನ ಒತ್ತಡದ ಈ ಒಂದು ತೂಗು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ. 38 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 30 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತೆ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದೊಡ್ಡನೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಲ್ಲ. 40 ಗಜಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲೇ. 6 ಚೆಂಡು 29 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೇತನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗರ್ಜಿಸಿಲ್ಲದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಿಜಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಲು ಬಿಟ್ಟಂತ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದಿದೆ. 68 ಓಟಗಳ ಸವಾಲು. ಯುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಚಿಗುರಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಸೀಸನ್ 25ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶರೀರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಲಿಖಿತ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸದಾದ ಚಿಗುರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಚೇತನ್ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಂತೂ ಡವಡವಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯುವ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್. ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೊರಾಂಗಣದ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡನೆಯ ಖಾತೆ ಗಳಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಡ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಮನು ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಜಿತ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ನಾಮ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಆಹಾ ಚಿರುಕಿನ ದಾಳಿ, ಖಂಡಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚೆಂಡು. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನು 4 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಚಮತ್ಕಾರಗೊಳಿಸುವಂತ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಆಹಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಿಖಿತ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಡೆತ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾದ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ
ಲಯದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಾಟ್ 6 ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡನೇ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್, ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಈ ಬಾರಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಯುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 8, 9, 10ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣುವಂತ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಲಯದ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ತಂಡವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರ 17 ಓಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ 2 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಎಸೆದು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದರೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಧನಂಜಯ 14 ಓಟಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ 13 ಓಟ ಲಿಖಿತ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 8 ಓಟದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಾಜಿನರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಚೇತನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಾಜಿನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟುಗಳಿಸಿ ಆರ್ಭಟದ ಆಟಗಾರ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚೇತನ್ ಸಜೀಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವರೇ ಆರ್ಭಟದ ಆಟಗಾರನ ಒಂದು ನೋಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೇತನ್ ಮನೆಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇತನ್ ಅಭಿಮಾನಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಇರುವಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಚೇತನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಭೋಜನದ ಯಾರಾದರೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಸವನ್ನ ಮೈದಾನದ ಹೊರಭಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಮೈದಾನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಮೈದಾನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸೆಯಬಾರದಿಂದ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಂಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 7ರ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರಂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಕುರ್ನಾಡಿನ ಪರಿಸರದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪುಗ ಎಂಬ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಇನ್ನೊಂದು ತುಳು ಧ್ವನಿಯ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಂಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಎಂಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಹಾಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕರೆನ ಆಜು ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ತದೆ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತೆ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಊರುಡು ಅವೇತೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಿದೇವುಡು ಪೋದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ನಡಪಾದೆ 7ನೇ ವರ್ಷಡೆ ನಡಪಾದೆ 7ನೇ ವರ್ಷಡೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಾಖಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕರಿನ ಆಜು ವರ್ಷ ಕುರ್ನಾರ್ ಪರಿಸರಡೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಗದ ಒಂಚೂರು ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಧವರ ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನೇ ಕನತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ವಂಚಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನ ಕುಡೋರ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಟು ತಾನು ಎದುರಿಸೇನ ಸುರೂತ ಬಾಲ್ ಆಜರನ್ನಿಗೆ ಪಾಡಿದೆ ತನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆನ ಜಮಾ ಒಂದುಂಟು ಎಡಮ ರಡ್ ಬಾಲ್ಡೆ ಎಡಮ ರನ್ ಮಲ್ತಗೊಬ್ಬಂದುಂಟು ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ತಂಡ SMC ವಿರುದ್ಧ ಸುರುತೋರ್ದ ಮೂಜಿನೇ ಬಾ ಕುಡೋರ ಬಿಜಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಂಜಿರನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಈ ಓಂಜಿರನ್ನ ಮುಖ್ಯನ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಟು ಓರ್ಮ 4ನೇ ಬಾ ಸುರುತೋರ್ದ 4ನೇ ಬಾ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರೆ ಉರ್ವ ರಮೇಶ್ ಹಿಂದೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಕಡೆ ಇರ್ತ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಔಟ್ ಆದ ಫೇಲನಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಕೆ SMC ಕಡೆ ಇರ್ದೆ 4 ಬಾಲ್ಗೆ 9 ರನ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಲೆ ಒಂದನು ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ತಾಂಡ ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ತಂಡದ ಒಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರಂದೆ ಪನೋಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೇರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಡೆ ಈ ಮುಡಿಪಿನಾರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಡೆ ಇನಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲೇರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಟೀಮಡು ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಸುರುತೋರ್ದ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೇರಿದ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೇರೆದೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದುಂಟು ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಸುರುತೋರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಫಲ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಓವರ್ ಮುಗಿಪನ ಸುರುತ ಓವರ್ ಮುಗಿಪನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಕಲೆ ಒಂದು 9 ರನ್ ಮಲ್ತುಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಈ ಒಂಜಿ ಉರಿದೊಂಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಡಿಪಿನಾರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವಡೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವಡೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ದಕ್ಲೇನೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕಲೇನೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದಲ್ಲ
ಭರತ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್ದ ಸುರೂತ್ತ ಬಾಲ್ ಪಡ್ರೆ SMC ತಂಡದ ಕಡೆ ಇರ್ದೆ ಭರತ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಅವನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಾನ ಪಾಟ್ನ ಸುರೂತ ಬಾಲ್ಗೆ ಸುರೂತ ವಿಕೆಟ್ ಬಡೆ ಹೊಂದಿರೆ ಭರತ್ ಮೇರೆ ಸೂರಜ್ ಮೇರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಒಂದುಂಡು ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ವಿಕಾಸ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಸೂರಜ್ ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ವಿಕಾಸ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎನ್ಮನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹುಶಃ ಇನಿ 13 ಪಂದ್ಯಾಟ ಅವಡು ನನ್ನ 5 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪೋಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಾ ಪತ್ರನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊ ಬಂದುಂಡು ಎಡಮ ಬಾಲ್ಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ತಂಡ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡನೇ ಓಡ್ದ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆಗೆ ರಡ್ಡನೇ ಓಡ್ದ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ SMC ಕಡೆ ಇರ್ದೆ ಭರತ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಕೆ SMC ಕಡೆ ಇರ್ದೆ ಗುರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಛೆಂದಿನ ಬಾಲ್ ಭರತ್ ಮೇರೆ ತತ್ತದ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇರ್ದೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಪಂಡದ ಘೋಷಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 11 4ನೇ ಬಾಲ್ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ರನ್ಔಟ್ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ರನ್ಔಟ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ ತವಕ ಮಿಸ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ಕೊಡೊಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದು 13 5ನೇ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡನೇ ಓರ್ದ 5ನೇ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡನೇ ಓರ್ದ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹರ್ಷ ಮೇರ್ ಫಿಲ್ಮನ್ ಪ್ರಮುಖೇನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ SMC ಕಡೆ ಇರ್ದೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 14 ರಡ್ಡನೇ ಓವರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡನೇ ಓವರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಭರತ್
ವಿಕಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಮ ಹಿಜ್ಜಂದಿನ ಬಾಲ್ 1+1 15 ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 11 ಬಾಲ್ಡೆ 14 ರನ್ ಮಲ್ತುಕೊ ಬಂದುಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ತಂಡ SMC ವಿರುದ್ಧ ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಬಿಜಾದು ಗುಬದರೆ ಬೂರ್ನು ಕುಡೋರ ಆಜಿರನ್ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಜಿರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದು ಸೀದಾ ಜಂಪಿಂಗ್ 26 ರನ್ 16 ಬಾಲ್ಡೆ 26 ರನ್ ಮಲ್ತುಕೊ ಬಂದುಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ತಂಡ SMC ವಿರುದ್ಧ ಮುಜಿನವರ್ದ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಪಡ್ರೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ್ನ ಗಮನ ಒಂದುಂಡು ವಿಕಾಸ್ ಮೇರ್ ಮುಜಿನವರ್ದ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಪಡ್ ಕಿಶೋರ್ ವಿಕಾಸ್ ಮೇರೆ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ರನ್ ತೃಪ್ತಿ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಒಂದು 23 13 ಬಾಲ್ಡೆ 23 ರನ್ ಮಲ್ತುಕೊ ಬಂದುಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ತಂಡ SMC ವಿರುದ್ಧ ರಡ್ಡನೆ ಬಾಲ್ ಮುಜಿನವರ್ದ ರಡ್ಡನೆ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾದರೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದು 24 ಮೂಚಿನೆ ಬಾಲ್ ಮುಜಿನವರ್ದ ಮೂಜಿನೆ ಬಾಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಮೇರೆಗ್ ಕುಡೋರ ವಿಜಯ ಬಂದ ರನ್ಔಟ್ ಲಕ್ಷಣ ರನ್ಔಟ್ ಆದ ಪೇವಲನಿಗೆ ಗುರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರಿದೆ ಮೂಜಿನೆ ಓವರ್ದ ಮೂಜಿನೆ ಬಾಲ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿರೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ್ ಗುರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ನ ಜಗ್ ಪಡೆಯರೆ ಯತೀಶ್ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರೆ ಯತೀಶ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ತಂಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ಪನೋಲಿ ಯತೀಶ್ ಮೇರೇನೆ ಮುಚಿನವರ್ದ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಕಿಶೋರ್ ವಿಕಾಸ್ ಮೇರೆ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾದರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ 1 ರನ್ ತೃಪ್ತಿ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದು 25 ಮುಜಿನವರ್ದ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಯತೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಭಾರಿ
ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4ನೇ ಓವರ್ದ ಸುರತ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಭಿಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದೊಂದು 2ನೇ ಬಾಲ್. ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಲೈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ದ ಮೂಚಿನೇ ಬಾಲ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು 4ನೇ ಬಾಲ್. 4ನೇ ಓವರ್ದ 4ನೇ ಬಾಲ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ದ 4ನೇ ಬಾಲ್. ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 4 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 4 ರನ್ ಮೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಟು 33. ಕೇರಿದ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ವರಿದನೆ 20 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಡೇ 33 ರನ್ ಮಲ್ತುಕೊಬ್ಬೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ತಂಡ. ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 2 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಟು 35. ಅಕೇರಿದ ಬಾ 4ನೇ ಓವರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದೆ ಪೇವಲನಿಗೆ 24 ಬಾಲ್ ಡೇ 35 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. SMC ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅವಡೊಂದಂಡ ದುಂಬದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದತ್ತೆ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಪೋದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಂದಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗರೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗರೆ ಸತೀಶ್ ಪಡೀಲು ಮೇರೆನೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದುಲ ದುಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗರೆನೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂಡದೆ ಭಿನ್ನ ಇದ್ದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಮೇರೆನೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
Thank you so much, Vijay sir, for your wonderful commentary in our local language and very sweet language, Tulu. And thanks for the thanks for the compliments. And yes, coming back to this match, after winning the toss, elected to field first, and STC Ayodhya Nagar, the managed to score the 35 runs, and they stipulated 4 overs, and they set a target of 36 to win the match here for SMC Pajir. And we'll see how well these opening batters will go to lay the foundation. And the batters Sachin and Vinith, the opening batters, are in the middle. First ball, you just wanted to get that one into the third man region, just trying for that reverse stroke, and missed it completely from the bat, and no damage done. So bowler brought into attack Vikas from the road end, and they will go into ball right arm over the wicket, left arm round the wicket. Correction, up and over, lovely shot. I think it's no need to run for that. Oh my goodness, yes it is, lovely shot. The good placement again from Sachin. This time you know exactly where the fielder is. The power play is on, and he got the placement right. Of course the fielder is in there deep in the long off, but he's choosing that extra cover. The fielder tried to get that one after one bounce, but the ball which is defeated his trying hands. And a good start from Sachin. In the second ball itself, he got the boundary for his team, much required boundary. 4 without loss of any wicket. This time in the afternoon, the wind which is blowing just in front of the wicket, that means the left of our commentary box. This time he played it nicely towards the long on, but protection is there in the deep long on, so Sachin have to settle for a single. With that single, scoreboard numbers on to 5 on the board without loss of any wicket. You are watching this prestigious Mudipu Premier League 2025, which is proudly presented by Sri Mudipu cricketers. This time, lovely delivery indeed. The wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball, and no signal coming from umpire, means it might be from the bat. One more addition of that single, scoreboard moves on to 6 without loss of any wicket. Vikas, left arm, bowls again, wanted to go for expansive drive, but he only managed to get the single because a good line, good comeback here by the bowler. After that, the boundary in the second ball of the over, because managed to bowl some tidy line and length so far. It's 7 without loss of any wicket. This time again outside the line of leg stump, batsman tried to get that one in the onside region, and so one more by. With that extra, scoreboard now moves on to 8 after completion of over number first. It's going to be a good start without losing any wicket. 8 runs, and target will be 36, and 9 runs per over. They got 8 runs in the first over. The booster, what we are talking about, it is going towards the team STC Ayodhya Nagar, and they got 9 runs in the first over. At the same time, this team has got 7 in the first over, so 8 in the first over, correction, and the 1 run which is higher than the team of SMC Pajir. So STC Ayodhya Nagar, they got a booster point. The bowler will go in to start the second over. Suraj, the icon player for the side, he batted well. He scored 7 runs with the help of 1-6. Now he's just wanted to contribute from ball. Useful all-rounder for the side, and a very good leg spinner. Starts with the delivery which is punishable from the umpire. No, they given a wide outside the line of leg stump. Nine on the board. This time again it's going to be one more wide. This time far outside the line of off stump. Suraj, second time he's missing the line. First time outside the line of leg stump, and the second time far outside the line of off stump. 2 wides, the bonus run. 10 on the board. This time again outside the line of leg stump. The wicket keeper behind the stump missed it completely. Consecutive 3rd wide deliveries. This is not the performance what expected from Suraj, being the icon player of the side.
He's bowled 3 consecutive wide deliveries, and altogether 4 runs conceded. And the scoreboard now moves on to 12 on the board. This time the ball is deflected from the leg, so that leg by call by umpire. With that leg by, scoreboard now moves on to 13 on the board. Just one delivery bowled so far in this over. Suraj balls. This is what the line he needed to bowl, just around the leg stump and a little bit away from the bat of the batter Vinith. Missed it completely, no run scored. This time lofted straight down the ground, one bounce collected by the fielder. Just a single there, and just like I mentioned, it was against the direction of the wind. From morning to afternoon, the wind is blowing in front of the wicket from this side. And after the afternoon, the wind will going to flow against. And this time looks like it's a misjudgment by the batter in the negation, and we are just within the reach of the batter, so that no run scored. Remains on 14 on the board. He again played it nicely down to wideish mid-on. One more single with the addition of that single, scoreboard moves on to 15 on the board. After that wide, Suraj managed to keep that line very well around the midline leg stump. Oh, that might be ball hitting the stump. But bails which is dislodged or not, there is no bails in, I think, in the wicket stump. The ball hits the stumps, and wicket number first is back in the pavilion. So first wicket back in the bell court. Unfortunately, Vinith has got a bat onto that. After ball is deflected from his bat, hit the stumps, and wicket number first pitch back in the pavilion. So over number 2, which is comes to an end. After completion of over number 2, the scoreboard is 15 on the board. 21 runs required. I request for the next match, the captain of SMC, captain of SVC, Hua Kuakalu, and MFC Strikers. Captain, please be reported here immediately for the tossing ceremony. Vijay is doing the tossing ceremony for the next match. Tosses which is won by SVC, Hua Kuakalu. They won the toss. Praveen brought into attack to bowl the second over. 18 ball, 21 more runs required for the victory. Again drives that one down to extra cover for a walkable single. The target seems to be a little bit easier under this condition. Big ground, huge ground, open ground. Lot of opportunity, scoring opportunity for the chasing team or the batters, what we are talking about in this open ground. The wind blowing absolutely will benefits the batter when batting in this side. Arsharaj is a very good striker of the ball. Will go into face the next delivery from the bowler Praveen. 12 ball correction and 11 balls remaining and 20 runs required. 11 balls, 20 runs required for the victory. Oh, lovely delivery indeed. Each and every dot ball will go in to make this difference larger between ball and the run. 10 balls and 20 runs required for the victory. If the wicketkeeper fails to get the ball, one more single. With that single, scoreboard moves on to 17 on the board. 19 required for the victory. Needed some boundary, needed some big shot, but runs are coming in the form of single. The bowler will not going to bother about that single. Praveen knows that have to restrict the boundary. But Harsharaj is a good striker of the ball. Bowled him, cleaned him up. What a delivery that one. Absolutely a peach of the delivery coming from the hands of Praveen.
As Nagraj just wanted to break the shackle. Harsharaj misses the line completely, and you miss high hit. A great one from Praveen to dismiss the danger man. Harsharaj back into pavilion. The new batter in is Karthik. One more good all-rounder for the side. Can be very effective in this position. Wait and see how well Karthik will go into contribute. So far, the team are upper hand. STC, Ayodhya Nagar, tighten up the screws. Praveen, so far it's been a great over from him, and Karthik have to break the shackles here. Oh, it's time. What we are talking about, the need to break the shackles, but here is breaking the stump here by the bowler Praveen. Karthik wanted to go for the unorthodox switch it, and missed the line completely, and furniture which is disturbed by Praveen again. That means he is on hat-trick. No hat-trick chance here, because he picked up 2 wickets in the last two deliveries of that over, so that he missed that hat-trick opportunity. 4 overs game, the only one over for every bowler. So that great over there from Praveen. 1 over, no maiden, conceded 3 runs, and he picked up 2 valuable wickets for his team. Now last over remaining, 18 runs required for the victory. They needed some big shot, and expecting the big shot from this end, it's not so easy. Of course, he can get the runs towards a deep square leg by playing the switch it. Can be possible behind the wicket, but in front of the wicket, getting the distance is not so easy. But it can be happen. You can, if the batter will go into bat sensibly. Deep square leg, deep mid wicket, deep long on. The fielders in the deep in the on. Long off, deep extra cover. The fielders are in the deep in the offside region. There is a mid off. Back at point. The fielder down at short fine leg. The first ball coming down the track. Just like I mentioned, it's not so easy to get the distance against the direction of the wind. Batsman tried to get the distance, but fails to get the distance. He only getting the fielder down at deep long off. The wicket back in the pavilion. The wicket number 4 is back in the pavilion. 5 balls, 18 runs required for the victory. Eighteen required from 5. Abhi, the new batter in, walking towards the middle with the responsibility of 18 to get from 5. The bowler Guru Dikshit. Almost in last 3 deliveries, 3 wicket for the team Ayodhya Nagar STC. Oh, one more dot delivery now. 4 remaining, 18 required. Big ask in front of the batter. This is going to be a very interesting delivery. They have to get one big shot here. This time bowled him, clean him up. The wickets are tumbling like a house of cards. The 3. So it's been a very, very funny dismissal from the batter. Abhi is almost hit the ball and then hit the ball along with the hit the stumps as well. Almost drags the ball into the stumps from his bat, and wicket which is falling. Last opportunity. 3 balls, 18 required. 3 sixes required from 3 balls. Just number 30. Rachan, the last opportunity.
Again, played it back to bowler, not for run. Now, it almost looks like the format is left in this game. Unless some bowler will going to do the mistake of bowling no ball and wide. The victory is sure. Again, they wanted to go for a single. Single will not going to help. 17 required from last delivery of their innings. And quite unfortunately, we can see that only 19 on the board. This time, it's going to be a over completed, the huge margin victory. And a victory of almost 15 runs, 16 runs in fact, for the team. Ayodhya Nagar is comprehensive victory, defeated SMC Pajir. SCC Ayodhya Nagar grabbing that valuable 2 points, and along with the 2 points they will going to get another booster as well in this particular match. The booster point for that highest run in the power play. Almost it's a dominated performance by the bowler, by the team SCC Ayodhya Nagar. The time to announce the man of the match. ಹಾಲ್ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಈ ಒಂದು 7ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನದಿದೆ. ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಲಾಂದಿ ಕಮಲದ ಯಜಮಾನಿಲಾಂದಿ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಿಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಎಂಗಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಿ. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲಾ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಿ. ಮುಕ್ಲೇರಿ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲೆಗೆ ಪ್ರಜಿತನ್ನೇ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚೆನೆ ನವೀನ್ ಪಾದಾಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರಿಸನ್ನೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಎಂಕಲೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೇಸಡೆ ಪಾಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲರಿ. ಮೇರೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಜಿತ್ ರೈಕುಲು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರಿ. ಅಂಚೆನೆ ನವೀನ್ ಪಾದಾಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆನೆ ಗೌರೀಶ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. Sulmelu Vijayre, Anchane, man of the match. Man of the match of the previous match, which is goes to Guru Dikshit for his all-round performance. May I request Guru Dikshit, please come and collect your man of the match award from our chief guest. ಇತ್ತದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಗುರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪರೊಂದೇರೆ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಪಾದಾಲ್ಪಾಡಿ ಮೇಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿನ ಪಡೆಯೋನೋಡು. ಗುರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿನ ಪಡೆಯೋಂಡ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ. 2 ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೈಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿನ ಪಡೆಯೋನು ಪಡೆಯೋದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ.
Thank you, sir. And we are just moving to the 9th match of this tournament. SVC Hakwa Kallu versus MFC Strike. The match started, and MFC are 3 without loss in the over number first in progress. Now it's a call for the third umpire. Whether it's a boundary or not, just you have to check by the third umpire, and let's see what the decision came from the third umpire after checking it. Perfectly saved, and the scoreboard is now 3 on the board, yet to lose a wicket in the over number first in progress. So the first over in progress, Pavan the bowler and Shivu the striker. Ugly गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त अर्धा इन हाथ ऊपर the wicket again. This time he's got that one bounce into the fence for a boundary. This is an absolutely perfect strike. Came from the bat of Shivu. Just he pulled that one on the onside area, finds the gap as well in between deep backward square leg and a deep mid wicket. So 7 on the board, 7 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त शिवू के बल्ले से लगता है, और पवन इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में रन्स यहाँ पर बल्लेबाज को नहीं मिला, और हालांकि नॉन स्ट्राइक पर स्टंप्स जरूर उखाड़े गए, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर। मैच नंबर 9 of this prestigious cricket tournament, MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now started just short while ago, and this tournament is proudly organized by Sri Mudipinar Cricketers SMC Mudipu। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो पवन ने इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। Again lofted, this time I think it could be gone, and it taken comfortably inside the fence. He just played that one against the wind and just paid the penalty for that। और हवा के रुख के खिलाफ इस स्ट्रोक को उन्होंने खेला था, गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा लपक ले गए, और इसी के साथ पहला विकेट को गिर चुका है। शिवू द मैन डिपार्ट्स, एंड नाउ इट्स 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर SVC Hakwa Kallu अगेंस्ट MFC स्ट्राइकर्स। और इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिर चुका है। स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, 1 ball left in this over। First ball was wide, और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, so new batsman is now comes out to the middle। तो सुजीर इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद उछालना चाहता है इस वक्त, चूंकि विकेट कीपर भी चूके, और दोबारा विकेट कीपर अपने पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड, 2 विकेट्स लॉस्ट। मिक्स स्टार्ट फॉर NFC स्ट्राइकर्स, एंड नाउ दे आर 8 for the loss of 2 wicket after completion of first over। So still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining। There is 3 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में MFC स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। दूसरा ओवर इस छोर से शुरू होता हुआ। सेकंड ओवर स्टार्ट, द बॉलर स्टार्ट्स अ फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दिस साइड एंड, और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। काफी प्रखर धूप मैदान पर इस वक्त छा चुकी है। भीषण गर्मी का एहसास अभी भी खिलाड़ी और दर्शक दोनों करते हुए इस मैदान पर लगभग दोपहर के 3:30 इस वक्त बजते हुए, और धूप का प्रकोप अभी भी कायम मैदान पर। बिल्कुल साफ शुभ्र नीला आकाश, बादलों का नामो निशान नहीं, और
इस नीलाकाश तले सूरज अपने प्रखर किरणों को यहाँ पर मैदान पर फैलाता हुआ। पहली गेंद, फर्स्ट बॉल, दिस टाइम जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसेस, और विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को इस वक्त कलेक्ट कर लिया। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 8 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज हरीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते, फुल टॉस, lofted that one this time, finds the gap as well, and it's crossed over the fence for a boundary. This time fantastically struck, full toss, he just got that one right from the middle of the bat, और गेंद को इस वक्त पुल कर दिया खूबसूरती के साथ खाली क्षेत्र चुनते हुए into the vacant area at deep backward square leg fence for a boundary. बेहतर स्ट्रोक इस वक्त सुजीर के बल्ले से लगता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर, और हरीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेला जरूर लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, बट ही गॉट अ सिंगल। इन फैक्ट दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड, इन कम्स द थ्रो, दिस कुड बी इन ट्रबल इफ द थ्रो वाज डायरेक्टली टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन थ्रो स्टंप से कुछ वाइड इस वक्त गुजरता हुआ, और बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, और गेंद सीमा रेखा से बाहर, वाइड स्लॉन्ग ऑन पर 6 रनों के लिए। सुजीर के बल्ले से ये छक्का इस वक्त लग चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल इन बिटवीन वाइडिश लॉन्ग ऑन एंड डीप मिड विकेट, एंड गॉट द डिस्टेंस एट लास्ट। 20 ऑन द बोर्ड, 2 विकेट्स लॉस्ट, और गेंदबाज हरीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ उभरता विकेट अब गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुजीर के लिए। यह गेंद परिवर्तन के तौर पर ऑफ कटर गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद, डीप एक्स्ट्रा कवर पर मिसफील्ड, और बल्लेबाज दूसरा रन नहीं इस वक्त नहीं लेना चाहेंगे, एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को दोबारा तेजी के साथ फील्डर वहां पर फील्ड कर चुके हैं, और इस बीच हरीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। फ्लाइटेड, लॉफ्टेड, दिस टाइम चांस फॉर द लॉन्ग ऑन फील्डर, एंड ही टुक द कैच सक्सेसफुली जस्ट इनसाइड द फेंस। ही जस्ट पुल्ड दैट वन, बट नॉट सो पावर इन दैट स्ट्रोक, और गेंद में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और जहां तक सवाल है इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर का, तो लॉन्ग ऑन फील्डर ने इस वक्त कोई गलती नहीं की। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 2 overs completed. 2 overs have been bowled. Mixed progressing here for MFC strikers. It's 21 for 3 after completion of 2 overs. So half the way mark. Still half to go. Meantime, the next match will be played between United Mudipu versus KFC Kurunadu. And because of that, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart, and also complete the toss procedure before the end of this match. तीसरा ओवर शुरू होता हुआ, गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए मैच नंबर 9 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MPL मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर, और संदेश गेंदबाजी शुरू करते हुए इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर पहुंचते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का, जस्ट सिंगल ही गॉट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर, 22 एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। इनफैक्ट संदेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं, सामना करते हुए इस वक्त गौतम नए बल्लेबाज। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल जमीन के सहारे, लेग स्पिन के तौर पर गेंद, और लगभग जमीन के सहारे आई, गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और संदेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, full toss, just wanted to play that one too early, missing the line completely, and he just missed the opportunity in this loose delivery, और गेंद सीधे पहुंच चुकी है इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला, और संदेश इस बार बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जस्ट चेंज ऑफ पेस, बोल्ड अ लिटिल बिट ऑफ स्लोवर डिलीवरी कंपेयरिंग टू द प्रीवियस वन, और गेंद सीधे पहुंची धीमी गति से विकेट कीपर के हाथों में, और इस बीच अगली गेंद, यह गेंद एक बार फिर से चूके विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट झटकाया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर वापस रख चुके हैं। वाइड का इशारा, सिंगल रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास, 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस, और संदेश
ये गेंद इस बार बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, ऑलमोस्ट केप लो एट द लास्ट मोमेंट और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला और संदेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट है। ये गेंद इस बार एक बार फिर से चूके, फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस एंड इज गॉन। इनफैक्ट इस बैक फुट वाज जस्ट आउट ऑफ द क्रीज और जब विकेट उखाड़े विकेट कीपर ने बेहतर तरीके से, तब बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज से कुछ बाहर था और यहां पर स्टंप आउट घोषित करते हुए अंपायर बेहतरीन स्टंपिंग विकेट कीपर करते हुए। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed and a fantastic over came student from Sandesh. So after 3 overs, still the batsmen of now, I must say the batsmen of MFC Strikers searching for the right track. Just 6 balls left in overall calculation in their innings. 6 गेंदें सिर्फ बाकी अब उनके पारी में और देखते हैं इन बचे हुए 6 गेंदों में MFC Strikers के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। श्री मुडिपिन्नार क्रिकेटर्स SMC मुडिपू ने इस श्रृंखला का प्रायोजकत्व इस वक्त किया है। मुडिपू प्रीमियर लीग MPL सीजन 7 2025 के अंतर्गत 10 प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी टीमों का मुकाबला यहां पर जारी है। आज और कल 2 दिन ये श्रृंखला यहां पर चलेगी और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई इस पंचायत मैदान मुडिपू पर। अगली गेंद, पहली गेंद कहना पड़ा, फुल टॉस, लॉस्ट इट एंड इज गॉट द डिस्टेंस, ही इज गॉट द डिस्टेंस एंड दैट इज एन मैक्सिमम। सुजीर के बल्ले से छक्का लग चुका है। फैंटास्टिक पीस ऑफ बैटिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम सुजीर। He is moving up to 20 now with that 6. Second 6 came from him. और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। फुल टॉस के तौर पर गेंद थी और इस गेंद को इस वक्त पुल कर दिया खूबसूरती के साथ सुधीर ने छक्के के लिए। और सोनू गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया सुधीर ने, गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट पर, क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 wicket in the over number 4th and the last in progress in their innings. 4 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। नए बल्लेबाज चरित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज सोनू इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद उछालना चाहा, not connected that properly, fielder standing so deep, they completed 1, looking for the second but won't get it. In fact they finally settled with a single और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 31 रनों पर। 31 for the loss of 3 wicket, just 3 balls left in overall calculation in their innings. और सुजीर back on strike who is batting on 21 including 2 sixes and 1 boundary, सामना करने के लिए तैयार सोनू की गेंदों का। यह गेंद इस बार शायद डिफ्लेक्शन हुआ था यहाँ पर, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को लपक नहीं पाए। हालांकि विकेट उन्होंने जरूर चटका है लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर रुक चुका है 31 रनों पर। अगली गेंद लेकर सोनू इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, लॉस्ट इट दिस टाइम आई थिंक a chance for the fielder but he won't get that one. It's crossed over the fence for a biggie. This is an outstanding struck. 6 number 3 came from the bat of Sujir and he is now looking very confident. Scoreboard is now rising up to 37 now. The last ball of their innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर तैयार सोनू सुजीर के लिए और दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर चूके, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची वाइड 1+1 और सुजीर सुजीर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। उन्होंने कहा स्ट्राइकर के बल्लेबाज से वहीं पर खड़े रहे लेकिन अंतिम क्षण में स्ट्राइकर के बल्लेबाज क्रीज छोड़ चुके थे और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है सुजीर का। तो एक बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है सुजीर का। सुजीर आउट इज बैकिंग टू पेविलियन आफ्टर बीइंग स्कोरिंग 28 runs into his credit and 27 runs he scored and now the 4th wicket loss for MFC Strikers. It's 39 for the loss of 4 wickets. Still 1 ball left in their innings. तो नए बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक रन पर मौजूद सोनू
अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. The last ball of their innings is now coming up. Sonu to a new batsman. Last ball. Lofted down to long. Oh, chance! He won't get that one this time. They completed one. In fact, they come back for the second and get it comfortably at last. So, couple of runs added. They're looking for the third, but this time run out happened at this striker end. So, one more wicket fallen, fifth wicket fallen, and they finished with the 41. 41 the score scored by MFC Strikers, and now the target. They played a competitive target in front of SVC Huha Kwakallo. 42 they have to score for victory. 42 SVC Huha Kwakallo have to score in the simulated 4 overs with the required run rate of exactly 10.5 runs per hour. 42 रनों का लक्ष्य और देखते हैं SVC के बल्लेबाज इस 42 रनों के स्पर्धात्मक का लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं. फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर एसवीसी हु हाकुआ कल्लू की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. Thank you, Gopi. And 42 is the target set by team MFC Strikers for team SVC Huakuakalu. And wait and see how well SVC, the batters will going to reply. 10.5 runs per over is the required run rate. 10.5 runs, which is required run rate for the team to win this match. For SVC, to wait and see how well these two opening batters will go and lay the foundation. Chetu and Yatiraj, the opening batters, and Chetu will go into face the first ball. The first ball is lofted and looks like the fielder is going back, and long on fielder in fact couldn't manage to reach there, and ample time for the batter to complete the two valuable runs. Little bit misunderstanding because between the fielders to who will go and take the catch. One fielder running from the mid-on and one fielder coming from the wideish long on. And altogether ball is landed safely. Couple of runs for Chetu and two without loss of any wicket. This time, almost. He wanted to go for the reverse sweep. Faced the penalty for that. Couldn't manage to get the ball into his bat. The quicker and faster one there from Sharath. He bowled a beautiful delivery. The wicket number first is back in the pavilion for team SVC. And coming back to these two teams' performance so far in this tournament, SVC Hua Kwakalu, they're playing their second match. The first match they won against Namo Friends, and at the same time team MFC Strikers, they're also the first match they lost against Badakate Bantwal. So this is the match between the winners versus the losers. And but in this particular match, I think the team MFC Strikers, the batter did a great job, especially
the batter who scored some runs, which is Sujir, who scored some valuable runs from his bat. He hit 2-3 massive sixes in his innings and scored some valuable runs from his bat. The new batter in Amar is a new batter in. Sharat the bowler. This time, opportunity. Who will going to take the catch, but no one. The ball is with the direction of the wind, is going away from the fielders. One stage looks like it's going to be a chance for the fielder to take the catch, because in the afternoon the wind is blowing in front of wicket, so that ball is absolutely the floating in the air and just changing the direction, the deviating and going away from the two fielders trying for the catch. Lucky escape here for the batter. He got a couple of runs for that, 4 without loss of any wicket. Sharat balls this time going to be punishable, not from the batter but from the umpire, as the ball is gone outside the line of leg stump too far. And with that extra scoreboard moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Sharat balls slower one, change of face. The last moment the batter is checking a stroke. In that moment the appeal for run out umpire says not out, no damage done. The batter is safely home. 5 without loss of 5 for the loss of 1 wicket. The over number the first is in progress. Of course we are just seeing that first over the booster points. Who will going to get the booster points? 8 runs for the team MFC Strikers in the power play. So far only 6 on the board, and couple of runs will go into 3 runs which is required to get the booster point. This time misfield by the fielder, and they will going to grab the opportunity to get the single, and that's it. Booster points for the MFC Strikers, because they got 8 and the last ball is remaining in fact, so that opportunity is still there on this over. Scoreboard is 7 on the board, so 2 runs from the last ball will going to get the booster point for the team SVC. Here we go, last ball. Drives down to mid-off, wanted to come back for the second, no, only a single. No booster point for both the teams. Both the teams got 8 runs each in 1 over, so that in this particular match there will be no booster points. So 8 without loss of any wicket, chasing a huge total of 42 to win this match. This is not a good start what we are talking about for the team. And over number the first which is comes to an end. The power play is completed, 3 overs remaining, 18 balls remaining. They have to get plenty of runs, 44 runs, meanwhile 34 runs required for the victory in 18 balls. Still it's going to be very hot and high humidity here in this Panchayat cricket ground in Mudipu. They're witnessing this season 7 of Mudipu Premier League 2025, which is proudly presented by Sri Mudipinar cricketers. And so far it's day number 1, very successful. And you're watching the match number 8 in its progress. Next match number 10 will be played between United Mudipinar versus KFC Kurnadu. The toss which is won by United Mudipinar for the next match. The second over is going to start here. Sushant brought into attack round the wicket from the water tank end. Right arm. This time starts well with a beautiful delivery. The batsman just wanted to go for the expansive drive and missed it completely. Sushant to Amar. No ball called by umpire. No, yes, it is a no ball called by umpire. And 1 run taken, 1+1, 2 runs added to total. The free hit delivery for the batter, because bowler touches the stumps in the non-striker's end while he's just delivering the ball. He's got a contact with the stumps, so that umpire called it's a no ball. The free hit delivery for the batter. I have to grab the opportunity.
This time lofted down to deep long off. Not more than a single. And the bowler will not go into bother about this. He survived from the free hit delivery. Scoreboard now moves on to 11 on the board. The over number second is in progress. Altogether, a wonderful cricket tournament is in progress. This quick work by the wicketkeeper behind the stump, but not quick enough to get the result. Dot delivery. Each and every dot ball will go to take that asking run rate is absolutely very high. 8 runs in the first, and now not really runs are coming. The boundary, the 6, which is badly required for the chasing team. SVC Huakwakalu, they wanted to get some big shots. Shushan. Round the wicket. Again driven down to deep long on. Just a single. Very difficult to find the boundaries for the batters so far. Tidy bowling performance in progress. Even in the second over, the runs which is hard to combine against the great tidy line bowling performance from Sushant. Double figure 10 on the board. Swings and missed. Lovely line against the line, across the line. He wanted to hit the ball, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. 32 more runs required for the victory. In 13 balls, the target is looking stiffer and tougher. Driven nicely down to extra cover. Excellent piece of fielding by the fielder, almost running from the extra cover to collect the ball down at wideish long off. One more tidy over which is comes to an end after completion of over number 2, chasing 42 to win this match. The scoreboard is just 13 on the board. 6.5 runs per over. It's not a big run rate, but long way to go for the team to win this match. 29 required from 12 balls. Sujir brought into attack to bowl the third over. Trying for the switch it doesn't get hold of that and properly. Just a single. That will not going to help the team to get the required run rate, which is 14.5 runs per over. The scoreboard is 14 on the board. 28 required. 11 balls remaining. Needed some big shot in this end. Definitely better. Have to try for the big shot. This time, ball is in the air. Short mid wicket fielder underneath it. One more wicket back in the pavilion. The wicket number 2 of SVC are back in the pavilion. This is all happening when you are under pressure of getting some acceleration in the run rate. And by doing that, they're absolutely throwing the wicket with a tidy bowling performance by the bowlers of MFC Strikers Vidyanagar. So far, a wonderful cricket tournament which is in progress. Starts with the opening match, Amma Cricketers versus Baddagatte Bantwal. Amma Cricketers won the match quite comprehensively. After that, we are witnessing this match number 10 of the day number 1. Match number 9, in fact, is in progress. Left-hand batter is on strike now, Pramod. And wait and see how left-hand batter will go into make an impact here in this innings. Needed some big shots. 10 balls, 28 required for the victory. Looks to be a little bit difficult, but not impossible in cricket. 2-3 big shot can change the complexion of this game. But against a strong bowling department of MFC Strikers, what we are talking about. Can he manage the impact here? No impact at all in that occasion. Even though that will going to frustrate the batter because he hit that one pretty well. Right from the middle of the bat.
but he's just choosing that one long on region, little bit in the flatter version. And if you play the strokes in the flatter version, the wind will not going to help you to get the distance. At least you have to little bit play the stroke little bit high so that the wind will going to do the rest. And unfortunately, the batter Pramod is back in the pavilion. "14" on the board. This time again, lovely delivery. Just around the outside the line of off stump, extra bounce as well. The new batter Chetu is absolutely beaten by the flight of the ball. No run scored. Again, lovely delivery. No run scored. This is turning out to be a great over there from Sujir. The tall man getting some extra turn as well as extra pace in his bowling, giving some kind of trouble for the batter. This is a very tidy over in the progress. So over number 3 completed. Great over. Only 1 run and 2 wickets in that over for Sujir. The great over which is comes to an end from Sujir. The last over remaining and they needed another 28 runs to win this match. Last over 28. Charit brought on the attack to bowl that last over. It will going to depend 28 runs in the last over. And the batters of team SVC couldn't manage to come near to the target. At least they wanted to fight back. At least they have to try some runs in the last over. 28 in last. Charit. Charit the bowler. Round the wicket right. Just starts with the excellent delivery indeed. One more dotted delivery. 5. 28. Last opportunity. 5 sixes required. Otherwise 4 sixes and 1 boundary. The choice for the batter to get that 28 in 5. Decider delivery and that will going to be a fair delivery. The misjudgment by the batter just over the stumps. 4 balls 28. It looks like it's all over. And just a formalities left in this game. 28 required from 4. Umpire having some conversation with the squad umpire to watch whether it is going to be a wide or fair delivery. Umpire have to see that the ball is almost dropping. Umpire taken the decision there and giving that wide. That means still there's opportunity. 27 required from 5. So strong breeze is passing in the middle of the ground. Lovely delivery. Now 4 balls 27. Looks like it's all over. Door which is absolutely closed here. Unless the bowler will going to do any mistake of bowling wides and no balls. The victory is absolutely the sure for the fielding team, MFC Strikers. And what we are talking about, and the wide is bowled in scoreboard numbers under 16. 26 required. One more wide. 25 required from 4.
I don't know why the bowler is feeling that much of pressure, depending at huge runs in the last over. Driven, but straight to the hands of square leg. Just a single. 3 balls remaining in their innings to complete the formalities. 18 on the board, 24 required. Two balls remaining, 24 runs required for the victory. Driven towards the mid wicket. And with the addition of that single score, now moves on to 19. 23 needed from last ball. That's it. The victory of 22. Huge margin as far as the format of this cricket is concerned. This tournament is concerned. 4 overs format of game. They're winning the match by huge margin. And congratulations for the team MFC Strikers. And now it's a time to announce the man of the match, which is one and only one who scored 27 valuable runs from the bat. And Sujir is bowled well, picked up 1 wicket, 2 wickets for just a single run. And I request Mr. Sujir of team MFC Strikers, please come and collect your man of the match for your wonderful performance from the bat and even from the ball. A great all-round performance from the great all-rounder. And I request our chief guest, please present this man of the match award. Match number 10 will going to start here, and for the match number 11, I request all the players of Baddagatte Bantwal as well as the Namo friends, please be reported here immediately for the signatures. ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So before the match will going to start, change in commentary box. And it's over to Gopi. Thank you.
Dhanyawad Satish. So the match number 10 is now going to start between United Mudipinnar versus KFC Kurunadu, and KFC Kurunadu is now going to bat. Their openers are Rakesh and Rupak. In fact, the bowler is Neetu, starts the fresh proceedings. And the first ball of the match is now coming up. फर्स्ट बॉल पहली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो डॉट गेंद के साथ गेंदबाज नीतू इस वक्त गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं। शून्य पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है केएफसी कुरनाड का। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। अगली गेंद इस बार एक बार फिर से गेंद को खेला, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में। दो बेहतर गेंदें गेंदबाज नीतू इस वक्त फेंक चुके हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। Again lost it. This time he just clearing. No, in fact, it taken brilliantly just inside the outside the 20-yard circle. In fact, and this is an absolutely fantastic catch taken by the mid-on fielder, just running towards to his backside. Just took eyes on that ball and grabbed the catch successfully. And that is an absolutely good catch taken by the mid-on fielder. And the first wicket fallen in the face of Rakesh for KFC Kurunadu. Now still they are yet to get off the mark. It's not for one. So Ashish, the new man, number 3 batsman, is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करते हुए नीतू की गेंदों का। नीतू इस वक्त गेंद फील्डिंग में जमावट करते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। और नीतू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आशीष के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, स्टंप्सों पर इस वक्त गेंद टकरा चुकी है और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। Just wanted to drive that one, missing the line completely. I think it's got a deflection on that, and the ball after got its deflection, it stuck to the middle of stump. In fact, bills are disturbed, and that is wicket number 2. First ball, golden duck dismissal for Ashish. And now KFC Kurunad are now looking in trouble. Still they are yet to get off the mark. It's not for 2 in the first over. 2 विकेट इस ओवर में गिर चुके हैं और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज नीतू। तो हैट्रिक गेंद इस वक्त लेकर नीतू तैयार। नए बल्लेबाज संकेत का आगमन यहां पर होता हुआ और हैट्रिक बॉल्स कम्स फ्रॉम नीतू। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन ओवर इस वक्त प्रगति पर नीतू द्वारा। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार कट गया, इस वक्त बल्ले का बाहरी किनारा, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है। सो फैंटास्टिक ओवर। स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी है। 5 बेहतरीन डॉट गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज नीतू। स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और अपने ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार संकेत, जो कि अपना पहला गेंद इस वक्त खेल चुके हैं। रन यहां पर नहीं मिला और देखने हैं कि नीतू इस ओवर को मिडन कर पाते हैं या नहीं। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस ओवर में अंतिम बार। ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया गेंदबाज, मिसफील्ड इस वक्त, लेकिन बैकअप होता हुआ लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा। जस्ट अ सिंगल एंड अ फैंटास्टिक फर्स्ट ओवर came from Neetu, conceded just 1 run and captured 2 wicket। और जो बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत की अपेक्षा उम्मीद थी यूनाइटेड मुडिपिन्नार के कप्तान को, वो बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत इस वक्त दे चुके हैं नीतू। इस वक्त सिर्फ 1 रन पहले ओवर में उन्होंने प्रदान किया, 2 विकेट प्राप्त करने में सफल। मैच नंबर 10 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now progressing here, which is proudly organized by Sri Mudipinnar Cricketers SMC Mudipu.
10 prestigious cricket teams are participating in this prestigious cricket tournament. 10 prestigious franchise teams, in fact, participating in this prestigious cricket tournament MPL सीजन 7 2025. और इस वक्त दूसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ गेंदबाज गौरीश इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए पहले ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले इस वक्त समाप्त हो चुका है। फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और जहां तक सवाल है इस वक्त गौरीश का, तो गौरीश अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए संकेत दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई इस वक्त, और जब तक शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और गणेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, गौरीश माफ कीजिए, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त जारी। एक फील्डर को इस वक्त डीप मिड विकेट पर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात किया गया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और गौरीश दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर बेहतरीन स्टॉप। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग सेव मेड बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर। हालांकि ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को उन्होंने अंदर की ओर ढकेल दिया, कैच तो लपक नहीं पाए लेकिन गेंद को रोकने में सफल। और निश्चित रूप से ये छक्का यहाँ पर बचाते हुए अपने टीम के लिए लॉन्ग ऑन फील्डर, और सिर्फ 2 मात्र रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज। तो 2 रन के साथ रूपक का खाता यहाँ पर खुल चुका है। और गेंदबाज गौरीश इस वक्त गेंदबाज से आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद पैरों पर टकराई, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद पहुंची इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग क्षेत्र पर, और जब तक गेंद को विकेट कीपर अपनी बाईं ओर जाकर फील्ड करे 1 रन का इजाफा हो चुका है। 5 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप का जहां तक सवाल है, KFC कुरनाड को इस वक्त एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी की सख्त जरूरत है। यह गेंद उछालना चाहा एंड द बॉल फेल इन द विकेट एरिया, इट्स सिटिंग डाउन इन फैक्ट। और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे 1 रन का इजाफा हो चुका है। 6 ऑन द बोर्ड, 2 विकेट्स लॉस्ट, एंड दिस इज द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। Still the batsmen saw for KFC could not searching for the right track at this situation. और गेंदबाज गौरीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, रूपक का सामना करते हुए इस बार लॉफ्टेड एंड क्लियर डिफेंस, इट्स अ बिगी। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक। मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए उछाल दिया, और वाइडिश लंगोन और डीप मिड विकेट के बीच जो सीमा रेखा के पास फील्डर थे उन्होंने जितोड़ कोशिश जरूर की गेंद को अंदर की ओर ढकेलने की, ऊपर की ओर छलांग लगाकर, लेकिन नाकामयाब, गेंद उनके पहुंच से बाहर। 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त रूपक के बल्ले से लगता हुआ। अंतिम बार इस ओवर में गौरीश इस वक्त तैयार, फुल टॉस लॉफ्टेड, दिस टाइम नॉट क्वाइट मिड विकेट, चांस एंड टेकन कंफर्टेबली एट डीप मिड विकेट। तो इस वक्त ये विकेट गिर चुका है, लगभग फुल टॉस के तौर पर गेंद, हाई फुल टॉस, और गेंद को इस वक्त उछालना चाहता लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, टॉप एज पर टकराई। और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर थे अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने इस कैच को लपका। 3रा विकेट गिर चुका, 3 विकेट्स कंप्लीटेड, 3 विकेट्स फॉलन इन फैक्ट। Now it's 12 on the board, 2 overs completed, 3 wickets down for KFC कुरनाड। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, द मैच नंबर 11 ऑफ दिस मैच इज नाउ कमिंग अप लाइव एंड एक्सक्लूसिवली राइट इन फ्रंट ऑफ यू राइट आफ्टर दिस मैच बिटवीन Badalkatte Bantwal versus Namo friends, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chat and also complete the toss procedure before the end of this match. और जहां तक इस मैच का सवाल है तो 3रा ओवर इस वक्त KFC कुरनाड की पारी में शुरू होता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए, और गेंदबाज इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए, सामना करते हुए इस वक्त संकेत। पहली गेंद है, इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा। डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 13 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। पुनीत जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं,
तो बल्लेबाज समित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज इस बीच पुनीत दाहिने हाथ राउंड द विकेट फुल टॉस टॉप एज एंड टेकन कंफर्टेबली बिहाइंड द स्टंप्स बाय विकेट कीपर ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली the ball came quite lately and because of that no contact cleanly between the bat and ball top edge पर गेंद टकराई और विकेटों के पीछे आसानी के साथ इस वक्त इस कैच को लपक लिया विकेट कीपर ने one more wickets fallen for KFC could not the problems are now more building up for them 13 for the loss of 4 wickets in the over number 3 in progress Nishit the new batsman number 5 batter is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज पुनीत की गेंदों का इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त लेकिन नहीं ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी इस वक्त वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 14 रनों पर 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स नाउ और पुनीत इस बार विकेट कीपर के हाथों में गेंद जोरदार अपील जरूर लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद लगभग इस वक्त दोनों अंपायर कुछ बातचीत करते हुए डिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ था जरूर लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा डिफ्लेक्शन होने के बाद गेंद को विकेट कीपर ने फुल टॉस लिए लपका था या फिर गेंद बीच में टिप्पा खाई थी तो नॉट आउट घोषित गेंद बल्ले पर टकराने के बाद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे थे आफ्टर फर्स्ट बाउंस और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला गेंदबाज पुनीत इस बार बेहतर गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी और विकेट कीपर ने विकेट जरूर उखाड़े लेकिन बल्लेबाज का बैक फुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित 2 गेंदें इस ओवर में बाकी स्टिल 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर पुनीत इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और निश्चित इस वक्त सामना करते हुए इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद थी इस वक्त और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रनों पर एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज पुनीत और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र अक्षर में यहाँ पर दिखाई देता और इस बीच पुनीत इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 15 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस पुनीत bowls lofted this time chance for the long off fielder and he never misses not quite mid wicket in fact and long off fielder the ball straight went into the hands of long off fielder and he made no mistake. One more wicket fallen, 5th wicket down. KFC could not are now looking in trouble. It's 15 for 5. 3 overs have been bowled. Ranjit, the new batter, is now comes out to the middle. So the last over starts in KFC could not innings. 15 on the board, 5 wickets lost. Now just 6 balls remaining in their innings. गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए the bowler wearing a 32 number jersey starts a fresh proceedings from that side end. और सतीश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान यूनाइटेड मुडिपिनार के और ओवर की पहली गेंद गुड वन दिस टाइम मच स्ट्रेटर लाइन and the ball went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run और अगली गेंद इस वक्त गेंदबाज तैयार lofted down to long on in fact it's got a single fumble and the batsman looking for the second misunderstanding but they are back to their creases at last
थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी, लेकिन अंतिम कार अपने कदमों को क्रीज पर खींचने में सुरक्षित दोनों बल्लेबाज, सिर्फ एकमात्र बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 16 on the board for losing 5 wickets, and now just 4 balls left in overall calculation in their innings. अंपायर नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकेटों को सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, और एक बार खेल स्ट्राइकर एंड पर स्टम्प्स को सही किया था अंपायर ने, और इस बीच खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ दाहिने हाथ राउंड द विकेट। सतीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद चूके स्टंप आउट, ब्रिलियंटली स्टंप्ड बाय विकेट कीपर। 2 कदम आगे निकल कर गेंद को उछालना चाहा, क्रीज से आगे निकल चुके थे, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट यहाँ पर चटका दिया। ब्रिलियंट पीस ऑफ स्टंपिंग मेड बाय विकेट कीपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रिलियंट स्टंप one more wicket fallen. It's 16 for 6. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಇರಾ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ MPL ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Heartily welcome to you, sir, Mr. Pratap Chandra Ira, to this prestigious cricket tournament. Behalf of the organizers and all the cricket lovers. 2 balls left. 17 on the board. और गेंदबाज इस वक्त तैयार था, इनात राउंड द विकेट। ये गेंद पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े। दिस कुड बी 1 more wicket and it happened at the non striker end. So 7th wicket down. In fact, now it's a 17 for 7, and now just a last ball left. So what a fantastic piece of bowling performance given by the bowlers of Badalkate Bantwal. In fact, United Mudipinar, the bowlers of United Mudipinar. ಎಂಗಲ ಇನ್ನಿತೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಇರಾ ಮೇಯರ್ ಬೈದರೆ ಮೇರೆಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡು. So the last ball of their innings is now coming up. Right arm around the wicket. Here he bowls down the track, lofted, and just he finished the match innings in a style with a 6. हालांकि स्कोर काफी कम है, लेकिन एक बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज Prasad के बल्ले से after comes down the track, he just got that one right from the middle of the bat and just cleared the fence at long on. So the innings is up, and KFC could not finished with 23 for the loss of 7 wickets in the stipulated 4 overs. And the target for United Mudipinar is 24 now. 24 United Mudipinar have to score for victory against KFC Coronado in the stipulated 24 overs. That means in the stipulated 4 overs. Exactly 6 runs. United Mudipinar की पारी की शुरुआत होगी, तो अब वक्त है एक ब्रेक. Now it's time for break. Thank you. धन्यवाद. So thank you very much, Gopi. So 24 the target set by the team KFC Coronado. For the team United Mudipinar, the bowlers did a great job, especially the first over ball by Neetu. Excellent first over, 2 wickets and 1 runs, and then of course the bowler Puneet did a great job of bowling that third over, very economical, and last over ball by Satish is also good over, but last ball of the innings, 6 came from the bat of Sanket, is giving some kind of a comeback. Meanwhile, I request the 2 teams captain please be reported here for the tossing ceremony. Captain of Badagatte Bantwal as well as Namo Friends. Namo Friends ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 11 will be played between these 2 teams.
ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So signal came from umpire, everything is ready for the chasing, and 24 to get, and the batter Prajvit and Gaurish will be the non-striker. Prajvit will going to take the strike. Ashish will going to start the proceedings. So starts with the delivery, which is just around the leg stump of the batter, just a little bit outside the line of leg stump, and the Prajvit left the ball, not really able to get the ball to his bat and missed it completely. Again, second delivery, lovely delivery, just around outside the line of off stump. 2 dot deliveries to start with. The Prajvit couldn't manage to get any runs in first 2 balls. They are looking for the booster over. The booster over and only 1 run which is conceded by Neetu of team Mudipu. It picked up 2 wickets as well. So United wanted to get some runs here to get that booster points. Right over the wicket balls. This time Lapid, catch it is a call, with a field attack underneath it. So the Prajvit is back in the pavilion. Just wanted to go for a lofted drive over the head of that mid off field. Didn't got that much of proper connection. The great bowling there from Ashish. It just keeps the batters quiet in the 2 balls, and the batter wanted to break the shackles. The third delivery of the over, they wanted to go over the top of the infield, but pays the penalty for that. 0 for 1. So lovely shot, played it down to deep long on for a single. The jersey number 6. Prabhas, the new batter in, has got his first run. So 1 run on the board. So 1 run will going to get the booster point for United. And wanted to go for the safe shot, chance of run out, and it's a suicider. It's Gaurish, the batter, misjudging the run. After swept the ball, he wants to get the run, and unfortunately Pravesh, the batter, is back in the pavilion. So 1 for 2. ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ ನಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. So KFC Kurnad's the bowler, the opening bowler Ashish did a great job so far. Picked up 2 wickets, only 1 run conceded. Great start. The new batter Likit will going to take the strike. The last delivery of the first over, the power play over. Likit will going to take the strike. He wanted to go for the sweep shot, and he got the runs, so that booster points for team United Mudipu. They got the booster points here, and 2 on the board. Great over from Ashish, even though he conceded 2 runs but picked up 2 valuable wickets. The target, which is 24, 22 runs required from remaining 3 overs. So for the next match, Badakatte captain won the toss. The addition, they elected to field first. Match number 11 will be played after this match. Second over going to start.
So 18 balls and 22 runs required for the victory. It's 4:30 in the evening. Feel it was going to be a bright sunny evening. MPL season 7 is in progress by team SMC Mudipu in this beautiful Panchayat cricket ground. So bowler will going to start the second over. I request the fielding team please make it fast. Second over, first ball. This time a lovely shot. He got the distance with that magnificent struck. What a shot coming from the blade of Likit. Just on the midline leg stump, but batsman quickly onto his front foot and dispatched that one between us deep mid wicket, deep square leg, in front of square and behind the square. The ball which absolutely gone into the fence like a tracer bullet, perfectly struck with the timing. And the scoreboard jumps into 8 with that 6. This time he lofted, going for the one more. The fielder is fails to stop the boundary. The back-to-back 6 and boundary here, the 2 consecutive deliveries. The bowler got a punishment. Tata manages over. Vignesh balls this time. He wanted to go for the single, chance of run out. Direct. It might be the curtain in the innings of Likit. So one more single has been added to total with that single score, but moves on to 11 on the board. Gaurish drives the ball towards Lloydish long on. Fumble from the fielder. Their chance of second run there. They wanted to come back for the second. The wicket keeper missed it completely. The Gaurish, the batter, is not really that much of 100% fit, as he is a little bit struggling to get his second run. Completed 2 valuable runs quite hardly. With the 2 valuable runs, scored numbers on to 13. Runs are coming in this over of Vignesh. Already 11 runs in 4 deliveries with that. This is going to be a wide delivery. Umpire, just a confusion. First stroke, which is a 6 over boundary, square leg hakina. This time it's going to be one more. He's in hurry. The Gaurish joining the party now. The team United are looking in hurry to get their victory runs. With that 6 score, but moves on to 22. Just 2 runs away from the victory. This is turning out to be a very expensive over. And no ball called by umpire. Overstepping. And scores are leveled. Just 1 run required for the victory. The free hit delivery. And now Gaurish played it nicely to extra cover. That will going to be a winning run. So comprehensive victory for the United Mudipinnar. They won this match by 8 wickets with the 2 overs to spare. Congratulations for the team United Mudipinnar for the comprehensive victory. They're the must-win match victory for them, because they lost the match, first match against STC Ayodhya Nagar. And then that will going to give a lot of confidence here for the team United Mudipinnar. They won the match by 8 wickets. Congratulations for United Mudipinnar. KFC Kurnadu, they lost their second match. So now it's the time to announce the man of the match.
So man of the match which is goes to, it's on and only one who bowled a power play over with just a single run and picked up 2 wickets. So Neetu, again, he is the man of the match of United Mudipinnar for his wonderful bowling performance. 1 over, 1 run, 2 wickets. ಎಂಗಲ ಎನಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಗೊಬ್ಬದು ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ತಂಡದ ನೀತು ಮೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮೇರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಇರ ಮೇರೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡು ನೀತು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಇರ ಮೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತಂದಲೇರೆ ಎಂಗಲ ಇನ್ನಿತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಬಾಲೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಪೂಪಡಿಕಲ್ ಎಂಗಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಮೇರೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಇಲೇಸಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಪೂಪಡಿಕಲ್ ಮೇರೆ ಎಂಗಲ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆ ಬರಡು ಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನೈತಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಪುಪ್ಪಡಿಕಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದರೆ ಮೇರಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರಣೆ ಪ್ರಜಿತನ್ನೇ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ತಂದುಪೋದು ಮೇರಣೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಜಿತನ್ನೇ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಎಣಿತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಜಿಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುವಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುವರು ಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರಿಶನ್ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆ ಬತ್ತದೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದನ್ನಾಗಿ Dhanyawad Satish. So what a fantastic start in the first delivery for the batsman. Hit that one pretty hard and he's got that one for just for a maximum. In fact, 6 on the board. संपत के बल्ले से छक्का लग चुका। नमो फ्रेंड्स की ओर से एक बेहतरीन शुरुआत पहली गेंद पर इस वक्त संपत दे चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार उछालना चाहे एक्स्ट्रा क्विकर गेंद और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। बड्डागट्टे बंटवाल और नमो फ्रेंड्स के बीच मैच नंबर 11 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। और इस वक्त गेंदबाज
विजेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन इस बीच नहीं मिलेगा. जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 7 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और संपत ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाजी इस वक्त विजेश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने तो पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहता, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो गेंदबाज विजेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और विजेश की है गेंद. इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल. और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 8 रनों पर. 8 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट और संपत इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक. सामना करने के लिए तैयार विजेश की गेंदों का और विजेश दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार फुल टॉस पुल्स दैट वन, नो वन इन दैट एरिया, द बॉल फेल इन द विकेट एरिया. इन फैक्ट फील्डर आफ्टर इट, जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, बट ही गॉट अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 10 रन. 10 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट. pretty good start for Namo friends. And now a pretty good start made by the openers of Namo friends. 10 runs on the board of completion of first over in this 4 overs format. और जहाँ तक सवाल है मैच का, तो मैच नंबर 11 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MPL Mudipu Premier League Season 7 2025, which is proudly organized by Sri Mudipinar Cricketers SMC Mudipu. इस वक्त शानदार प्रगति यहाँ पर करता हुआ और इस बीच गेंदबाज अपनी और की अगली गेंद लेकर तैयार. The bowler starts the fresh proceedings from that side end. And the fresh over starts, second over starts in Namo friends innings. Akash, the bowler starts fresh over और गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार चेतन के लिए. और चेतन इस वक्त सामना करते हुए पहले ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. आकाश पहली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया. स्क्वायर लेग पर डीप मिड विकेट पर एक फील्डर तैनात. लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद ऑफ साइड पर. और ओवर की पहली गेंद लेकर आकाश इस वक्त तैयार चेतन के लिए. गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे गेंद आते हुए लेग स्पिन के तौर पर इस गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन नहीं मिला. आकाश फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार straight into the hands of mid wicket fielder. Straightforward catch went into the hands of mid wicket fielder and he never misses. और इस कैच को कन्वर्ट करते हुए बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को उछाला जरूर, लेकिन काफी ऊंचा नहीं, फ्लैटर वर्जन पर और गेंद सीधे पहुंची फ्लैटर वर्जन पर मिड विकेट फील्डर के हाथों में, जो कि गेंद की ताक में खड़े हुए थे. और उन्होंने इस कैच को स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच को बेहतर तरीके से लपक लिया, बेहतर जजमेंट के साथ. Chetan, the man dismissed. Now it's 10 for the loss of 1 wicket. This is the match number 11 of this prestigious cricket tournament. MPL Season 7 2025 is now progressing here. Right after this match, the match number 12 will be played between Bubbly Warriors versus STC Ayodhya Nagar. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chat and also complete the toss procedure before the end of this match. जहाँ तक सवाल है नंबर 3 बल्लेबाज का, तो शशांक कमिंग आउट एज नंबर 3 बैट्समैन कम्स आउट टू द मिडल. इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार आकाश की गेंदों का. ये गेंद रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक एंड फाइंड्स द गैप एज वेल. He just played that one with a twisted bat and finds the gap fantastically in between deep backward of third man and deep cover point. So positive start for Shashank in his very first delivery. He's got a bounty for that stroke. और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. अब कवर पॉइंट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया जा रहा है और आकाश
अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर तब विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। मैच नंबर 10 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ और इस बीच आकाश फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और इस वक्त गेंदबाजी करेंगे संपत के लिए जो कि एक छक्का पारी की पहली गेंद पर झड़ चुके हैं। इस वक्त सामना करने के लिए तैयार आकाश की गेंदों का। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 16। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 30 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा नमो फ्रेंड्स को अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और आकाश अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए शशांक। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, हवे में जरूर लेकिन फील्डर वहां पर नहीं और 2 फील्डरों के बीच गेंद इस वक्त टिप्पा खाती हुई और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। So single to end the over, 2 gone and after 2 overs number friends 17 for 1, 7 runs came from this over, pretty good one from Akash. Over came to an end and after 2 overs 17 for 1 with a run rate of exactly 8.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. आधा सफर इस वक्त तय हो चुका, आधा सफर और तय होना बाकी, हाफ द वे मार्क स्टिल हाफ हैव टू गो। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो देखते हैं कौन सा गेंदबाज इस छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करेंगे। तो इस वक्त गेंदबाज दीपू गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार शशांक जो कि सामना करते हुए तीसरा ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर नमो फ्रेंड्स की पारी में। इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, बल्लेबाज हैं श्रेयांक जो कि रन स्ट्राइकर पर मौजूद, संपत जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो इस वक्त गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पैरों पर टकराई, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 18 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज दीपू इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, श्रेयांक इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार लॉफ्टेड एंड स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ लॉन्ग ऑन फील्डर, कांट फाइंड द गैप एज वेल एंड ही जस्ट पेड द पेनल्टी फॉर दैट। लॉन्ग ऑन फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ श्रेयांक का विकेट यहां पर गिर चुका है, सेकंड विकेट गॉन। Now 18 for the loss of 2 wickets for Namo friends. They are looking in trouble a little bit after being a good start in the first over. और इंतजार है इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज का, we are just waiting for the number 4 batsman निखिल उर्फ रबाड़ा इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। तो इस वक्त निखिल उर्फ रबाड़ा इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी निखिल अपनाते हैं। और दीपू गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार, lofted in the air and just wide off the extra cover fielder. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, they come back for the second run and get it comfortably at last. Better running between the wicket, अच्छा कहना पड़ेगा, not quite get that one right from the middle of the bat at the last moment है, लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर और 2 रन बल्लेबाज यहाँ पर प्राप्त करते हुए 20 on the board, 2 wickets lost in the over number 3 in progress। और दीपू रबाड़ा यानी निखिल इस वक्त ఇక్కడ కొట్టగే యూత్ కాంగ్రెస్ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಇರಂಬೇರಿ ಬತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತಂದಲರಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಇಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನಲ್ಲ।
So one more dot delivery bowled and now still a ball left in this over और गेंदबाज दीपू इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त यार ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए और अपील को नकार दिया अंपायर ने। गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, लेग बाय का इशारा। That leg by run the scoreboard moving up to 22. Still a ball left in fact. Last ball left in this over और गेंदबाज दीपू इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद उछाला, not quite mid wicket but the fall fell just short of a feeder at right. It's long gone. In fact, they come back for the second. This could be in trouble. At this time, Rabada won't survive. निखिल द मैन डिसमिस्ड और डाइविंग एफर्ट उन्होंने जरूर लगाई थी लेकिन आखिरकार अपना विकेट बचाने में असफल और बेहतर थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ वाइड लॉन्ग ऑन फील्डर का स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स और विकेट की और गेंदबाज ने थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दिए और निखिल डिपार्ट्स and now it's 22 for the loss of 3 wickets. 3 overs have been bowled and now just the last over left in the legs. नमो फ्रेंड्स की पारी का अंतिम ओवर इस वक्त बाकी। शाम का वक्त 4:50 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है। हालांकि गर्मी की तीव्रता जरूर कम हो चुकी है लेकिन धूप का अस्तित्व भी मैदान पर मौजूद है। स्कोर है इस वक्त 23 रन 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल, लास्ट ओवर स्टार्ट्स। इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अंतिम ओवर इस वक्त नमो फ्रेंड्स की पारी में इस वक्त शुरू होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट। दैट इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी, द बॉल पास्ड बिटवीन हिज लेग्स एट द लास्ट मोमेंट। आसान सा फील्डिंग लेकिन अंतिम क्षण में ऐसा कहना पड़ेगा थोड़ा सा मिस जजमेंट और गेंद उनके दोनों पैरों के बीच से इस वक्त निकल गई थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। खराब फील्डिंग और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 for the loss of 2 wickets now at the start of the 4th and the last over of their innings। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। धनंजय इस वक्त सामना करते हुए और गेंदबाज हर्षित की गेंद को इस वक्त उछाल दिया गया। अंपायर ने गेंद के लाइन से अपने आप को अलग किया। अंतिम क्षण में दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं। Fantastic running between the wicket between these two batsmen, adding a couple of runs to their total, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 29. 29 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 4 गेंदें अब बाकी उनके पारी में। हर्षित अपने पहले 2 गेंदों में 6 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और इस बीच अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, धीमी गति की गेंद, नॉन सेकंड बल्लेबाज काफी आगे निकला है और यहाँ पर रन आउट हो चुका है। सो वाइड एंड रन आउट, 1 run added to their total and a wicket lost। 30 for the loss of 4 wickets now। So Sampath the man dismissed after being playing a good knock for their side of 11 runs including 1 6। He is backing to pavilion और अब कुल मिलाकर 4 गेंदें उनकी पारी में बाकी। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर नमो फ्रेंड्स। Padnil number 17 number wearing a 17 number jersey, the batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए और सामना करते हुए इस वक्त निखिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज इस वक्त हर्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है संजय का और गेंदबाज ये गेंद रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली finds the gap as well, no one in that area, deep back on a third man and he's got a boundary for that। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त विद अ रिवर्स शॉट, तिरछा बल्ले के सारे गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ तक खाली क्षेत्र विकेट गैप चुनते हुए। 34 द स्कोर नाउ फॉर लूजिंग 4 विकेट एंड नाउ जस्ट 3 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ धनंजय के बल्ले से 2 चौका अब तक धनंजय जड़ चुके हैं। 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए धनंजय इस बैटिंग ऑन 10 इंक्लूडिंग 2 बाउंड्रीज और इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और डीप बैक और थर्ड मैन और डीप कवर पॉइंट के दरमियान अब एक फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर रद्द किया गया है ठीक सीमा रेखा के पास और गेंदबाज
हर्षित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त धनंजय के लिए। दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फीडर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। इनफैक्ट दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट। और एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला। 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। और गेंदबाज हर्षित गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज संजय के लिए। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, लगभग जमीन के सहारे आते हुए शफल होते हुए गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहता चूंकि, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी हर्षित की। अंतिम गेंद बाकी हर्षित संजय के लिए। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नॉट कमिंग अप। हर्षित bowling to Sanjay. The last ball, right arm over the wicket. Here he bowls. Misses. Fantastic delivery from the bowler Harshit. And a run out happened at the striker end. One more wicket fallen. 5th wicket down, and the innings is up. Number of friends finished with 35 for the loss of 5 wicket in the stipulated 4 overs. Now the target for Badalkatte Bantwal is 36. They have to score for victory. 36. The target for Badalkatte Bantwal, exactly 9 runs per over. The required run rate for them in the stipulated 4 overs. That means in the stipulated 24 dealers, they have to score with the help of 10 wicket. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर बडालकट्टे बंटवाल के बल्लेबाज इस 36 रनों के 36 रनों के लक्ष्य तक निर्धारित 4 ओवर्स में बना पाते हैं या नहीं। उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद लम्हों बाद। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर बडालकट्टे बंटवाल की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक करना। इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಹಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಡಿಯುವ ಬಾಟಲಿ ನೀರನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಾರದೆಂಬಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much, and Gopi. And we are coming to the innings of Badabettu Bantwal. Opening batters are coming to the middle to chase the total score of 36 to win this match, and required under is 9 runs per over for the team Badabettu Bantwal. Left arm batter is on strike.
Brijesh will be the striker. The first ball, top edge opportunity for the fielder. The mid-on fielder taken the catch. It's a dream start for the bowler. The first ball dismissal. It's a dangerous left-hand batter. Brijesh back in the pavilion. Try to go over the infield, but doesn't get hold of that and properly. Beaten by the flight and bounce of the delivery. Adarsh got a very good start here from this first ball. And the Brijesh, unfortunate, is out for golden duck. 0 for 1. The new batter in is Suraj. In the previous match, he played a very good innings for his team, played a small cameo. Suraj for team Badabet to Bantwal. After 2 matches so far, Badabet to Bantwal, they won 1 match, they lost 1. They're playing their 3rd match. None more friends. So far there also, after 2 matches, they won 1, lost 1. Lovely delivery there from Adarsh. He's growing his level of confidence after that wicket in the first ball. The very next delivery, the perfect delivery to ball to Suraj. Missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler. Adarsh. Right arm over the wicket, balls. Suraj drives that one powerfully down to mid-wicket region. Protection is there in the deep. Only a single. The first run comes up in the first over after 3 deliveries. And it's a 3rd delivery. They got a single, 1 without loss of 1 wicket. For the next match, I request players of Bubbly Warriors as well as STC Ayodhya Nagara, please complete the signatures as soon as possible. Played it down to mid-wicket. I request the captain please report here for the toss. ಬಡ್ಡಕಟ್ಟು ಬಬ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ STC ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದರ್ಶ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. Adarsh, 5th time in this over. To Suraj. This time opportunity for the cotton ball. Wicket number 2 for Adarsh. What a great start from his bowling for the team. The 2 wickets of Baddagattu Bantwal is back in the pavilion, and the number of friends really got a good start from Adarsh. The first over, I think it's the booster point goes to number of friends. They got a 10 runs in the first over, and only a 2 runs for the team Baddabetu. Looking in Baddakatte Bantwal, they are in a trouble. Lost 2 wickets for 2 runs. Still long way to go. 34 runs required from 3 overs. Ali Nayaka ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಬ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Icon player Nishit walked towards the middle. He's going to face Adarsh last time in this over. Lovely delivery. Nishit just pushes the ball down to cover point region. Will going to retain the strike for the next over. Great over there from Adarsh. Excellent over. 3 runs and 2 wickets. Chasing 34 to win this match. Still 31 more runs. 36 to win this match. Still they have to get another 33 runs to win this match in 3 overs. The asking run rate is the climbing up from 9 to 11. 11 runs per over the required run rate now for the team Baddakatte Bantwal to win this match. Going to be a big ask, but not impossible in cricket. But it's for the good start there from Adarsh. Not only bowled a great over, but he's given booster point for his team as well with this excellent over, first over. Nikhil will go into bowl the second over. The Nikhil Rabada.
So Nikhil wearing a jersey number 44. Even Rabada also is wearing that same jersey number. Double 4. He might be the big fan of Rabada, so that he is given that number, given that nickname, Rabada. So Nikhil will go into ball the second over. Long on, long off. Deepak Shakawa. Mid wicket, deep squaring in front of square. Short third man, backward point. Short mid off. Outside the line of off stump, and now no run scored. A good start. ಬಬ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮೆಗೆಗಾಗಿ. Again, that was ball deflected from the leg by call by umpire. One more addition. Scoreboard numbers on to 4 on the board. Without loss of for the loss of 2 wickets. Still long way to go. Nikhil. This time a lovely delivery. Again, batter is not really getting that ball into his bat. Leg by call by umpire. One more addition. 5 on the board. Full toss delivery. In the wait for the umpire signal. Umpire addition. Wide call by umpire. 1+1. 2 more. Now a little bit confusion about that delivery. That looks like the fielding team appealing that the batter has got a bat onto that. And square leg umpire is also having some word with the non-strikers umpire, whether it's going to be a wide or not. Wicketkeeper claiming that it's going to be a bat which is involved, but umpire have to decide whether it's going to be a wide or not. It's a wide. So 2 runs added to total. So with that a couple of runs scored, number 7 on the board. So retained by the decision which is retained, that wide decision, the bonus run. So STC won the toss for the next match. Elected to field first. Excellent delivery again from Nikhil. After that wide ball, again one more delivery, the quicker one, leg by call by umpire, addition to that extra. And scoreboard numbers on to 8 on the board. 28 more runs required for the victory. 14 balls remaining. Ball him, cleaned him up. Suraj wanted to go, little bit correction. Nishit might be the batter which just wanted to go for the mighty drive. Misses the line completely. Again, the batter Nishit disappointed. He couldn't manage to perform from his bat. Being the icon player of the side again, he couldn't manage to perform from the bat. 1 more wicket back in the pavilion. Rabada has got a wicket. 8 for 3. Deep in trouble. The team chasing 36. The disciplined bowling performance so far from the bowlers of team Namo friends. Badakatte Bantwal, the batters absolutely has got no clue whatsoever so far. Vinay is an experienced campaigner. Came into bat here with the difficult condition. Wait and see how he'll going to handle the pressure. Nikhil will going to continue round the wicket right now. Oh, this time a short pitch delivery outside the line of off stump. Over number 2 which is comes in, and one more great over. The first over also excellent. Second over also more better over than the previous as well. So what a delivery over. 2 overs which is belongs to the team Namo friends. Searching for the right track, still struggling in the middle.
Baddakatte Bantwals are 8 for 3. 28 required from 2 overs. 14 runs per over the required run rate. Each and every economical over that takes this match very interesting in way one away from the opposition team. 14 runs per over the required run rate. Do or die situation here for the batters of the team Baddakatte Bantwal. Vinay will going to take the strike and the bowler will go into starts the third over. Dhananjay. Jitesh is the striker, lead correction. Played it down to deep long off. One more single with the addition of that single score, but moves on to 9 on the board. Now Vinay back on strike. Dhananjay second time in this over. More production has been given in front of the wicket. Vinay wanted to go for the drive. This time chance of run out. This is a suicider. Vinay wanted to go for the extra cover drive. Misses the line completely. Wicket keeper little bit fumble and just wanted to take the advantage of that fumble. The batter just want to grab the opportunity, but ball is not too far away from the wicket keeper. Quickly he picks the ball, returns the ball to the hands of the bowler, and he made that formalities of making the run out. Vinay back in the pavilion. So new batter in is Guru Raj. Gitesh will going to take the strike. Dhananjay. Again, lovely delivery. The wicket keeper fails to collect the ball neatly, but ball is not too far away from him, so that no question of any run. One more good over is in progress. Dhananjay 3 balls so far, only 1 run and a wicket. Coming down the track using his feet, played it down to deep long on, but not more than a single. Not so easy to get that boundary. We are seeing a lot of protection in the deep in front of the wicket. So the batter have to go for some big shot here. No other option at all. 36 C1 looking so difficult for the team. Baddakatte Bantwal. This time, this is excellent change of line. Seeing the batter is going for the switch it, changing the line outside the line of the leg stump, and last delivery remaining in this over. This time again, chance of run out, but a very young man down at short fine leg region, not interested for the run out. And one more tidy over, which is comes to an 3 gone after completion of over number 3. Only 10 for 4. 11 for 4. 25 required from last over. The tidy over bowled by bowlers of Baddakatte Bantwal so far. First over 3 runs, second over 5 runs, third over 3 runs. Every over they managed to put some wicket, pick some wicket. A new bowler, the new young man brought into attack. The future of cricket brought into attack. Likit, the young man, and starts with the wide delivery. And with that extra score, but moves on to 12 on the board. This time tossed up the delivery from the young man.
The batter just wanted to go for the mighty drive. Gururaj missed it completely. Score remains on 12, 24 required from 5 deliveries. This time full toss. The batter couldn't manage to take advantage of that one. Chance of run out directly. Time is gone. One more wicket back in the pavilion. Gururaj missed that full toss delivery from Nikit. The wickets are falling here. Wicket number 5 back in the pavilion. Disappointment batting performance so far from Baddakatte Bantwal. New batter in is Deepu coming to the middle. Match number 11 of the day, number 1 of this prestigious Mudipu Premier League 2025 Season 7. Shri Mudipinnar cricketers organizing successful the cricket tournament Season 7, and which is live telecast from one of the most popular YouTube channel, King Sports, having a live telecast of this cricket tournament. Again, it's going to be a wide delivery. The batter has got a nervous start. Nikit bowled a second wide of this over, and scoreboard numbers on to 13. 23 required. Four balls remaining. 4 sixes required. Now it's going to be a wide again. 22 required from 4. Oh, this time short pitch delivery. The batter Deepak fails to take that advantage of the delivery. Now 3 balls 22. Looks like everything is over for the team Baddakatte Bantwal. Again the full toss delivery, and again the batsman fails to make a proper connection. No ball call by umpire. One more no ball, and even they exceeds the time limits. Umpire giving some signal that there exceeds the time limit. Scoreboard is 16 on the board. 20 required. 3 ball 20 required. $19 required. Correction, 19 required from 3 balls. 3 sixes will going to tie the match. This is a free hit delivery for Deepu. Again, it's going to be a wide. Now the bowler Nikit a little bit under pressure. This time he lofted handsomely, and he got the distance as well. Now interesting. Another 6 will going to change the game here. The scoreboard jumps into 24. 12 required from 2. 2 sixes will going to win the match for the team Baddakatte Bantwal. The Deepu absolutely keeps the hope of winning this match for his team. And Nikit the bowler is absolutely under pressure. ₹2,000 announced for Deepu. If he hit 2 sixes, he will go and get a 2,000 by owner of Baddakatte fans. It's going to be wide. Now 11 required from 2 balls. The bowler is absolutely under a tremendous pressure. They need to be very cool and calm. Oh, this time swings and miss.
Going to be a wide. 10 required from 2 balls. Now 11 runs already conceded in this over. The 2 ball 10, 1 boundary, 1 6 will going to be enough. Maybe that they got a bowlers in their side, but they are given the ball to this young man, can get some experience, but that becomes a little bit costly here. And the bowler is, the young man is not justifying the addition of the captain. And of course, someone have to go and talk with him, not to take any pressure on his mind, need to be very cool and calm, normal. Mindset is very required. Don't look at the batsman, just have to look at the target, the stumps. And just 2 good deliveries. Even I think 1 good delivery is good enough for him. The 10 required from 2. Now 9 required from 2. This time, one more time exceeds. It's going to be dangerous. They have to bring one fielder inside the ring again. They exceeds the time limits. Now that will going to be more dangerous, isn't it? Now there really need to be only 3 fielders outside the circle. And that's only because of this man. He's bowled too many wide deliveries. In the previous match, I think he's bowled well. But here is given a lot of runs for him to depend. This is a better one. They're appealing for the caught behind. Umpire is not interested. Umpire says it is from deflected from the leg of the batter. So anyhow, last ball. 9 required. 9 required from last ball. Now the bowler should be very careful not to bowl no ball and wide deliveries. One simple delivery targeting the stump is good enough, because even 6 will not going to help the team. Baddakatte Bantwal. This is again the wide. 8 required from last ball. Now another extra will going to take this match again. Very interesting. 8 required from last ball. Chetan is coming from the mid off, giving some suggestion for the bowler. He's feeling a lot of pressure. Now 6 runs, not good enough. The victory of just a single run. Only 1 run victory. Can you believe this? Baddakatte friends thinking about, yes, we have lost the match by 1 run. And because of that over of Nikit is absolutely very expensive. But fortunately for team Namo friends, at last they won this match. And another wide absolutely will going to change the complexion of this game. But need to appreciate the effort of Deepu. He hit 2 sixes in the last over. But now is the time to announce the man of the match. Now is the time to announce the man of the match. The man of the match goes to the all-rounder. One who batted very well, scored 11 runs, and then he picked up 2 valuable wickets in 1 over by conceding 3 runs. It's none other than Dhananjay. 1 wicket in fact. Dhananjay of team Namo friends was judged as the man of the match. I request Dhananjay, please come and collect your man of the match award from our chief guest in our presentation dais. ದಯಮಾಡಿ ಧನಂಜಯ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
धन्यवाद सतीश. So what a fantastic match ended just last match ago, and now the match number 12 is now going to start between Bubbly Warriors versus STC Ayodhya Nagar. और जहाँ तक सवाल है, बबली वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करता हुआ अनिल दास जो कि आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए विकी पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, और इस 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है बबली वॉरियर्स का. 1 रन 90 लाख से नुकसान के अपना तीसरा मैच बबली वॉरियर्स यहाँ पर खेलता हुआ, और इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए और एक बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. 2 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट. ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. मैच नंबर 12 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MPL सीजन 7 2025 इज नाउ स्टार्टेड. इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर. 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर. 3 रन बिना किसी नुकसान के, और इस बीच अनिल सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, जबकि विकी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, और इस बीच विकी बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अनिल के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस, कट्स दैट वन जस्ट वाइड ऑफ द गली फील्डर, और गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, और जब तक पीछे की ओर जाकर डीप बैक थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर गेंद को इस वक्त फील्ड करे. बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. ठीक तरह से गेंद को कट नहीं कर पाया, लेकिन गेंद इस वक्त फाइन निकली थी गली फील्डर की दाईं ओर से, और 2 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर. 5 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज विकी इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और जहां तक रनों का सवाल है तो रन्स इस वक्त नहीं मिलेंगे, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 5 रनों पर. 5 ऑन द बोर्ड. और अनिल इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन, द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड. गेंद को उछालने के प्रयास में चूके अनिल, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, और रन से यहां पर बल्लेबाज को नहीं मिला. Dhananjay adjudged man of the match of the previous match. I request Mr. Pramod Sajipat to please distribute the man of the match award. This time chance for an out, लेकिन थ्रो काफी वाइड इस वक्त पहुंचता हुआ 1 रन का इजाफा हो चुका है. Now Mr. Pramod Sajipat distributing the man of the match award for Dhananjay for his fantastic play in the previous match. So thankful to both of you, and now straight away coming back to this match. और विकी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए निखिल के लिए ये गेंद उछालना चाहता, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर. 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर. 7 ऑन द बोर्ड. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड. गुड ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम विकी. हालांकि 2 वाइड उन्होंने इस ओवर में जरूर फेंके, लेकिन उसके बाद के 6 गेंदें काफी बेहतर फेंकते हुए सिर्फ 5 रन बाद के 6 गेंदों में प्रदान करने में सफल. तो 7 रन कुल मिलाकर इस ओवर में विकी प्रदान कर चुके हैं, और बबली वॉरियर्स इस वक्त एक स्टेडी स्टार्ट इस वक्त कर चुका है. मैच नंबर 12 में STC अयोध्या नगर के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतरा था, वह 7 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के. जस्ट आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड पुट इट टू बैट बाय STC अयोध्या नगर, बबली वॉरियर्स मेड अ स्टेडी स्टार्ट. इन फैक्ट इट्स 7 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर. दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स. सूरज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त यार फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है. फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. दूसरा ओवर शुरू होता हुआ. सूरज गेंदबाजी इस वक्त करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज निखिल के लिए. ओवर की पहली गेंद. इस बार गेंद को स्लॉक स्वीप शॉट के तौर पर खेलना चाहता, फ्रंट फुट पर जाते हुए घुटनों के बल कुछ हद तक झुकते हुए, लेकिन गेंद चिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 7 रनों पर. एक बार फिर से गेंदबाज तैयार. यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त लंगॉन की दिशा में गेंद जाते हुए. 1 रन का इजाफा. जस्ट अ सिंगल ही गॉट.
और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। निखिल इस वक्त ಹಾಲ್ ಎಂಗಲ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗೆ ಕೈರಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಿಂಚಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಮೇರೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲೇಸಡೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡೆ ಮೋಕೆಡೆತುಕೊಂಡಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರಿ ಸಲ್ಮೇಲು ರೆಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲ. So back to the game. This time lofted that one, लेकिन फील्डर मौजूद इस वक्त लॉन्ग ऑन पर। बेहतर स्ट्रोक जरूर था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं। और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज दौड़कर यहाँ पर पूर्ण कर चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 9 रनों पर। जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। सूरज इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज निखिल सामना करते हुए काफी दूर दूर तक का फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्कोर लेके इस वक्त तैनात। ये गेंद उछाला इस वक्त, गेंद डीप मिड विकेट पर। नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ द शॉट, इन फैक्ट कम बैक फॉर द सेकंड एंड दिस कुड बी इन ट्रबल। नो आई थिंक he made it at the last moment। काफी नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन इससे पहले के थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट कीपर विकेट झटकाए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे, अपना बल्ला क्रीज पर लैंड कर चुके थे और इस बीच 2 रनों का इजाफा और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड yet to lose any wicket and this is the over number 2 of their innings is now progressing here। सूरज दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस वक्त अच्छी गेंद थी, इस वक्त लगभग जमीन के सहारे आते हुए अब सबसे कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 11 रनों पर और सूरज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद बेहतर गेंद, क्विक पेस ऑफ कमिट बाय विकेट कीपर लेकिन बल्लेबाज शायद अंतिम क्षण में यहाँ पर क्रीज पर मौजूद है और इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है सूरज की। सो 2 overs completed and after 2 overs still the batsmen of Bubbly Warriors searching for the right track। It's 11 on the board yet to lose a wicket। half the way back still half have left in their innings। आधा सफर तय हो चुका, आधा सफर तय होना बाकी और देखते हैं बचे हुए आधे सफर यानी 2 ओवर 12 गेंदों में और कितने रन बबली वॉरियर्स के बल्लेबाज यहाँ पर बटोर पाते हैं। और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। 3rd over starts in their innings। मैच नंबर 12 of this prestigious cricket tournament MPL Mudipu Premier League season 7 2025 is now progressing here which is proudly organized by Sri Mudipinnar Cricket as SMC Mudipu। और गेंदबाज प्रवीण इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिल दास जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फर्स्ट बॉल ऑफ द 3rd over of their innings is now coming up। और प्रवीण इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। इस बीच उछाला है गेंद को अनिल ने इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपक लिया गया है। स्ट्रोक इस वक्त जोरदार था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की तो इस तरह से अनिल की पारी पर पर्दा गिर चुका है और 11 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर Bubbly Warriors। They are looking in trouble now। 11 for the loss of 1 wicket at the start of the 3rd over of their innings। Still 11 balls left in overall calculation in their innings। 11 गेंदें इस वक्त बाकी और इंतजार है इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज का। We are just waiting for the number 3 batsman of Bubbly Warriors and he is now coming out to the middle। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का तो स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए उल्लास नंबर 3 की जर्सी इस वक्त पहने हुए इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार प्रवीण की गेंदों का। निस्संदेह कम से कम 30 के आंकड़े को यहाँ पर पार करना होगा अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है बबली वॉरियर्स के बल्लेबाजों को। और इस बीच प्रवीण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज उल्लास इस वक्त
सामना करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके, लेकिन गेंद का कुछ हद तक ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का 1 रन का इजाफा। 12 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग वन विकेट। अगली गेंद, ये गेंद बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग वन, एक्स्ट्रा क्विक the ball went into the hands of wicket keeper, the ball came along the ground। और जहां तक रनों का सवाल है, रन से इस वक्त नहीं मिलेगा, गेंद सीधे पहुंच चुके हैं विकेट कीपर के हाथों में। ढीली गेंद, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर काफी निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का। तो एक वाइड रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर और प्रवीण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है। यह गेंद इस पर बोल्ड आउट, पैरों पर गेंद टकराई, सीधे स्टंप्सों पर टकरा चुकी है, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ उल्लास की पारी पर पर्दा गिर चुका है। 0 पर आउट होते हुए उल्लास इज आउट फॉर गोल्डन डक by Ullas, and one more wicket fallen. Wicket number 2 down for Bubbly Warriors. They are looking deep in trouble now at the situation. It's 13 for the loss of 2 wickets. तीन सही गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुके हैं और नए बल्लेबाज नंबर 4 बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ। नंबर 47 नंबर की जर्सी इस वक्त पहने हुए और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त पधारते हुए। बेहतर ओवर अब तक प्रवीण का साबित हो चुका है। हालांकि इस ओवर में उन्होंने 2 वाइड जरूर फेंके, लेकिन 2 विकेटें प्राप्त करने में सफल पहले 3 गेंदों में। और इस बीच प्रवीण नए बल्लेबाज को गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, वन मोर गुड डिलीवरी, मत स्ट्रेट लाइन। और इस गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और निश्चित रूप से इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए प्रवीण और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को पुल कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ, लंबा छक्का इस वक्त लग चुका है अनजान बल्लेबाज के बल्ले से, ऐसा कहना पड़ेगा। He just caught that one right from the mid of the bat and after that one in a style of a deep mid wicket fence for a massive one। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट। सुधीर जो बल्लेबाज थे इस बीच उछालना चाहा था, एक्स्ट्रा बाउंस अंतिम क्षण में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो डॉट गेंद ओवर की समाप्ति, 3 overs completed, 19 runs on the board, 2 wickets lost, and now just a last over remaining in overall calculation in their innings. Next match, just talking about the next one, the match number 13th of this prestigious cricket tournament, MPL Season 7 2025 is now coming up between Amma Cricketers versus SVC Huhakuakallu. And because of that, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart and also complete the toss procedure before the end of this match. और गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए गुरु इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गुरु दीक्षित अंतिम ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर बबली वॉरियर्स की पारी में। और सामना करते हुए इस वक्त निखिल और पहली गेंद लेकर गुरु दीक्षित इस वक्त तैयार रहा। यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया कुछ हद तक मिस फील्ड के बाद, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन फैक्ट। गुरु अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस वक्त सुधीर सामना करते हुए निश्चित रूप से चौके और छक्कों की तलाश में इस वक्त बल्लेबाज बबली वॉरियर्स के अपने टीम के रन रेट को एक्सेलरेशन इस वक्त देने की कोशिश में लगे हुए हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद बेहतर गेंद थी, कुछ हद तक उछाल लेते हुए विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटकाए, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। इस बार स्टंप गिर चुके हैं गेंदबाज के शायद हाथ से टकराकर, तो इस गेंद को डेड इस वक्त डेड घोषित किया गया है, डेड बॉल। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदें अभी भी बाकी है उनकी पारी में 4 और अपनी ओर के अगली गेंद लेकर गुरु इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट सुधीर के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए सुधीर के लिए अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट
ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, इस वक्त पैरों पर गेंद टकराई, उछालने के प्रयास में चुके और इससे पहले कि विकेट कीपर अपने पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, 1 रन का इजाफा हो चुका है। इट्स ऑफ द बैट। तो 1 रन का इजाफा, 21 driven that one down to long on. In fact, slight bit of fumble there. They're looking for the second and they come back for the second very easily in the end. थोड़ी सी मिसफील्ड इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा, उसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहाँ पर तेजी के साथ पूर्ण कर लिया। 23 ऑन द बोर्ड, 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में और गुरु तैयार। इस बार बेहतर गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद, उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। इस बीच गेंद को मोड़ा शॉर्ट स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए। तो इस वक्त 24 द स्कोर, 25 द टारगेट फॉर 25 the target for SDC Ayodhya and as far the required run rate is concerned, exactly 6.25 runs per over they have to score for victory. That means they have to score 25 in the stipulated 24 deliveries. That means in the stipulated 4 overs with the help of 10 wicket they have to score. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not. और SDC अयोध्या नगर की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर पारी की शुरुआत होगी एसटीसी अयोध्या नगर की एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Welcome back, and it's not a big total to chase down. It's a wonderful bowling performance from team SDC Ayodhya Nagar against team Bubbly Warriors, and Bubbly Warriors have to deliver some good overs here if they wanted to win this match, because target which is set exactly 25 to win this match and 6.25 runs per over. For the next match I request all the players of Amma Cricketers as well as SVC who Hakuakalu. I request all the players please be reported here immediately for the signature. Amma Cricketers ಮತ್ತು SVC ಹೂಹಾಕುವಕಲ್ಲು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Nikhil will go into starts the fresh over. First over, the power play over. Right arm over the wicket. This time starts with the wide. The full toss delivered outside the line of leg stump, and Ramesh just wanted to go after that, missed it completely, but umpire will not go into miss the opportunity to signal the wide. One without loss of any wicket. Swings and missed. Lovely delivery there from Nikhil as he bowled excellent line which is around outside the line of off stump, and Ramesh just wanted to go for the big stroke, quite understandable in the power play. Again played it gently down to backward point region for an easy single. So with that single score, but now they started their journey, one without loss of any wickets. If they wanted to get the booster points, they have to get 8 runs in the first over, because team
The Warriors has got 7 runs in their first over. Nikhil will going to try for that booster points. 2 without loss of any wicket. The batter Suraj is not ready. The icon player for the side will going to face Nikhil. This time lofted catch, it is a call, and falling short of the fielder. Did a great job actually by the fielder in that putting his body behind that ball after one bounce. You know exactly not easy to take the catch, and just putting his body behind that line of the ball. Good technique to save the boundary. Just a single. With that single, score moves on to 3 on the board without loss of any wicket. So 3 balls, 3 runs. 4 time in this over. This is going to be a one more wide delivery. He's looking for extra pace. Try to get some extra pace. You can see that regularly the leg spin bowler has got a problem of bowling at full toss over the head of the bowler. 4 without loss of any wicket. Okay, nicely played it down to short mid wicket region. Slight a bit of misfield by the fielder, but no extra run there. Only a single. With the addition of that single, score but moves on to 5 on the board. 5 on the board, 8 runs, which is given the booster point. Suraj wanted to go for a pull shot, and it's going to be one more wide. A lot of extras so far in this over. 3 wide deliveries bowled by Nikhil, and score but moves on to 6 on the board. This time Suraj lofted, catch, it is a call. The fielder is underneath it and comfortably taken in the wideish long on. So Suraj just wanted to go for the big shot, wanted to get the booster points. Now 1 ball, the 2 runs will going to give the booster point, but 1 good delivery will going to give the booster point for the team, the Warriors. Nikhil got a vital breakthrough here in the 5th delivery of the over. After that 3 wide deliveries. So new batter in his experienced batter for the side with the jersey number 99, Vikas, the wicketkeeper batter for the side. The very good wicketkeeper for the side, left-hand batter. So Suraj, the left-hand batter, replaced by one more left-hand batter. This time lovely shot, glorious extra cover drive. No need to run for that. Not only he got a boundary for that, but he's got a booster point for his team as well. The juicy full toss outside the line of off stump, off the front foot, and exquisite extra cover drive coming from the blade of Vicky, and with that boundary score but moves on to double figure 10 on the board. So this is going to be a booster point here for the team STC. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು SVC ಹೂ ಹಾಕುವ ಕಲ್ಲು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾಣ್ಯ ಮೆಗೆಗಾಗಿ. So STC Ayodhya Nagar, they got a 10 valuable runs in the first over. Ullas brought into attack and quite neatly played it down to deep extra cover region by Vicky for a easy single. 11 on the board. And they are chasing not a big total, just a 25 runs to win the match. The Vicky, let me correction, now is on strike. Ramesh picked up a single. Ramesh will go into face. This time nicely driven down to up. The Vicky is in a hurry of getting the winning runs for his team. But this time the bowler did a great job. Ullas pitching that ball in the right spot. And almost an incoming delivery for the left-hand batter. Hitting the stumps and of course disturbing the furniture. Great piece of bowling there from Ullas. 16 on the board.
Gurudeep is a new batter in. Guru Dikshit. And the good all-rounder for the side bowled a very good last over for his team. Now coming to bat as a number 4 batter for the side. Ulas. This time wanted to go for the safe shot, and his partner is not interested, because quite understandable. Ramesh knows that they got runs what they really wanted it so far in this particular over. 5 runs, 6 runs so far. Full toss, they missed it completely early into that stroke across the line, misses the line completely. No run scored. Ulas again lovely shot, played it very well to the square of the wicket. At least a couple of runs they will going to get easily. Appeal for an out, not out called by umpire. No damage done with that couple of runs. Skobana moves on to 18 on the board. Over number 2 completed. 2 overs remaining. And 7 required from 12 ball. Seven required from 2 overs, 12 balls, 7 required. It might be very interesting over. I request the captain ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ. SVC ಹೂವಾಕುವಕಲ್ಲು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. SVC ಹೂವಾಕುವಕಲ್ಲು ತಂಡದ ನಾಯಕ. Gently played it down to mid-wicket region for walkable single by Ramesh, and with the addition of that single, Skobana moves on to 19. The 6 more runs required from 11 balls. Rajesh will go into bowl the next delivery. Guru Dikshit lofted, and he got a distance. Magnificently struck, and that 6 will go into bring the victory run for the team as well. The team SDC Ayodhya Nagar got a comprehensive victory of 8 wickets with 9 deliveries to spare. It's a clean hit victory. The clinical performance here from the players of SDC Ayodhya Nagar defeated Bubbly Warriors. Congratulations. They will go in to get full points along with the booster points. And they are the first team which is qualified, because of they won all the matches today. Out of 3, they won 3, so they are the first team. And they got a 3 booster points as well. In all 3 matches, they got a booster points. So man of the match of the previous match, which is goes to once again Guru Dikshit, one who batted well and bowled well. So he just as a man of the match. So I request Guru Dikshit to please come and collect your man of the match award from our chief guest for your all-round performance.
धन्यवाद सतीश. So the last match of the day is now going to start between अम्मा क्रिकेटर्स वर्सेस एसवीसी हु हाकुआ कल्लू. और इस वक्त अम्मा क्रिकेटर्स पहले बल्लेबाजी करता हुआ. So the first ball of the match is now coming up. Right arm over the wicket. इस बार गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट के लेके प्रयास में चुके और इसी के साथ विकेट गिर चुका है. फर्स्ट बॉल गोल्डन डक डिसमिसल फॉर द बैट्समैन. Manu the man dismissed and now the first wicket loss for Amma cricketers. So Guru Dikshit adjudged man of the match of the previous match. I request Mr. Guru please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So Abhi the batsman is now comes out to the middle as a number 3 batsman और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और पवन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, रन चूके इस वक्त रन लेने की कोशिश जरूर की लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच ली और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. पवन फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट अगली गेंद लेकर तैयार. उछाला इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक. So now Guru receiving the man of the match award from Mr. Abdul Rahman, one of our chief guests, who is distributing the man of the match award for Guru is for his fantastic play in the previous match. So congratulations for both of you. And Pavan once again here he comes, right arm over the wicket bowls. और अभी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया. इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर. 5 on the board yet to lose a wicket. This is the 13th and the last match of the day 1 of this prestigious cricket tournament MPL Mudipu Premier League Season 7 2025 is now progressing here. और पवन फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और lost it. This time I think it could be taken inside the fence and taken comfortably by the fielder. In fact it's a no ball. और बल्लेबाज यहाँ पर बच चुके हैं. तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त आसान सा क्या मिड विकेट फील्डर के हाथों में पहुंची थी लेकिन यहाँ पर नो बॉल घोषित करते हुए. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रनों का तो रन से इस वक्त मिलेंगे 2 उनके टीम के लिए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर. 7 on the board in the over number first in progress. तो बातचीत इस वक्त जारी और जहां तक सवाल है इस वक्त so couple of runs added to the total and with a couple of runs the scoreboard moving up to 7 on the board in the over number first in progress. और पवन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए अभी इस वक्त सामना करते हुए और पवन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और इस बीच पवन फ्री हिट गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट पर लेकिन उसी फील्डर के हाथों में एक बार फिर से कैच पहुंचा लेकिन इस बार भी वो बच चुके हैं क्योंकि फ्री हिट गेंद है. तो 1 रन यहाँ पर मिलेगा जरूर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. अंतिम बार इस ओवर में पवन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ये गेंद उछाला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री.
Fantastically struck inside out cricket he played and he finds the gap as well. और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज के बल्ले से लगता हुआ। और जहां तक बल्लेबाज का सवाल है, स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर, 12 ऑन द बोर्ड। और कार्तिक के बल्ले से चौका यहां पर लग चुका है। सो फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 12 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट्स लॉस्ट एंड नाउ इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 3 ओवर्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और दूसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए हरीश इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, जबकि सामना करते हुए यहां पर अभी। और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और गेंदबाज हरीश ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद। Lost it. This time I think he's got the distance. It's a big one. Massive one from the batsman. काफी धीमी गेंद थी और इस धीमी गेंद को इस वक्त कबूल किया राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट और उछाल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट पर। और ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज के पास काफी समय था कि गेंद को उछाल सके और बल्लेबाज अभी ने इस गेंद को काफी खूबसूरती के साथ उछाल दिया डीप मिड विकेट सी बारे का बाहर छक्के के लिए। और हरीश इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। फुल टॉस ऑफ द टोस गेंद को खेलना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर। वाइड का इशारा इस वक्त और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द नेक्स्ट साइड वाइड और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त यार उछालना चाहता इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली और 1 रन इस बीच मिल चुका और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज हरीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछालना चाहा चूंकि इस वक्त गेंद शॉट फाइन लेग पर पहुंच चुके। रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, रन इस वक्त पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और 3 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार उछालने के प्रयास में चूके और गेंद धीमी गेंद थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और हरीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। यह गेंद उछाला इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट, हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और 11 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं और सिर्फ दूसरा ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त हरीश तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार पैरों पर गेंद टकराई। फनी डिसमिसल, पैरों पर गेंद टकराई पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बॉल स्टकिंग टू द फ्रंट एंड ऑफ स्टंप। सो दिस इज एन अनफॉर्चुनेट डिसमिसल फॉर द राइट हैंडेड बैट्समैन। He is backing to pavilion, 2nd wicket gone. It's 23 now for the loss of 2 wicket. 2 overs completed, 23 on the board, 1 wickets lost. So 2 overs left in overall calculation in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तीसरा ओवर प्रारंभ करते हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अभी। और गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज
संदेश गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और सामना करते हुए इस वक्त अभी नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है रंजीत और इस वक्त संदेश पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त गली पर जस्ट काफी वाइट विकेट कीपर के पहुंच से बाहर और 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था इन्हें हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा गेंद पहुंच चुकी है फाइन लेग की दिशा में काफी लंबा दौड़ लगाते हैं फील्डर और गेंद सीमा रेखा के अंदर या बाहर यहां पर देखना पड़ेगा वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द अंपायर डिसीजन 3 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं सो बाई का इशारा 3 runs added he stopped successfully just inside the fence at deep fine leg और बल्लेबाज 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस और गेंदबाज संदेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लेग बाई का इशारा इस बीच हो चुका था और अगली गेंद लॉफ्टेड इन द एयर चांस फॉर द बॉलर हिमसेल्फ और इस कैच को लपकने में सफल तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट 3 विकेट्स इन फैक्ट 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस So Karthik number 5 batsman is now comes out to the middle और इस वक्त वो गेंदबाजी संदेश की गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार शाम का वक्त धूप लगभग मैदान से गायब हो चुकी है शाम के 6:10 यहाँ पर बचते हुए और धीरे धीरे मैदान पर रोशनी कम होती हुई अंधेरा सा यहाँ पर अच्छा था और इस बीच तो इस वक्त संदेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट इन द एयर स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर फील्डर can't find the gap as well he just played that one inside out cricket but can't find the gap as well and because of that he just paid the penalty for that one more wicket fallen Karthik the man departs and now first time in this match Amma cricket is looking in trouble in fact it's 27 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress नहीं बल्लेबाज का आगमन होता हुआ मोहन इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए संदेश की गेंद बेहतर गेंद पिक पीस ऑफ वर्क बट द बैट्समैन गॉट हिज बैक फुट onto his crease at the last moment and because of that he survived स्कोर इस वक्त रुक चुका है 27 रनों पर बेहतरीन तरीके से विकेट इस वक्त उखाड़े थे विकेट कीपर ने लेकिन इस वक्त रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और संदेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था इन्हें राउंड द विकेट बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में विकेट गिर चुका है संदेश विकेट प्राप्त कर चुके हैं तो 3 ओवर की समाप्ति 3 overs completed Amma cricketers after being a good start now they are looking in trouble in fact 27 for the loss of 5 wickets and now just a last over remaining in their innings so last over starts in their innings और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए and the last match of today the day number 1 of this prestigious cricket tournament MPL Mudipu Premier League season 7 2025 is now progressing here और इस बीच ओवर की अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ the last over starts in their innings और गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए the first ball of the last over of their innings is now coming up दाहिने हाथ ऊपर the wicket गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए lofted not quite mid wicket chance and he take that one successfully
और दाहिने ओर जरूर दौड़ना पड़ा इस वक्त गेंदबाज को, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए इस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 27 now for the loss of 5 wickets. 5 balls left in their innings. So 5 balls left और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया, उछाल दिया कहना पड़ेगा लॉन्ग ऑन पर। क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल इन फैक्ट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और गेंदबाज इस वक्त सुशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त तैयार। यह गेंद उछाला है लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके, और यह छक्का जो कि उनके खाते में जुड़ चुका है। और बेहतरीन स्ट्रोक नंबर 32 जर्सी पहने हुए गेंद बल्लेबाज ने इस वक्त लगाया है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 3 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स इन ओवरऑल कैलकुलेशन। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रनआउट का खतरा, लेकिन इस बार यह विकेट गिर चुका है। गुड वर्क ऑन हिज फॉलो थ्रू मेड बाय द बॉलर, एंड वन मोर विकेट फॉलन इन द फेस ऑफ रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड नाउ जस्ट 2 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। One more batsman is now comes out to the middle, number 9 batsman. 2 गेंदें सिर्फ बाकी अब उनकी पारी में। सुशांत दाहिने हाथों पर द विकेट। Lofted this one. This time it's gone over the fence, and one more 6 in this over from number 32, wearing a number 32 jersey. The batsman hit that one pretty hard. रक्षित जो बल्लेबाज थे, दो छक्का इस अंतिम ओवर में लगा चुके हैं। अंतिम गेंद अब बाकी उनकी पारी में। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। 40 in fact the score. 40 the score now. The last ball is now coming up of their innings. सुशांत इस वक्त गेंद को मोड़ दिया शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन के साथ their stipulated 4 overs completed. They managed to score 41 runs on the board by Amma cricketers, and now the target for SVC Huhakuakallu is 42. They have to score for victory in their stipulated 24 delivers. That means they stipulated 4 overs with a required run rate of exactly 10.5 runs per over. And let's see can they reach the target or not. और देखते हैं उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। SVC क्रिकेटर्स की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आज अंतिम बार अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर SVC की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Thank you very much, Gopi. And Amma cricketers are set a huge target actually. 41, the target which is set, 42, which is a target set for the team SVC Huha Kwakalu. So that opening batters are came into middle for SVC. Yatiraj is on striker end. Ranjit will going to take the strike. First ball. And outside the line of leg stamp and going to be punishable, not from the batter but from the umpire. And a white signal by umpire with that extra. They open the account. One without loss of any wicket. This time Yatiraj played it down to square leg region for a single. And with that single, scoreboard moves on to 2 on the board. Huge target set here by the team. Thanks to the innings of the batter Rakshit, who played some excellent cricketing stroke down in the order. In that last over, he picked up 2 massive sixes. And because of that, they got a huge target here. The swings and missed. Lovely delivery outside the line of off stump by Ranjit again, keeping that line which is away from the bat of Chetan. And wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Score remains on 2 on the board. 13 runs if they wanted to get the booster point. This time catch it is a call, but only the spectator will going to catch here because the ball went out of the boundary line towards a deep mid wicket for a 6. So this is what the treatment is required in the power play overs when you're chasing a huge total of 42 to win this match. Excellent stroke coming from the blade of Chetan. This time it looks like one more, one bounce. There will be a fielder in the long off. He'll going to cut it off. Lovely stop by the fielder, but ample time for the batter to complete the 2 valuable runs. With that couple of runs scored, now moves on to 10 on the board. Chetan taking the initiative in this first over to get that booster run as well. Now 3 runs will going to give the booster run. This time lofted down to deep long off. Will they come back for the second? No, they're going against. And the 11, that means 2 runs required for the booster point and 1 ball remaining in this over. Yatiraj will going to try for that second run to get the booster as well as some runs in this power play. This time he swings it away, and that will going to be a huge one. Down to deep square leg boundary for a 6, and with that 6, not only they got a very good start, but they got a booster point as well. For team SVC, Huwa Kwakal, they got a flying start in the first over. Both the opening batters are dealing with some big shots. After completion of over number 2, total score is 17 on the board. And that was really a fantastic start from opening batters of team SVC against team Amma. So bowler Sanath brought into attack after that 16 runs in the first over. 17 will be correction from the first over. And another 25 runs required for the victory in 3 overs. 18 ball, 25 required. Match is evenly poised. Sanath round the wicket. Chetan drives powerfully straight down the ground, down to deep long off for an easy single. With the addition of the single score, but now moves on to 18. 24 more runs required from 17 balls. Yatiraj is on strike. Sanath. Right arm round the wicket. Oh, this time lovely shot. Played it exquisite. Exquisite stroke down to deep square leg. What a shot coming from the blade of Yatiraj. Of course, the line which is not an ideal delivery for the right-hander batsman, but the way that the batsman picked that line and ran so quickly, no chance at all for the fielder. It's there in the deep square leg, but he's just watching the ball going towards the deep square leg for 4. Lovely shot, and with the addition of that boundary score, but now moves on to 22
what a great reply coming from the opening batters of SVC Huakwakalu. They're absolutely in this difficult condition. It's not so easy in the evening to chase that runs of 42 in 4 overs. So far, it's a great reply coming from the batters. Again, wanted to go for expansive drive, missed it completely. Leg by call by umpire. Deflected from the leg. One more addition with the addition of that leg by Skobar Namuzan to 23. 23 in the sense 19 more runs required for the victory. From 16 again, played it down to mid-off. Misjudgment by the fielder, and they wanted to grab this opportunity as well. The bowler, the fielder in the short mid-off couldn't manage to judge that deviation. A couple of runs which is completed with that couple of runs. Skobar Namuzan to double figure 25 quarter century. That came in a quick time here for the team SVC. Sanat Baus. Again, reverse sweep, straight to the answer fielder. Again, the fumble. Opportunity of run out which is missed out. Manu, the fielder, at backward point region, couldn't manage to collect the ball neatly. Both the batters completed a single with their single. Skobar Namuzan 26. Last time in this over. Last time in this over. Right arm around the wicket. Sanat. This time it's going to be a punishable from the umpire. Trying for the quick delivery, fast delivery, but is going over the shoulder level, head level. The white call by umpire with the addition of that extra. Skobar Namuzan to 27 on the board. The runs are coming very freely. The 15 more runs required for the victory. What a shot! Yatiraj so good in that shot. Magnificently struck. He's been outstanding in that particular shot. After that boundary in the beginning, that was outstanding cricketing stroke. What a glorious shot. Magnificently struck, isn't it? And that will that six will going to release the pressure straight away from the batters. 2 expensive over which is comes to an end. Scoreboard is 33 on the board. Just 9 runs required for the victory in remaining 2 overs. 17 in the first over, 16 in the second over. Unbelievable, isn't it? 33 in 2 and just 9 runs away from the victory without losing a wicket. This has been outstanding batting display. The Karthik brought into attack the icon player. How to justify here Karthik, because his team is required 1 good over. They need to break this partnership. Oh, lovely start from Karthik. Quicker and faster one outside the line of off stump. Chetan wanted to go for the off drive. Misses the line completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. 11 balls remaining and 9 runs required for the victory. Chetan bowls. Chetan drives that one. Karthik, the bowler, played it down to deep long off for a easy single. 10 balls remaining and 8 runs required for the victory. This time switch it comes into play. Lovely execution. The fielder behind the ball, but ball winning the race against the fielder. And that will going to be one more boundary. What innings Yatiraj is playing here. Outstanding. And scoreboard now jumps into 38 on the board. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಂತಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. Again, this is going to be a run out. That's the innings which is comes to the end of Yatiraj in the form of run out. 21 runs scored in just 7 balls. What an innings played by Yatiraj. Outstanding, the match winning innings. What a under difficult condition Yatiraj played a
Fantastic knock for his team. Amar, the new batter in. The last delivery of over number 3, Karthik. Will go into ball right arm over the wicket. Again pushes and picks up runs there. Sensible batting there from Amar. You know exactly, no need to panic at all. Over number 3 which is comes to an end. They are very close to the victory. The last over, 3 runs required. Scoreboard is 39 on the board. Have to get one good bowler who can restrict the 3 runs from 6 balls. And who got the potential of doing that. The cricket is a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. That believeness is so important. He won the 3 runs. Of course, if you review the pages of history of cricket, we can find many examples. He won the 3 runs also depended in the last over. And wait and see how well the captain will going to bring the one bowler. So Karthik, one more Karthik, again one more icon player. Karthik brought into attack. They have to depend that 3 runs in last over. 6 ball 3 required. We can see that number of fielders are very close to the batter. This time, first ball itself, he finished the match in a style. Amar giving the finishing touch. A comprehensive victory here for the team SVC Hua Kwakalu. They got a victory with a margin, a huge margin, 9 wickets victory and 5 deliveries to spares, chasing 41 quite comprehensively. And even Amma cricketers can't believe that even they got some very Hello. good runs. Welcome to King from the Sports. bat. Subscribe to the Fails channel to depend and because press the bell bowling is not icon up to the mark. for recent All up to updates. that, opening batters Yatiraj and Chetan did a great Hello. job. for Welcome to their King victory. Sports. Now it's a time Subscribe to announce the man channel of the match. and press the bell icon for recent updates.